allowed, full stop. Other terms and conditions of the award shall remain intact. Both the appeals are disposed of in above terms. Certificate copy. CC as per rules. Number 19. So this is an appeal by the insurance company. जी. This is an appeal by the insurance company challenging the award on the ground that the tribunal has wrongly taken the age at 18 years, which actually is 14 years as per the FIR, as per the MLC, as per the below poverty line card. The age of the claimant is 14 years. Now the tribunal is taken as 18 years, took the income at 150 rupees per day, and then they applied the multiplier of 18 and then given Date of accident. my lords, the date of accident is this is 2013, 1st of March 2013, my lords. 1st of March 2013. And that at that point of time he was 14 years old. ठीक है. As per the FIR and MLC. 1st and March 2013. Income कितनी ली ट्राइब्यूनल ने? The tribunal has discussed this in paragraph number 17. Now they have taken the income at 4,500 rupees per month. 150. 4945 थी मिनिमम वेजेस. अब चलिए वो बताइए कार्ड कौन सा बता रहे हैं आप जिससे उसकी उम्र फ्लैग किए हैं. दो डॉक्यूमेंट है, FIR भी है और MLC भी है. हाँ, MLC और FIR से नहीं होता है. आपने उसका एज के लिए क्या निकाला? हमारी गवाही नहीं है. गवाही नहीं है तो छोड़िए उसको. क्रॉस में बोला कि आपने कि आपकी उम्र 18 साल नहीं 14 साल है, तो ये इनकम वाला ग्राउंड तो गया आपका. 4,945 थी मिनिमम वेजेस. चलिए उम्र वाला भी ग्राउंड गया. और क्या करना है? खत्म करना है अपील. हमारी अपील एज के ही ग्राउंड में है कि मतलब वो माइनर था तो ही वाज नॉट वर्किंग. एनहांसमेंट के लिए लॉर्डशिप इंपुटेशन है लॉर्डशिप एबव नी लॉर्डशिप 80% पीडी था. ट्रिब्यूनल ने लॉर्डशिप 50% माना है और सेकंड ग्राउंड लॉर्डशिप 50% फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और थर्ड ग्राउंड 40% ही तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट मिलेगा. 50% कैसे मिलेगा? सॉरी लॉर्डशिप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और थर्ड ग्राउंड लॉर्डशिप मैरिज प्रोस्पेक्ट्स लॉर्डशिप लिखिएगा. These appeals are filed by the Tata AIG General Insurance Company Limited and the claimants respectively under section 173 of the Motor Vehicle Act 1988, being aggrieved of award dated 30th October 2013, passed by London Additional Motor Accident Claims Tribunal, Nagod, District Satna, in CT number 34 of 2013. Full stop. Next pair. As far as insurance company is concerned, it has raised two grounds in the memo of appeal, namely on the date of the accident, age of the claimant Amit Kumar Chaudhary was 14 years as per the FIR and the MLC, and therefore tribunal erred in treating him to be a working hand, construing his income at rupees 4,500 per month, which according to Shri Rohit Jain is on the higher side and needs to be adjusted appropriately. And thus on these two grounds appeal is filed by the insurance company. Next pair. Shri Arubendra Singh Parihar, learned counsel for the claimant, commits that his appeal is based on three grounds, namely there is imputation of कौन सा पाँव है? राइट लॉर्डशिप right leg below knee. Below knee. एबव नी लॉर्डशिप मैं पढ़ता हूँ पैराग्राफ 7 में इन्हीं ने बोला नीचे से पांचवी छठी लाइन आवेदक इसके बाद आवेदक सतना पैर घुटने से नीचे पैर घुटने से नीचे काट देख दिया लेते हैं. With that amputation is above, in the right leg above knee, and therefore tribunal erred in construing disability at 50%, whereas doctor certified it to be 80%. Next, future prospect is to be added at the rate of 40%. And thirdly, no amount is awarded under the head of marriage prospect, etc., which too should be added, and award should be balanced. Full stop. Next paragraph.
After hearing learned counsel for the parties and going through the record, there is no material available on record or the evidence led by the insurance company to dispute either the age of the age of the claimant or the income of the claimant. Full stop. In fact, on the date of the accident, that is 1/3/2013, minimum wages even for an unskilled laborer were to the tune of rupees 4945 per month, and therefore taking income at rupees 4500 cannot be said to be arbitrary. Full stop. Thus, once the insurance company has failed to discharge its burden to prove that applicant claimant was below 15 years of age and was not a working hand, no indulgence is required at the instance of the insurance company in their appeal, and therefore appeal deserves to fail and is dismissed. Next para. As far as appeal filed by the claimants is concerned, Shri Rohit Jain points out that in para 7 it is mentioned that the amputation is below knee and not above knee and below thigh. Full stop. Certificate बताइए exhibit. Brothers, P1 Lordship. P1. सीवियर मल्टीपल इंजरी लिखा है P1 पे तो ऊपर फोटो लगा है लॉर्डशिप। फोटो थोड़ना है, समझते हैं अब। There is no evidence to contradict the findings recorded by the tribunal in para 7 of the award. Thus, consideration of loss of earning capacity at 50% cannot be disputed. However, it is correctly averred that claimant is entitled to addition of future prospect. Full stop. Tribunal has considered income of the income of the claimant at rupees 4,000 per month or 54,000 per annum. Full stop. It has treated 50% disability resulting in loss of earning capacity. That comes out to rupees 27,000. Full stop. 40% is to be added towards future prospects. And then when multiplier of 18 is applied, compensation under the head of loss of earning capacity will come out to rupees 6,80,400. Full stop. Tribunal has awarded besides this a sum of rupees 80,000 under the head of treatment, 5,000 under the head of special nutritious diet. Full stop. 5,000 under the head of transportation, and 25,000 under the head of future treatment. Full stop. Besides this, it has awarded only a sum of rupees 5,000 under the head of mental agony and pain, which is enhanced to rupees 25,000. Full stop. Tribunal has also awarded 2,500 under the head of loss of income for 17 days, which needs to be enhanced for a period of 90 days, which will come out to rupees 13,500. Thus, there will be addition of rupees 11,000 under the head of
loss of income due to accident. Tribunal has awarded a sum of rupees 50,000 under the head of permanent disability, which ठीक है, full stop. No amount is awarded under the head of marriage prospect. Full stop. This court deems it proper to award a sum of rupees 1 lakh under the head of loss of marriage prospect, taking total compensation 2 rupees. जोड़ लीजिएगा ये सब इतना against a sum of rupees शायद 10 लाख के आसपास आएगा ये, against a sum of rupees 6,61,000 awarded by Learned Claims Tribunal. Thus there will be addition of rupees इतना under the head of under different heads as discussed above, taken as to which claimant will be entitled to in addition to the amounts awarded by Learned Claims Tribunal. This additional amount will earn interest at the rate of 6%, taken in above terms. लॉर्डशिप Both the appeals are disposed of. अपील 1 लाख की हमें कोर्ट फीस दे दीजिएगा, भी बता देंगे, ये पूछ लीजिएगा इनसे चैम्बर में. लॉर्डशिप उसमें 2013 में मैरिज प्रॉस्पेक्ट्स में लॉर्डशिप सुप्रीम कोर्ट 3 लाख रुपए ऐसे केस में दिए. ऑलरेडी डिसेबिलिटी में भी पहले कैलकुलेशन से भी दिया, फिर 50,000 अलग से भी दिए. 1 लाख दिला तो दिया मैरिज प्रोस्पेक्ट में आपको. डिले था इसमें तो दोनों की डिले कंडोन कर दीजिए. चलिए. नंबर 20 कपिल पटवर्धन श्री सोम प्रकाश मिश्रा. My lord, may it be taken next week. Som Mishra did call me yesterday. We're having some personal difficulty. नहीं वो ठीक है, तो कितना एनहांसमेंट है इसमें भाई? My lord, there can be an. My lord, what has happened, my lord? It's a case of composite negligence, and this insurance company has Kapil Patwardhan submits that Shri Som Mishra has some personal difficulty on his request list next week. चलिए. serial number 21 Ishdeep Patel. My lord, notice होना है. Issue notice, call for the record. Serial number 22 Shri Kapil Patwardhan Shri Yes Lama. My lord, in this case, my lord, application for taking legal hairs on the record has been filed, my lord. It is heard on IA 12668 of 2018, an application to implead legal heirs of The appellant. He has Full expired. stop. Same is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day. अब बताइए क्या है? My lord. My lord, Lordship, it's order an injury filed case. with- It's an एक injury. शुरू गई. It's an injury case, Lordship, and for injured Lordship, he's substituting the legal heirs, Lordship. हाँ ठीक है. there's- वो इंजर्ड की डेथ हो गई हाँ, बाद Injured में. की death हो गई. केस तो इंजरी ट्रीट होगा. जी जी आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट. Lordship. केस इंजरी ट्रीट होगा. Lordship. इंजरी में जो इंजरी के पैरामीटर्स से बढ़ना होगा या घटना होगा वो हो जाएगा. Lordship. जी ठीक है. Lordship. यही एंजाइटी थी आपकी. Lordship. 2015 की अपील है. वैसे भी 12 महीने रीजनेबल टाइम में डायरेक्ट नेक्सस नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियर है. इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ डेथ केस. Lordship. My lord, order 5 rule 20 application is also there. Order of लायबिलिटी parent. किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की है कि दूसरे की है? Lordship, क्यों लांबा साहब पेरेंट रिकवर Parent recover है. पेरेंट रिकवर है तो फिर सर्व कराना पड़ेगा. इशू नोट सॉरी कंसीडर्ड IA 2083/2017 an application under order 5 rule 20. Let steps be taken within 7 days. List in the week commencing 23 जनवरी 2023. Obliged, my lord. Serial number 23 Shri Rahul Singh Chaudhary Shri Kapil Patwardhan. My lord, these are two cases. One is listed at item number 23. Other is listed at item number 60. 60 Yes, ma'am. 260 भी निकाल दीजिएगा. क्या है? My lord, both the cases are bachelor death case. Age 17 to 18 years. Total award in both these cases is 5,36,000 in each case. 5,36,000. My lord, the point of company is that two pillion riders were there.
Second one is motorcycle dash the divider. In fact, by the evidence, it is proved that the offending vehicle dashed from back to the motorcycle, resulting motorcycle dash to the divider. कहाँ है वो एविडेंस? Yes, ma'am. बस उतना सी ग्राउंड है क्या? Yes, and ये the सेल्फ third, इन्फ्लिक्टेड इंजरी है इसलिए अवार्ड नहीं दिया जा सकता अगेंस्ट my lord, and the third point is that 50% future growth on income of rupees 3,000 per month. 3,000 rupees income has been assessed. Accident is of 11,813. Even if minimum wages 4,950 थी. 5,270, my lord. हाँ चलिए फिर. And आपकी तो 40%. कोई क्रॉस ऑब्जेक्शन नहीं है ना? No, ma'am. हाँ तो बस फिर कैसे बढ़ जाएगा? इनका ग्राउंड क्या है? यही 3 ग्राउंड है सर जो रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड बुलाना पड़ेगा. लेट रिकॉर्ड बी कॉल्ड फॉर. लिस्ट दिस अपील अलोंग विद द रिकॉर्ड. both the cases में भी both the case and list these cases for analogous hearing. 60 और 23 को साथ में कर दीजिएगा. obliged, ma'am. Serial number 24, Ravi Kumar Bhasin, नोटिस नहीं हुआ अभी तक क्या इसमें? 24 आप आ रहे हैं इसमें? My lord, दो अपील है. हाँ company appeal. हाँ ठीक है बताइए. हमारी enhancement of award. हाँ ठीक है. आपकी अपील किस ग्राउंड पर है? Lordship appeal is on the ground of driving license, Lordship, and I have moved application under order 5/20 also, Lordship, because non-applicant number 1 and 2 not served. तो ड्राइविंग लाइसेंस का क्या कह रहे हैं आप? Driving license, Lordship, there was no driving license, Lordship. तिवारी के बोलिए. हाँ क्या? Lordship, there was no driving license. आप क्यों खड़े हुए हैं इसमें? आप क्यों खड़े हुए हैं? ये मतलब एप्लीकेंट है मतलब ये. तो ये बहस करेंगे, आपको बहस करना? नहीं मैं बहस करूं. तो इनको क्यों खड़ा कर लिया आपने? आपको क्या लगता है इससे कुछ अनड्यू सिंपैथी मिल जाएगी? उनको बोलिए पीछे जाके बैठिए. पीछे जाकर बैठिए. ये वकीलों के बैठने की जगह है, आप पीछे जाके बैठिए. हाँ ड्राइविंग लाइसेंस का क्या ग्राउंड है बताइए प्लीज. Driving license, Lordship, here, Lordship, there was no driving license, Lordship. Police have also leveled charges under section 3/181, Lordship. फिर And आप क्या एविडेंस लीड करिए? Lordship, I moved an application before the London Tribunal, Lordship, to call for the IO, Lordship. And that application was dismissed, Lordship, by 18/2/2015, Lordship. And thereafter, my right of defense evidence was also closed, Lordship, in the same order sheet, Lordship. यहाँ क्या एविडेंस लेकर आए? आपने आरटीओ को एग्जामिन तो कराया नहीं, आईओ क्या बताता? IO उस आईओ थोड़ा ना बताएगा लाइसेंस के बारे में. लॉ क्या है? आपको आरटीओ को एग्जामिन कराना है जिस क्षेत्र का वो रहने वाला है. जी, तो वो तो ग्राउंड गया. अब इनकी एनहेंसमेंट पे सुन लेते हैं. लॉर्डशिप उसके बाद में एविडेंस देता. लॉर्डशिप मेरी एविडेंस तो आप क्यों नहीं दिया टाइम से भाई? ये प्राइवेट कंपनियों की हालत बिल्कुल खराब है. ना इनके पास संसाधन है, ना इनके पास लोग हैं. चलिए, अगर आप मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से आप कवर्ड हैं, आपने एविडेंस लीड नहीं करी. एविडेंस तो लीड नहीं हो पाई लॉर्डशिप, बस तो खत्म हो गया फिर. राइट, माय राइट ऑफ डिफेंस एविडेंस वाज क्लोज्ड. उसके खिलाफ आपको आना चाहिए था तुरंत ऑर्डर कर. लॉर्डशिप 20/2/15 का वो सॉरी 18/2/15 का ऑर्डर था लॉर्डशिप. हाँ. और उसके बाद अवार्ड हुआ है लॉर्डशिप 25/2/15 को अवार्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 7 days. आपकी 520 अलाउ करते हैं, लिखिएगा. heard on IA 5279 of 2017, application under order 5 rule 20 of the code of civil procedure to serve the owner driver of the offending vehicle. Let steps be taken within 7 days. List in the week commencing 23 January 2023 along with MA 03328/16. कितना जमा कराया आपने अभी?
तो स्टे तो है नहीं आपके पक्ष में? 50% का stay था। 50% जमा करा दिया? It must have been lordship. I am not having receipt. 50% आप विड्रॉ कर दीजिए अपना, पूछिए उससे अपने पक्षकार से। कर लिया ना विड्रॉ? ठीक है, चलिए। Lordship, the enhancement appeal, copy of enhancement appeal be supplied to me so that I कॉपी can take मेमो instructions. अपील दे। Serial number 25, TS Lama, Kapil Parvadhan. Lordship, it's an injury case, Lordship. Here the appeal is filed on the ground, Lordship, that in the first information report, Lordship, was lodged on the basis of Dehati Nalsi itself, Lordship, that was upon the information given by the applicant, Lordship, the injured Lordship. It was a tractor of Golu Kushwaha, Lordship, that has dashed the applicant, Lordship. That is, FIR was lodged on the very same day, Lordship, on the date of accident on 9/7/2014, Lordship. Later on, Lordship, this vehicle of Lala Ram Yadav was seized by the police, Lordship. I have examined IO also, Lordship, who deposed, Lordship, that Exhibit D1 is the Dehati Nalsi and Exhibit D2 is the statement of the Arjun Singh, Lordship. And he had informed, Lordship, that it was a tractor of Golu Kushwaha, Lordship. And later on, Lordship, this vehicle after case of false implication, Lordship, after बताइए। पैरा 9 and 10 पढ़िए। आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य में आवेदक अर्जुन सिंह शपथ पत्र पर कथित घटना के समय उसे ट्रैक्टर द्वारा टक्कर मारी थी जिसे कि उसका चालक उपेक्षा उत्तोलन से चला रहा था को कथित किया है। प्रति परीक्षण में यह व्यक्त किया कि ट्रैक्टर को आईओ की एविडेंस को आईओ की एविडेंस है पैरा 10 में। पढ़िए। अनावेदक की ओर से लक्ष्मण सिंह प्रधान आरक्षक की साक्ष्य को प्रस्तुत किया है जिसमें उसने व्यक्त किया कि प्रदेश डीए की देहाती नालसी अर्जुन सिंह द्वारा लेकर आई थी जिसे अ से भाग पर उसके हस्ताक्षर है और ब से ब भाग पर अर्जुन सिंह के हस्ताक्षर है। उसके द्वारा अर्जुन सिंह के कथन प्रदेश D2 लेख किए हैं। इस साक्षी ने प्रति परीक्षण में इस तथ्य को गलत बताया है कि उसने प्रार्थी के दबाव में आकर दूसरा ट्रैक्टर जब्त किया था। वह व्यक्त करता है कि दुर्घटना जिस ट्रैक्टर से हुई थी उसकी उसने जब्ती की थी। इस तरह उक्त साक्षी के द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 के आधिपत्य से ट्रैक्टर जब्त किया गया था को कथित किया है। इस साक्षी के कथनों से आवेदक अर्जुन सिंह एवं उसके साक्षी अशोक कुशवाहा आई विटनेस के कथनों की पुष्टि होती है। ट्रैक्टर क्रमांक MP 40 AA 1192 के द्वारा देहाती नालची और FIR देखते हैं। देहाती नालची इज एग्जिबिट D1 D1। जो इन्वेस्टिगेटर भी है वो देहाती नालची पढ़ते हैं ना, क्या लिखा है। घटना स्थल जतरापुरा मेन रोड विदिशा इतना इतना। मैं उक्त पते पर रहता हूँ, मजदूरी करता हूँ। आज सुबह करीब 8 बजे की बात है। मैं अपने घर से दूसरे मकान पर पैदल जा रहा था कि जतरापुरा मेन रोड पर क्या है के सामने से गोलू कुशवाहा निवासी रामपुरा टपरा विदिशा के ट्रैक्टर ट्रॉली को उसका ड्राइवर तेज गति से लापरवाही पूर्वक चलाकर लाया और मुझे टक्कर मारी तो मैं गिर पड़ा और ट्रॉली का पहिया मेरी कमर पर चढ़ा दिया जिससे मुझे कमर व दाएं कंधे पर चोट लगी। मौके पर उपस्थित लोगों ने ड्राइवर को देखा। मैं देख नहीं पाया तो मुझे भतीजा तथा पत्नी इलाज के लिए जिला अस्पताल विदिशा लेकर आए। रिपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि ट्रैक्टर जो है गोलू कुशवाहा का था। मतलब उसको लोगों ने बताया था। नहीं, लोगों ने नहीं बताया, ये नहीं कह रहे। मतलब ये आया ना कहाँ है पैरा 9 में स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति के देहाती नालची पढ़ रहे हैं। देहाती नालची में कहाँ लिखा है कि लोगों ने बताया ना सर। लोगों ने ड्राइवर उपस्थित थी, लोगों ने ड्राइवर को देखा। मैं नहीं ड्राइवर को नहीं देखा था। मैं नहीं देख पाया। ड्राइवर को नहीं देख पाया। चलिए, इट इज ओनली गोलू कुशवाहा। फिर ये अर्जुन सिंह का कथन है जी। ठीक है, 9/7/14 का ही।
मैं बयान कर बताया कि मैं आज सुबह अपने घर से दूसरे मकान पर पैदल जा रहा था। रास्ते में एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला तेज गति पर से चलाता हुआ आया और मुझे ट्रॉली के पिछले हिस्से से टक्कर मार दी। मैं वहीं गिर गया। मुझे कमर इसमें चोट आई। ट्रैक्टर ट्रॉली गोलू कुशवाहा निवासी रायपुरा टपरिया का रहने वाला है। ये आ तो है, ये कहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इसके स्टेटमेंट में। फिर एफआईआर देखते हैं। गोलू कुशवाहा के ट्रैक्टर से बदल कैसे गया? FIR is also registered against Golu Kushwaha. ये अपील तो अलाउ करनी पड़ेगी। लिखिए, this appeal is filed by the insurance company being aggrieved of award dated 17/1/2017 passed by 16th Additional Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in claim case number 1637 of 2014 on the by the insurance company, namely Future Generally Insurance Company Limited, on the ground that in the Dehati Nalishi Exhibit D1 and the statements of the victim Arjun Singh Kushwaha recorded on the date of the accident 9/7/2014 Exhibit D2, this witness has categorically mentioned that accident had taken place with the tractor trolley of Golu Kushwaha, resident of village Raipura, Tapra, Vidisha. Full stop. Later on, other vehicle has been falsely implicated and merely on the basis of some statement by the IO of the case that he had seized the tractor which was involved in the accident, compensation has been awarded against the owner driver of the tractor number MP 40AA 1192 owned by Lala Ram and driven by Thakur Prasad. Full stop. It is submitted that this being contrary to the evidence available on record, especially the documents exhibit D1 and D2 which were proved by the IO, this appeal deserves to be allowed and be allowed as such. Next para. Shri Kapil Patwardhan, learned counsel for the claimants, on the other hand, submit that IO has admitted, as discussed by learned tribunal in para 10 of the award, that he had seized that vehicle which was actually involved in the accident, that is tractor number MP 40AA 1192. Next para. The fact of the matter is that there is no mention of this tractor number in the Dehati Nalishi Exhibit D1 or the FIR. Full stop. It is apparently a case of false implication of a vehicle on a later date. Next para. FIR. Full stop. When FIR was lodged on 9/7/2014 itself against the vehicle of Golu Kushwaha, resident of Raipura, being driven by an unknown person, then tractor trolley of Lala Ram Yadav driven by Thakur Prasad could not have been implicated, and tribunal has clearly, which is insured with the appellant, and therefore tribunal clearly erred in passing the impugned award. Next para. Perusal of the record reveals that
there is an error apparent in appreciation of evidence. Tribunal has travelled beyond the documentary evidence. It has failed to take into consideration that Dehati Nalishi, thereafter statement of the injured Arjun Singh, namely that is exhibit D1 and D2, so also FIR, all are recorded against the tractor of Golu Kushwaha, resident of Raipura. Therefore, implication of a vehicle at a later date amounts to false implication, that too of a person belonging to another village. Full stop. Thus, in the opinion of the court, this court, tribunal clearly erred in appreciating the evidence and passing the impugned award. Impugned award against the appellant and the owner driver of the tractor MP 40AA1192 is not sustainable in the eyes of law. Therefore, appeal deserves to be allowed and is allowed. The court be sent back. Okay. Year number 26, it was Pil Yadav, Siddharth Kumar Sharma, 26 Pandan, it was Pil Yadav. बताइए. Lord, in this case, I have filed an application under Order 1, Rule 10, Malord. I propose, Malord, to implead the subsequent purchase. Malord, in fact, the subsequent purchasers have applied for impleading themselves. क्या मैटर क्या है ये एमए किस बात की है? Malord, this is the, appeal under section 299 of Indian Succession Act. अच्छा. My application under section 276 for seeking probate has been rejected. उसमें सब्सिक्वेंट परचेजर क्या करेंगे? Because transfer, Malord, the respondent number 2 has already transferred a right over the property. Now I am the transferee, Malord. She has lost interest in the property. Okay. Therefore, subsequent purchaser has to be impleaded as a party, Malord. And but second thing is, Malord, the probate proceeding are against the public. Malord. It is proceeding in RAM. Therefore, any person who has interest in the property, he can apply for impleading. क्या लाए आप? Well, there is a direct judgment on this point that in the probate proceeding, my lord, the subsequent purchaser is not the necessary Yes. party. दीजिए. 2007 volume 8 SCC 506. 2007 का 8 SCC 506. Direct on this हाँ. point. मुझे भी कुछ याद था, साइटेशन तो याद नहीं था. But I have also brought one judgment of Supreme Court. Supreme. But this is not in the context of probate proceeding, Lord, but in a general proceeding, Lord. नहीं, मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए इकबाल साहब जी. ये जजमेंट जो है ना सुनील गुप्ता का, ये बहुत पुराना जजमेंट है जी. If he succeeds or fails, consequences will follow. ठीक है ना? वो जो दावा फिर कैंसिलेशन का जो सक्सीड करेगा, वो कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड, उसमें आप नेसेसरी पार्टी होंगे. नहीं, इनके फेवर में प्रोबेट हो गया तो हमारी तो सेल डीड चली जाएगी. मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ जी. चली नहीं जाएगी अपने आप. अगर इनके फेवर में प्रोबेट हो गया, then he will have to file a suit for cancellation of your sale deed. But then also, my lord, I will not be able to object to this probate order, my lord. Once we get a probate, my lord, that means probate order को ऑब्जेक्ट करने का तो आपको कोई राइट ही नहीं है. यही इस लॉ का वो है. पढ़िएगा, एक किताब और निकलवाई दीजिएगा. एक कॉपी है आपके पास में? सॉरी मैं पढ़ता हूँ. प्रोबेट प्रोसीडिंग्स, नेसेसरी पार्टीज टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कंसर्न ड्यूरिंग प्रोबेट प्रोसीडिंग्स, impediment of said transferee to probate proceedings, denial of by High Court, challenge to sustainability. Held such a transferee is not a necessary party to the above proceedings. Citations are necessary to be made to only of those who inter alia claim through or under the will, or deny or dispute the execution thereof. If a probate proceeding was initiated, the transferee would be deemed to have notice thereof. Before purchasing the property, the transferee had taken a calculated risk. Hence, in view of the above, the order of High Court denying impediment of transferee as a party to probate proceedings held was not liable to be interfered with. CPC Order 1 Rule 10(2) एप्लीकेशन जो परचेजर को डिसमिस किया है, तो आपको राइट रहेगा. मतलब मैं जी. योर राइट विल बी व्हेन यू विल फाइल. देखिए, इतना मैं समझता हूँ जी, प्रोबेट इनके पक्ष में ग्रांट हो जाने से आपकी सेल डीड अपने आप कैंसिल नहीं हो जाएगी. He'll have to file, he can negotiate with you or he can file a suit for cancellation of sale deed. Once he file a suit for cancellation of sale deed, you will have all the rights of hearing. ठीक है.
चलिए, तो अब यहाँ क्या करना है इस अपील में? ये तो Lord, इतनी may बड़ी I- लाइन हो गई। My lord, may hear it finally. it may be heard finally. बताइए, शुरू Today I am not ready. Or it may be taken up at any on any date. नए साल में कि इसी साल में? नए साल में रहते हैं। आपकी 110 जाने दें आज। I am appearing for the owner also, my lord. The transfer. हाँ जी, तो ट्रांसफर का तो राइट आपको पार्टी होंगे ही, ट्रांसफर तो राइट होगा। हाँ, वो तो है, पार्टी है। हाँ, श्री Yeah, otherwise, my lord, public at large, my lord, once public at large is implemented, वो then any person who has interest in the property, he can certainly come forward and सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। वो ये तो consider नहीं किया when public at large is implemented. Here, respond number 1 is public at large. Once public at large is there, my lord, then there is a common publication. रिस्पोंडेंट नंबर 1 का तो इंटरेस्ट उसका तो है नहीं, नहीं, नंबर 1 तो public at large. अच्छा, नंबर 2 जो है उसका तो इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट है, उसको तो वो कंटेस्ट करेगा ना। public at large. You move into his or her shoes. Lord, I am already appearing for her, my lord. That is not difficult. हाँ, that's But what- she has lost interest, my lord, and because of her age, my lord, she is at an advanced stage. So she is not contesting the matter properly. Therefore, the transfer, my lord, has come forward. The transfer is. आप जब तक कोई ये नहीं कह सकता कि मैटर इज ना वो इतनी उम्र हो गई है, पता नहीं वो। चलिए देखेंगे इसको। देखिएगा, श्री पुष्पेंद्र यादव, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट, ये इसी में है ना, एमए में है ना आपकी? एमए। श्री संजय के अग्रवाल, लर्नेड काउंसिल फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 2 as well as proposed and as well as the proposed respondents, heard on IA 4954 of 2020, an application under Order 1 Rule 10 CPC seeking implement of subsequent purchasers. Full stop. Next para. Shri Pushpendra Yadav, placing reliance on the judgment of Supreme Court in Sunil Gupta versus Kiran Girhotra and others, 2007 का 8 SCC 506, submits that such application cannot be allowed. Full stop. Transferee has no interest in the probate proceedings. Full stop. In view of such judgment of Sunil Gupta versus Kiran Girhotra and others, wherein Supreme Court has held that a probate can be granted only to an executor appointed by the will, a transferee of a property during the pendency of a proceeding is not a necessary party. Full stop. In view of such decision, application under Order 1 Rule 10 CPC is dismissed. Next, at this stage, Shri Yadav submits that he is not prepared with the case for final hearing. On his request, list this case in the week commencing 16 January 2023. IR IR if any to continue. मोबाइल। ये एमपी क्यों लगी हुई है इसके साथ में? वो उसमें रेवेन्यू से रिलेटेड मामला था, तो वो डिसाइड हो गया था, तो दैट हैज बीन लिंक्ड। अच्छा, ठीक है, देखिए। नंबर 27 पवन सिंह ठाकुर, श्रीमती आरती विक्रमा, बताइए सिंह साहब। Your Lordship is an appeal, Your Lordship, against the order so passed by the RCT, Your Lordship, by क्या कर granting दिया the compensation to the tune of rupees around 10 lakhs, 8 lakhs, Your Lordship. हाँ, डेथ केस है। Yes, Lordship. डेथ केस में तो 8 लाख ही मिलता है। फिर And also only one submission which has been there, Your Lordship, while impugning that award which has been passed by the RCT, that there has not been any finding in respect of the income of that deceased, Lordship. And after इनकम ऑफ that, डिजीज तो है ही नहीं, फिक्स्ड है अमाउnt। no, Lordship, it may Frivolous kindly be appeal है, considered. कितनी So subsequent amendment has कितनी been done, cost? Lordship. Yes. No, it's not. देखिएगा श्री लॉर्डशिप, इसमें मेरी आईए भी है, रिस्पोंडेंट नंबर हैज बीन डाइड लॉर्डशिप, उसका एलास ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है। श्री विक्रम सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया, अपीलेंट। श्रीमती आरती अपर्णा सिंह। अपर्णा सिंह और रिस्पोंडेंट नंबर 1 2 3 4 तो अभी है ही नहीं। नेक्स्ट, दिस अपील इज फाइल्ड, नहीं 4 भी कर ली। 4 heard on IA 6259 2021 में 6 6259 6259
6259 for deleting the name of respondent number One. one, as he has died and his legal heirs are already available on record. Same is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day. Next. This appeal is filed under Section 23 of the Railway Claims Tribunal Act 1987 by the Union of India, being aggrieved of judgment dated 10th January 2017, passed by Learned Railway Claims Tribunal, Bhopal Bench in OA number Roman 2, small u, oblique BPL, oblique 2012, oblique 0068, on a singular ground that claimants had not proved the income of the deceased. Next para. Next. Srimati Aparna Singh submits that दीजिएगा रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट दीजिएगा. रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट अलग है. Submits that under the Railway Claims Tribunal Act, award is to be made as per the nature of the injury and as per the schedule provided thereunder, and there is no correlation with the income of the injured oblique deceased. Full stop. Therefore, the appeal is filed on a frivolous ground. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that the preamble of the Railway Claims Tribunal Act 1987 provides that it is an act to provide for establishment of a railway claims tribunal for inquiring into and determining claims against a railway administration for loss, destruction, damage, deterioration or non-delivery of animals or goods entrusted to it to be carried by railway, or for the refund of fares or freight, or for compensation for death or injury to passengers occurring as a result of railway accidents or untoward incidents, and for matters connected therewith or incidental thereto. Full stop.
amount of compensation payable in respect of death and injuries is provided provided in the schedule under Rule 3 of the Railway Accidents and Untoward Incidents within bracket compensation bracket close rules 1990 and provide a specific amount of compensation of rupees 8 lakhs for death in part 1 of the schedule. Therefore, it is evident. Full stop. Next paragraph. As far as Rule 3 of the rules of 1990 are concerned, they provides that the amount of compensation payable in respect of death or injuries will be as specified in the schedule. Full stop. Thus, it is evident that the amount of compensation has no bearing with the earning capacity of the deceased, and therefore this appeal is apparently frivolous and has been filed knowing very well that there is no correlation between the income of the deceased and the amount of compensation which is fixed under the rules of 1990. Thus, this appeal being frivolous is dismissed with cost of rupees 25,000 to be deposited by the Union of India through General Manager West Central Railway Jabalpur for filing a frivolous appeal and wasting time of the court. Frivolous appeal, बस for wasting time मत लिखिएगा. Frivolous appeal. Full stop. Let this cost be recovered from the West Central Railway if it is not paid within 30 days and deposited in the High Court Legal Services Authority. Then Secretary of the High Court Legal Services Authority will be entitled to recover this cost as areas of land revenue. बताइए अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कि इस तरीके से अपीलें फाइल ना किया करें. किसने लीगल ओपिनियन दी थी अपील फाइल करने की? It's an appeal which has already been filed in the 2017. हाँ ठीक है, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आपने ओपिनियन दी थी. जिसने भी ओपिनियन दी थी उनके खिलाफ एक्शन लीजिए. This time it should be exempted. Definitely दिखा देंगे. Railway administration will be free to take action against the person who had given opinion to file the said appeal. Said frivolous appeal कर दीजिएगा. Said appeal on a frivolous ground, contrary to the rules. Whether it is necessary to serve the respondent number 2. हम 10 notice के लिए application लगाई थी, it will be allowed. License breach was there, but they have not reduced any evidence. Para 14. Evidence दिया ऐसा नहीं बोलो भाई. Para 14. पढ़ दीजिए evidence पढ़ दीजिए. Para 14. पढ़ दीजिए evidence पढ़िए. बहुत सारा. इस बात की संरचना को देखते हुए इसे प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 3 पर है. इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 के द्वारा संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को साक्ष्य में प्रस्तुत कर यह प्रमाणित करने का कोई प्रयास नहीं किया है कि दुर्घटना कारित वाहन के चालक के पास वैध एवं प्रभावकारी चालन अनुज्ञप्ति नहीं थी, तब बीमा कंपनी की शर्तों का उल्लंघन साक्ष्य अभाव में प्रमाणित नहीं होता है. सिंग्राम 3/181 में चालान पेश हुआ है. पैरा 10 में जो है हमारे द्वारा जो इन्वेस्टिगेटर है वो इसके स्टेटमेंट लेकर के आए, कहते हमारे पास लाइसेंस नहीं है. कहाँ है वो इसलिए रिकॉर्ड इसको बुला कर. ये रिकॉर्ड है ना, ये रिकॉर्ड है. आप देख लीजिए रिकॉर्ड चाहे तो. सर्विस तो उसको जरूरी है बिना उसके. पहले आप रिकॉर्ड तो देख लीजिए कि आपने अपना बर्डन डिस्चार्ज किया है. उतना रिकॉर्ड देख लीजिए आप. 10 मिनट बाद लीजिएगा ये केस. Serial number 29. Well, in this case, notices have to be issued. Issue notice call for the record. Serial number 30. Yes, Portion. Anup Tiwari. रिकॉर्ड जी रिकॉर्ड है. किस ग्राउंड पर है आपकी अपील? Lord, the insured vehicle, Lord, it has not been established कि insured vehicle caused the accident, Lord. अच्छा,
क्या एविडेंस? Lord, I awarded evidence. Lord, IO has been examined, Lord. The criminal, Lord, the kindly see the Merck intimation, Lord. And exert P3, Lord. P3 which is date of incident, Lord, 12/11/2016. एक मिनट P3 पढ़ने दी। P3 ये क्या लिखा है इसमें? Lord, the Dr. Manmohan Singh, Lord, the SGMH Hospital, Viva, Lord. Merck intimation. Merck intimation. पढ़ी। पुलिस चौकी SGM रीवा से ASI मंगलम रावत एक था बिना नंबरी मर्ग इंटीमेशन मर्ग क्रमांक 065316 धारा 174 CRPC का लाकर पेश किया जो असल नंबर पर कायम किया गया। नकल मर्ग इंटीमेशन जेल है। उपरोक्त सूचना करता खुद की हस्ताक्षर शुदा मृत्यु की MLC सूचना क्रमांक 618/16 की लाकर पेश की है। नकल जेल लालजी शर्मा फलाना फलाना उम्र जोधपुर नई दिल्ली को अज्ञात कारण से मृत अवस्था में PCR एम्बुलेंस से लाया गया। डिसीज वाज डेड ब्रॉड। ठीक है he was brought by पुलिस पर्सनल एम्बुलेंस। हाँ एम्बुलेंस पुलिस पर्सनल लेकर आए। फिर क्या हुआ? एंड देयर में लॉर्ड मतलब इस मृतक ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है? कोई रिपोर्ट किसी की नहीं है इसमें। हाँ देयर में लॉर्ड डॉक्यूमेंट MLC में लॉर्ड एग्जिबिट P5 में लॉर्ड P5 जी। मरीज का नाम अज्ञात लालजी शर्मा लिखा है। बाद में लिखा होगा है ना। देन मिलॉर्ड अज्ञात कारणों से मृत्यु अवस्था में PCR एम्बुलेंस में लाया गया। इसकी बात इसकी MLC क्या कही? इंजरी है क्या है इसको बताइए। डेथ ब्रो ही वाज ब्रॉड डेथ तो है ही। यस इतना तो समझ गए जी। अब चलिए P6 पढ़िएगा। OPD पर्ची है। यस मिलॉर्ड। इसमें वही लिखा इट इज ब्रॉड बाय द एम्बुलेंस एम्प्लॉय 108 अननोन पेशेंट डिक्लेयर्ड डेड। ठीक है। यस रिफर्ड बैक टू CMO। फिर क्या हुआ? इन ऑल दैट नॉट इन दिस ऑल दिस डॉक्यूमेंट नथिंग हैज बीन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है? नक्शा पंचायतनामा में क्या है? यस मिलॉर्ड। एंड FIR इज लॉस्ट मिलॉर्ड आफ्टर 2.5 months मिलॉर्ड। ठीक है देख The company has examined the IO, my lord. Who has admitted कि he has not investigated the matter. The witnesses as well as deceased claimant themselves come to the police station and they have lost the FIR. ऐसा लगता है कि कोई जोधपुर का निवासी था जो कि यहाँ आया था, उसकी रीवा आया था, उसकी मृत्यु हो गई। अज्ञात व्यक्ति की लाश लेकर आया गया। अब ये गाड़ी कहाँ से आ गई इसमें ये तो मालूम पड़े। मोटर एक्सीडेंट का केस कैसे बन गया? पहले इसमें लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू हेड इंजरी। हेड इंजरी तो ठीक है। MLC में लिखा मतलब ड्रिंकिंग कंडीशन है। P6 में देखेंगे आप। P6 में उसी में लिखा है क्या? ये ड्रिंकिंग ही वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल मिलॉर्ड। P6 में खुद ही ऑन द हेड कहाँ लिखा है? ये ऊपर लिखा है। बाय एम्बुलेंस एम्प्लॉय नॉट कॉन्शियस नॉट पल्पेबल। ड्रिंकिंग कहाँ लिखा है ड्रिंकिंग? ये इसमें लिखा है। P6 ही तो पढ़ रहे हैं हम। जो टॉप में देखेंगे सर जहाँ एज लिखी है उसमें 40 साल मेज जनरल। ये इसके नीचे लगा सर BPL इतना ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग क्या होता है? केयर ऑफ जनरल। ड्रिंकिंग क्या? ड्रिंकिंग का आप गलत मतलब ही क्यों निकालते हैं? यू विल हैव टू एक्सप्लेन दिस ड्रिंकिंग। अस्पताल की पर्ची में मैं पहली बार जहां पर मरीज का नाम उम्र लिखी जाती है वहां ड्रिंकिंग पहली बार पढ़ रहा हूं मैं, इसलिए मेरे को भी आश्चर्य हो रहा है। This is the document filed by the claimant and relied by the claimant, my lord. साहब आप इतना yes lord. ये तो ड्रिंकिंग आपको एक्सप्लेन क्योंकि पोस्टमार्टम में आता फिर उसके अल्कोहल आता है स्टमक में। लिखा मैं ये कह रहा हूं कि मेंशन। अरे आप लिखा है आप उसको रिलाय कर रहे हैं। आपका मतलब यही है ना उसको कहने का कि वो नशे की हालत में उसका एक्सीडेंट हुआ। ड्रिंकिंग से कैसे? तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ के बताइए कहाँ आया है अल्कोहल की प्रेजेंस। बनर्जी साहब आपको असिस्ट करेंगे क्या? अच्छा चलिए फिर आईओ का बयान पढ़िए। चलिए आइए। Only one witness has been examined, my lord. One witness to the incident, my lord. ठीक है। क्या कहा उसने?
आप कृष्ण कुमार द्विवेदी साहब का स्टेटमेंट पढ़िए जी अनावेदक क्रमांक 3 के साक्ष्य, ठीक है जी। यह बात सही मतलब यह बात सही है कि मेरे द्वारा अपराध क्रमांक 287/16 दिनांक 25/11/16 थाना समान का अन्वेषण मेरे द्वारा किया गया है। यह बात सही कि घटना दिनांक 12/11/16 की है। यह बात सही है कि मेरे द्वारा दिनांक 25/11/16 को अपराध दर्ज किया गया। मर्ग जांच के कारण अपराध घटना के 13 दिन पश्चात दर्ज किया गया। मुझे मर्ग दिनांक 13/11/16 को प्राप्त हो गया था। उस समय गवाह मिले नहीं थे। गवाह दिनांक 25/11/16 को मिले थे। इस कारण अपराध क्रमांक 25/11/16 को दर्ज किया गया। यह बात सही कि गवाह मेरे पास स्वतः थाने आए थे और थाने में उन्होंने जानकारी दी है। यह बात सही है कि गवाहों को मृतक के परिवार वाले थाने लेकर आए थे, जिस पर उनकी गवाही ली गई थी और अपराध पंजीकृत किया गया। देन लॉर्ड साक्षी को मर्ग इंटीमेशन P3 कांस B से B भाग तथा MLC P5 का C से C भाग लालजी शर्मा तनय कृष्ण कुमार शर्मा उम्र 40 साल जोधपुर थाना नई गढ़ी को अज्ञात कारण वो आपका पैरा 3 में जवाब दे दिया। ड्रिंकिंग लेके तो डॉक्टर बता सकता है, आपने डॉक्टर को एग्जामिन नहीं किया। आगे पढ़िए पैरा 4 पे। मैं दिनांक 25/11/16 को घटना स्थल पर गया था। घटना स्थल पर 25/11/16 को ना तो मृतक की मोटरसाइकिल थी, ना ही दुर्घटना कारित करने वाला वाहन था। यह बात सही है कि मेरे द्वारा दिनांक 22/12/16 को वाहन मोटरसाइकिल की जब्ती बनाई गई थी, जिसका जब्ती पत्रक 12 है, जिसकी जब्ती का स्थान संजय नगर तिराहा है। पुलिस द्वारा वाहन स्वामी को सूचना दी गई थी, तब वाहन स्वामी संजय नगर तिराहे में वाहन को लेकर आया था। यह बात सही है कि वाहन स्वामी व चालक को जो सूचना दी गई थी उसका दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं है। मैं आज जो डायरी लेकर आया हूँ उसमें ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं जिससे यह दर्शित हो कि वाहन स्वामी को वाहन को संजय नगर तिराहा आने के लिए कहा गया हो। पैरा 5 लॉर्ड मेरे द्वारा घटना स्थल पर नक्शा मौका बनाया गया था। यह बात सही कि नक्शा मौका अनुसार दुर्घटना कारित वाहन व दुर्घटनाग्रस्त वाहन अपनी अपनी साइड से जा रहे थे। यह बात सही कि दोवन वाहन की टक्कर की आमने सामने से हुई। यह बात सही है कि मैंने धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस वाहन स्वामी को नहीं दिया। यह बात सही है कि जब दुर्घटना कारित करने वाला वाहन मौके पर नहीं पकड़ा जाता तो पुलिस के पास उनका जवाब दावा क्या है यार? वाहन स्वामी रामकृष्ण पटेल और ड्राइवर राजा बाबू साकेत का क्या जवाब दावा है? एक्स पार्टी है। क्या कर रहे हैं जब आप ही देयरफॉर एविडेंस से तो आपको कोई मदद नहीं मिल रही। आपने कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह करवाया होगा ना? हमने आईओ को एग्जामिन किया। ही इज माय विटनेस टू द इंसिडेंट। ही इज नॉट ए विटनेस टू द इंसिडेंट। मतलब इन रिस्पेक्ट ऑफ द लॉट इन्वेस्टिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ द ही हिमसेल्फ। क्लेमेंट ने किसको एग्जामिन कराया? अरविंद कुमार पटेल। पहले तो फादर है कृष्ण कुमार द्विवेदी लॉर्ड। ही इज नॉट विटनेस। ही इज नॉट द विटनेस। फिर another witness has been examined by the claimant lord Arvind Kumar Patel। इनकी एविडेंस पढ़ते हैं, इनका क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ते हैं। अरविंद कुमार पटेल साहब का मैं रीड इट। एक सेकंड में वहां तक पहुंच जाऊं प्लीज। अरविंद कुमार पटेल साहब पढ़िए प्लीज। मेरा 1 मिनट यह है कि मैं वर्ष 11/12 से संजय नगर रीवा में स्थित कैप्सूल रोड में हीरालाल पटेल के मकान में किराए से रह रहा था। वर्ष 2015-16 में ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट से PhD कर रहा था एवं साथ में भतीजों को रखा था जो पढ़ाई करते थे। यह कि दिनांक 12/11 को मैं अपने मित्र के तिलोक उत्सव कार्यक्रम में भाग लेने गया था, जहां से पैदल अपने कमरे वापस लौट रहा था और जैसे ही अपने घर के पहले संजय नगर रोड पर स्थित कोरियन मोहल्ले में गुप्ता आटा चक्की के पास समय करीब 10 रात्रि बजे पहुंचने वाला था, तभी मेरे पीछे से देख लीजिए। चीफ में तो बता दिया आपका क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। आप अनावेदक क्रमांक क्या है क्लेम केस में? जी मिलॉर्ड। यू आर अनावेदक क्रमांक 2। देख रहा हूँ व्हाट्सएप 3 है आप। 3 चलिए ये कहना गलत। 3 का क्रॉस एग्जामिनेशन पढ़ते हैं अपन। 3 है। मेरा पूरा नाम अरविंद कुमार पटेल है। मेरा पूरा नाम अरविंद कुमार पटेल है। मैं वर्तमान में जन अभियान परिषद मऊगंज में कार्यरत हूँ। मैं जन अभियान परिषद में जुलाई 2017 से कार्य कर रहा हूँ। मैं रीवा में रहता हूँ। मैंने PhD
2013-14 में शुरुआत की। मैंने पीएचडी का एग्जाम 2013 में ग्रामोदय यूनिवर्सिटी चित्रकूट में दिया था। अभी मेरी पीएचडी पूरी नहीं हुई, थीसिस मेरे द्वारा जमा नहीं की गई। मेरे पीएचडी के मार्गदर्शक डॉक्टर रचना श्रीवास्तव थी, वह रीवा में रहती है। जब मैं पीएचडी करता था तो चित्रकूट में व्याख्यान माला होती थी। जब मैं चित्रकूट में रहता था तो वहाँ के व्याख्यान माला में क्या क्रॉस कर रहे हैं आप? देखिए तो पैरा 10 में आई है, इस व्याख्यान माला से कोई मतलब नहीं है। जी ये बात सही, आप सब एडमिशन करा रहे हैं अपने विरुद्ध। आपका वकील साहब पैरा 11 में पैरा 10 तो पढ़े पहले, यस, फिर 11 यह बात सही है कि शपथ पत्र के ए से ए भाग पर रोड में पड़े ईंट के टुकड़े को बचाने के चक्कर में सामने से आ रही मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। यह बात सही है कि 2 मोटरसाइकिल के आमने सामने की घटना है। फिर कहाँ की? अपोजिट साइड से आकर घटना कारित मोटरसाइकिल टकराई। यह बात सही कि कंक्रीट का कोर लग जाने के कारण सिर फट गया था। मृतक लालजी शर्मा स्वतः गाड़ी चला रहे थे। घटना के समय कुत्ते वगैरह नहीं भौंक रहे थे। घटना के समय मेरे पीछे से MP 17 MD 5460 गाड़ी नेशनल हाईवे तरफ जा रही थी। फिर स्वतः कहा कि नेशनल हाईवे तरफ आ रही थी। सामने से जो गाड़ी आई उसे मैंने नहीं देखा था, ना ही उसका नंबर देखा था। मैंने जो गाड़ी एक्सीडेंट की थी दुर्घटना स्थल पर अनबैलेंस होकर रुक गई थी, फिर भाग गई थी। मैंने मृतक की गाड़ी का नंबर नहीं देखा था। मेरा 11 ब्लॉक 181 पे पुलिस को सूचना दी थी। हाँ, फिर पुलिस आई। जब पुलिस आई थी तब मैं वहाँ मौजूद था। पुलिस ने मुझसे घटना स्थल पर नाम पता नहीं पूछा। FIR नहीं कराई। He did not lodge any FIR. ठीक है, फिर मैं अपने घर चला गया। क्या सजेशन दिया उसको? My lord, he is educated person. My lord, it is not expected from him. आप He should have. मार्शल साहब, मैं तो नहीं जाकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकता, आप करा सकते नहीं, ये गया एम्बुलेंस लेके गया है। हाँ, तो एम्बुलेंस से पुलिस ने मुझे घटना स्थल पर, आई एम रीडिंग लॉर्ड, मैंने FIR नहीं कराया था। मैं यह नहीं बता सकता कि घटना 12/11 की है, किंतु पुलिस ने 25/11/16 को FIR क्यों दर्ज की इसका कारण मैं नहीं बताता। पुलिस ने 10-11 दिन बाद मुझे बुलाया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि पूर्व में पुलिस ने मेरा नाम पता नोट नहीं किया था, किंतु बाद में उन्होंने मेरा नाम पता कैसे मालूम हुआ जब दुर्घटना हुई। ब्लड व्हीकल सीज ब्लड ऑन 22/11/2022। आप मुझे बता दीजिए, आप मेरी जगह पे अपने आप को रख लीजिए। इस क्रॉस एग्जामिनेशन से आप क्या बताना चाह रहे हैं? बस दिस इज द पॉइंट ब्लड कि he did why he has not lost the FIR and ब्लड it has come on evidence कि आमने सामने टक्कर है। हाँ, दोनों वो भी दिखा देंगे। दोनों गवाहों ने कहा, आईओ ने भी कहा है। Appeal being aggrieved of award dated 29/4/2022 passed by Learned Second Motor Accident Claims Tribunal Riva in claim case number 804 of 2016 on 2 grounds, namely it's a case of false implication of the vehicle in as much as accident took place on 12/11/2016, full stop. A unknown person was brought to the hospital by the police ambulance and thereafter in the morgue. Also, it is mentioned that an unknown body is brought to by the police. Full stop. It is submitted that FIR was lodged after 2.5 months of the incident, and it's a case of false implication. Full stop. It is submitted that the insurance company had examined the IO of the case, and IO of the case has admitted that he had not lodged the morgue intimation and had not carried out the morgue investigation. Full stop. Reading this evidence of Shri Krishna Kumar Dwivedi, Sub Inspector, Police Station Rampur, Baghelan, District Satna, it is submitted that it's a case of false implication. Next para. Shri Alok Tiwari, Learned Counsel for the claimants, in his turn submits that claimants have led evidence of eyewitness Arvind Kumar Patel. He had seen the incident. He had called the police on phone number 108 and 181, and at his instance, police came into action. Police moved into action. Full stop. It is submitted that there is no contradiction in his evidence. Rather, in para 9 and 10, counsel for the insurance company has almost extracted admission of accident, number of the offending vehicle,
and how the accident took place. Full stop. Next para. At this stage, Shri Kaushal submits that since this witness Arvind Kumar Patel has admitted that accident took place when the offending vehicle was coming from the opposite side and had hit the motorcycle on which deceased was traveling, at least a finding of contributory negligence should have been recorded. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that there is no suggestion to the IO to prove the aspect of contributory negligence. No evidence is led by the insurance company to prove the aspect of contributory negligence. Therefore, merely for the sake of drawing a conclusion, no conclusion can be drawn. आईओ को बोला है सर ठीक है पैरा 5 में हाँ ठीक है नेक्स्ट आमने as far सामने as at this stage Shri Kaushal submits that in the prescription exhibit D6 it is mentioned drinking full stop. To this also a suggestion was given to the IO in para 3, but IO categorically mentioned that he has not mentioned this within inverted commas drinking, and since it is mentioned in the OPD slip, doctor on can be inquired. This fact can be inquired from the doctor. Next para. There is no mention of smell of alcohol in the postmortem report. Reason of death in the postmortem report exhibit P9 is mentioned as death due to head injury. Full stop. This fact is corroborated by claimant witness Arvind Kumar Patel. Full stop. Thus, when Arvind Kumar Patel has proved the factum of accident, number of the offending vehicle, owner driver of the offending vehicle chose not to appear before the tribunal to dispute that they have been falsely implicated, nor moved any application with the police authorities alleging false implication, impugned award when tested cannot be said to have been passed against a vehicle which was not actually involved in the accident. Full stop. Since the insurance company has failed to discharge its owners, in the light of the judgment of Supreme Court in Banglaram, appeal deserves to fail and is dismissed. Court of the tribunal be sent back. आईओ का भी आमने सामने का एक लाइन आ जाती और लिखा दिया आमने सामने का आईओ हाँ ले लीजिए उठा लीजिए Serial number 28, Sri Gulab Chand Sahani, Sri Kapil Patwardhan. इसमें और भी गवाह नहीं केवल आईओ के बयान हुए और बाकी कुछ This appeal is filed by the insurance company, namely National Insurance Company Limited, being agreed of award dated 24th August 2017, passed by learned First Additional Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in MCC number 1257 of 2016 on the ground that there was breach of policy as the driver of the offending vehicle was not having a valid driving license. Next para. Shri Kapil Patwardhan submits, in his turn submits that no evidence was led by the insurance company to prove the breach of insurance policy, and therefore in the light of the law laid down by Supreme Court in Singram 2018 3 SCC 800. दे दीजिए Singram versus Nirmala and others 2018 का 3 SCC 800, since burden of proof is on the insurance company to establish violation of the insurance policy and the same has not been discharged, no indulgence can be shown in the appeal. Appeal fails and is dismissed. The record of the tribunal be sent back. Serial number 31, Sri Satyaprakash Misra, Sri Rahul Chaudhary,
Lordship, it was fixed for non-compliance of PF, and we have not paid the PF. Instead, the private respondents are appearing, and their power also have been filed. I am appearing on the behalf of respondent number 6, my lord. बाकी respondents ये 6th और 7th तो appear हो गए बाकी. Your Lordship, state. बाकी state है 1 to 5 तक. They have to file a reply also. एक second. आप 6 के लिए appear हो रहे हैं, 7 के लिए appear हो रहे 6 के लिए my lord. हैं. 7 के लिए कौन appear हो रहा है? आप. और 8 के लिए. अच्छा. Contesting is lordship 6. Contesting corporate 6 है. I'm the conscious. तो आपने जवाब दे दिया. Yes sir, I filed on return on 4 April 2022. अच्छा. बाकी तो contesting ही नहीं है तो फिर That is from respondent number 7, Your Lordship. 7 ही तो contesting है. 6 lordship. 6 is Respondent number 6 6 is इसका जवाब तो आ गया ना. Yes sir. क्या मैटर क्या है तो बताइए तो. मिड डे मील की तो अपील होती है भाई. मिड डे मील की तो स्कीम में अपील का प्रोविजन है. If it has been awarded in favor of the respondent number 6, then there is a provision for appeal. स्कीम में ही है. अभी हमने डिसाइड किया है. ना सरदार जी स्कीम सर स्कीम अभी मिड डे मील के लिए जो लास्ट टाइम बनाएंगे अभी आप. लास्ट टाइम जो राममणि मिश्रा सर ने एक सर्कुलर बताया था आपको, उसी सर्कुलर को मैं एक बार सर से कंसल्ट करके फिर बता देता हूँ. अरे कितने भाटी वो भटनागर साहब आप इनके पैनल पे सरदार जी के इसके पैनल पे है क्या सरदार साहब के? सरदार साहब बोल रहे हैं कि आपसे कंसल्ट करके बताएंगे. ये स्कीम रिकॉर्ड पे तो है पेज नंबर 32 में. 32 में हाँ. क्लॉज नंबर 11.1. जाइए अपील फाइल करिए. कलेक्टर मुख्य कार्यपालक के निर्णय के विरुद्ध अपील 30 दिवस के विरुद्ध संभाग आयुक्त के समक्ष की जा सकती है. आपको लिमिटेशन देते हैं यहाँ से. और क्या है. जाइए श्री गिरीश तिवारी. क्या शुभ नाम आपका? फागुन यादव. लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर श्री पीयूष भटनागर. लर्नेड पैनल लॉयर फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 5 and 8 श्री सरदार जी का शुभ नाम? भारतदीप सिंह बेदी सर. भारतदीप सिंह बेदी. और रिस्पोंडेंट नंबर 6 श्री वेद प्रकाश तिवारी. वेद प्रकाश तिवारी for respondent number 7. Next, this petition is filed by the petitioner being aggrieved of order dated 3/1/22 passed by respondent number 6 awarding work of midday meal in favor of the respondent number 6. Full stop. There is a provision of appeal against the said order. Full stop. Petitioner is relegated to avail the remedy of appeal as provided under the scheme. Dated 9/10/19. इसकी डेट पढ़ने में नहीं आ रही. Scheme is Scheme contained in annexure P6. Full stop. It is made clear that if an appeal is filed within 15 days from today, then the appellate authority shall decide the appeal on its own merits without adverting to the aspect of limitation. चलिए. dated 9/10/2019. The date is 9/10/2019. पॉलिसी की डेट डाल दीजिएगा 9/10/2019. चलिए. Thank you. Much obliged. May I please submit? बताइए. Alright, in this case, several order of this honorable division which are हो गया. आपने बीच में चेंज नहीं करना. हो गया. Serial number 32. in my presence में हाँ इनका प्रेजेंस डाल दीजिएगा. श्री SP मिश्रा विद श्री फागुन यादव. Serial number 32. Lord, I am requesting for pass over.
500 बहुत मुश्किल है, इतने मैटर लगते हैं, बाद में करिएगा आप। देखिएगा श्री, शुभ नाम बताइए। उज्जवल वैद्य में लॉर्ड। उज्जवल वैद्य। पूरा शुभ नाम लिखिएगा साफ का। केस इज एडजॉर्न्ड, लिस्ट आफ्टर एंसुइंग समर वेकेशन। चलिए सीरियल नंबर 33 श्री नीरज कुमार सोनी 43.13 रंजन बनर्जी डिफॉल्ट क्योर करिए पहले। कर दिया बताइए। कल कर दिया था यार। अच्छा ठीक है, बताइए क्या है। ये हमारे पास क्यों आई। सर इसमें पहले आपसे डिसाइड हुआ है कुछ केसेस। अच्छा चलिए, क्या मैटर है बताइए। मतलब in this case what had happened is that one person was injured, so he was taken to hospital and there his dying declaration was recorded. This dying declaration is at page 55 your honor. 55 your honor. 55 पढ़िए। ये है कथनकर्ता का नाम समर सन ऑफ मोहम्मद रफीक, उम्र 19 वर्ष, निवासी जो भी है, बयान देने की। और ये 6:01 पर कर रही है। क्या हुआ था, मेरा नाम मोहम्मद समर है, मैं आटा लेने जा रहा था। आज शाम 5:30 पर मेरे सामने से 3 मोटरसाइकिल 6-7 लोग थे, बंदूक बीच में एक लड़का रखे था। मैं भी आटा ले रहा था और ऊपर वो गोली चला रहे थे। तब मैं वहां से भागा और पीछे पीठ में छर्रा मुझे लगा। किसी को जानते हो उनमें से? हाँ, मोनू खान, बाटी महाजन, अंशुल साहू निवासी दांतन होटल छतरपुर, तीनों फेसबुक दोस्त हैं, पर्सनली जानता हूँ। गोली किसने चलाई है? मैं डर के मारे भाग रहा था, पीछे से गोली मारी है इन तीनों में से ही किसी ने। तुम्हें मारने क्यों आए मुझे नहीं पता। हाँ, बस स्टैंड पर खिलौने की दुकान है, वहीं चलता हूँ, समर निवासी। ये 6:01 पे इनने रिकॉर्ड की। उससे पहले जो है थाना प्रभारी को, तहसीलदार को जो दिया थाना प्रभारी ने, वो दिया 5:50 पे। इसके ठीक पीछे पेज 54 पे। ठीक है फिर। और पेज 52 पे वो दस्तावेज है जिसमें पुलिस चौकी के इसमें ये जो है सूचित किया जाता है। इसको जो है हॉस्पिटल वाले सूचित करते हैं। इसको ब्रॉड बाय मोहम्मद सीकू लाया गया है। जी सीकू। हाँ, मोहम्मद सीकू लेके आए। नॉट चीकू जी। ये मैंने चेक किया, ये मोहम्मद सीकू कहीं पर भी जो है लिस्ट ऑफ विटनेस में विटनेस नहीं है इनका जी। लेकिन इन्होंने पूरा इंटरपोलेट करके, योर ऑनर देखेंगे पेज 50 पर एक देहाती नालसी लिख ली जी। और उस देहाती नालसी में टोटली डिफरेंट स्टोरी है। पेज 50 पे अगर ये लॉर्डशिप देखेंगे, पढ़िए। जो स्थान जिला अस्पताल छतरपुर, दिनांक समय सूचना 20/11/21 और ये 18:05 था या 29 16:45 लिखा तो है। 16:45 दिनांक समय घटना। इसको 17 किया। हाँ 17 कर दिया। सर अगर देखेंगे दिनांक समय सूचना पहला लाइन 20/11/21 को सूचना 17 ये तो घटना का समय सर, घटना का समय 16:45 बता रहे हैं। है वो ऊपर दिनांक समय सूचना जो है सर 20/11/05 को 17:35 कर दिया है। जी नहीं, 16 को नहीं 18 को किया उसमें। हाँ सॉरी 18/05 को 17:35 किया है। जी हाँ, ताकि ये लगे कि ये दस्तावेज पहले बनाया। हाँ ठीक है। और ये दस्तावेज में जो है ये एक अलग कहानी है। हाँ, क्या लिखा है इसमें? मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ, खिलौनी की दुकान करता हूँ। आज दिनांक 20/11/2021 को दिन के करीब 4:45 की बात है। मैं अपने घर से आटा चक्की पर गेहूं पिसाने जा रहा था। तभी मेरे घर के पीछे मंदिर के पास पहुंचने पर मोनू खान और भैया काटर स्कूटी लेकर आ गए और मुझे माँ फिर गंदी गाली। मोनू का स्कूटी चला रहा था और भैया काटर पीछे बैठा। मैंने उन लोगों को गाली देने से मना किया, वे लोग नहीं माने। तभी एक स्कूटी से परवेज और सोनू स्टॉप आए। नाम सोनू स्टॉप इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट। सोनू स्टॉप जी, ये प्रेजेंट एप्लीकेंट है। अच्छा, शहजाद खान। एलियास सोनू स्टॉप। अच्छा, स्टॉप आए, तीनों लोगों थे और भैया काटर बड़ी बंदूक लिए था। वे
वे लोग भी मुझे माँ बहन की गंदी गालियां दे रहे थे। मैंने मना किया, लोगों को गाली दी तो वे लोग मुझे जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध गोली चलाने लगे। गोली दीवार में लगी, किसी की हवा से निकल गई। तभी मोनू खान के द्वारा चलाई गई गोली मेरी कमर की तरफ लगी, मैं जमीन पर गिर गया। उसी समय बॉबी महाजन और अंशुल साहू मोटरसाइकिल से लेकर आए और बोले फिर वो गाली है। बचने न पाए, उन्होंने अपने अपने 2 कट्टे से मुझे जान से मारने की नीयत से फायर किया। मैं चिल्लाया तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरा भाई सत्तार निकला चला और शफीक मिस्त्री आ गए तो सभी लोग मुझे मरा समझकर भाग गए। फिर मेरा भाई पापा मुझे इलाज के लिए लाए, इलाज चल रहा है, मैं सो रिपोर्ट करता हूँ। और वहां जो है वो उसको मोहम्मद सीकू लेके आया है, यहाँ कह रहा है कि मेरा ब्रदर लेके आया। मोहम्मद सीकू इनका भाई हो? नहीं है, मोहम्मद सीकू एविडेंस वही नहीं है, विटनेस ही नहीं है जी जी इनके चार्जशीट में। ठीक। अब ट्रायल भी और हमसे एक जो है 0.32 का कट्टा जब्त किया। हाँ। और विटनेसेस सीजर विटनेस हॉस्टाइल है। हमारे ऊपर कोई एलिगेशन ये नहीं है कि हमने गोली नहीं। अरे आपका इतिहास क्या है? वो हमने लगाया सर, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। तो हमने जो हमारे ऊपर जो 16 मुकदमे हैं, 16 मेरे पास 16 की आपके लिस्ट पास है। 16 की लिस्ट है, ठीक है। मेरे पास 16 की एग्जामिन लिस्ट हो गया, ये इंजर्ड एग्जामिन हो गया कोर्ट में? हाँ, हॉस्टाइल हो वो तो हॉस्टाइल हो गया, Hostile हो गया, हॉस्टाइल हो गया। सभी लोग hostile। सभी लोग करना क्या है? And bail application other co-accused malords were directed to renew prayer after statement of the जो उसके सामने उसका स्टेटमेंट हुआ था, मृत्यु डीडी हुई थी, उसके एग्जामिनेशन के बाद आए। Kindly see order dated 25 जुलाई 22। My lord, I have filed all the copy of evidence. The complainant and other eyewitnesses, they have all turned out. नहीं, ये जो बता रहे हैं वकील साहब, कौन सा? तहसीलदार का सर, तहसीलदार का तहसीलदार भी हो चुका है। कहाँ है बता दीजिए। PW8 my lord, PW8 हमारे एप्लीकेशन में। PW8 रवि उपाध्याय जी, ये तो सब इंस्पेक्टर हैं। नहीं मेरा एप्लीकेशन my lord 45705। अरे PW8 तो एक ही रहेगा। आई एम सॉरी, PW ये है 10। हाँ 10। हमारे एप्लीकेशन के पेज 46 पे। हाँ तहसीलदार इतना है, हो चुका है। लिखिएगा। देखिएगा। This bail application is filed on behalf of the applicant Shahzad Khan, son alias Sonu Stock, son of Rasool Khan, under section 439 CRPC. Case crime number 723/21, Police Station Kotwali, District Chhatarpur, under section 294, 307, 34 IPC and 25-27 of the Arms Act. Applicant is in custody since 30/12/2021. They submitted that Tehsildar, victim, all have been examined and victim has turned hostile. He has not supported prosecution story. Therefore, it is prayed that looking to the period of custody, applicant be given benefit of bail. Next, Shri Shiv Kumar Shrivastava, learned government advocate, submits that there is a criminal history of 18 cases against the present applicant. However, Shri Bagrecha submits that कितने केस में एक्विटल हो गया आपका? सर 15 का लगाया है मैंने। 15 में एक्विटल हो गया? हाँ, खत्म हो गए 15। एक्विटल हो गया? एक्विटल है, कुछ में राजीनामे हैं, कुछ में राजीनामे। और out of 15 cases have either been compromised or applicant has secured acquittal, copies of which are enclosed Annexure P4 as Annexure P4 collectively. Next, taking these facts into consideration, period of custody कितने का वहाँ total? And only 10 witnesses have been examined. Trial is going to take time. Complainant victim is himself hostile. 1 lakh 2 sureties. I am for Anshul Sahu। अंशुल साहू में भी सेम के इनके कितना अपराध है अंशुल साहू का? 5 2 में एक्विटल हो चुके हैं। 2 इसमें 2 का एक्विटल लिखिएगा, ठीक है ना? 1 lakh 2 sureties। नंबर 34 तिवारी केल झा जिस नीलम गोयल
Total 24 witnesses, sir. 24. Total 20. Just take लेना पड़ेगा. Only 10 have been examined till now. जी. Annexure P2, P6 and P11. These are the three orders which are under challenge. P2, P6 and P11. P11. जी. What happens, my lord? Initially, my lord, the respond number. एक बात पूछें श्रीवास्तव साहब आपसे. जी. अभी 40 मिनट में कंक्लूड कर देंगे, नहीं तो इसको लंच के बाद पहला केस उठाते 2:15 बजे. आपकी नहीं, मुझे कन्वीनियंस मैं सिर्फ टाइम में, इससे क्या कंटिन्यूटी रहेगी एक बार में, इसलिए बोल रहा हूँ 40 मिनट्स में खत्म करते हैं आप दोनों लोग, तो इसको अभी कर लीजिए, और नहीं तो लंच के बाद 2:15 बजे से शुरू करिए, देन यू कैन गो अप टू 4:30. उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी. हाँ ठीक है. नहीं सभी पक्षकारों की ओर देख के. क्या बोलते सब 40 मिनट्स में हो जाएगा. मेरे हिसाब से तो ज्यादा बड़ा. ठीक है, हो जाएगा तो करिए. कैरी ऑन. बड़ा शॉर्ट 16/7/2010 a PIL is filed by respondent. 16/7/2010. Respondent number 3 filed a writ petition, that is was PIL 8094. 1 second. By R3 8094 of 2010. जी. In which, my lord, he made some allegations with regard to mismanagement of the trust, my lord. This trust. जी. That petition was dismissed, my lord, disposed of in right. Giving him liberty to, my lord, avail his remedy under section 26 of the MP Public Trust Act. जी. Now, availing that remedy, my lord, he filed an application under section 26 before the respondent number 1, my lord, who is the, my lord, subdivisional. आपने पिछली बार बताया था कि वो रजिस्ट्रार विल इंक्लूड वन, वही कैसे चाहिए? वही विल इंक्लूड. एक्चुअली उसमें एक और जजमेंट मेरे को मिल ही गया जी कि सिर्फ एक ही रजिस्ट्रार हो सकता है. अच्छा, वही इशू है ना इसमें. वही इशू. हाँ. कैन दी रजिस्ट्रार अपॉइंट मतलब delegate the authority in favor of more than one person. एक तो ये है, दूसरा कि whether he can delegate the authority by virtue of distribution memo. जी. उसमें भी जजमेंट है. और तीसरा क्वेश्चन ये था कि registrar makes a reference. Then can the third party can intervene, my lord, and the court can exercise jurisdiction on the basis of third party's application. उसमें भी है judgment है, direct judgment है. No, it is registrar's reference. The jurisdiction can be exercised only on a reference made by the registrar, and third party cannot intervene. तो यहाँ क्या किया, रेफरेंस थर्ड पार्टी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? मैडम कर रही हैं, आप कर रही हैं? I'm the Micus, my lord had appointed. अच्छा हाँ, ये साइड अपॉइंटेड यू है माइकल. वो पिछली बार ये उठा था क्वेश्चन कि थर्ड पार्टी के लिए कोई अपियर नहीं हो रहा है. हाँ. नहीं ठीक है, यू आर रेडी ना? जी. मैडम आप किसके लिए? R3 के लिए? For the intervener, Lordship. आप खुद भी इंटरवीनर हैं? I am the intervener. जी. तीन ही इश्यूज को डील करते हैं ना? बस यही 3 इश्यूज है, तीनों पे जजमेंट है. एक जो मैं लास्ट टाइम मेरे को लग रहा था कि जजमेंट नहीं करके कैन देयर बी मोर देन वन रजिस्ट्रार, उसमें भी मिल गया. कैन देयर बी मोर देन वन रजिस्ट्रार. दूसरा ये पावर कैन बी डेलीगेटेड by way of distribution memo. Be delegated by the registrar by way of distribution memo. Third, whether in a reference
and a reference made by the registrar. A third party can intervene. And jurisdiction can be excised. A third party can intervene and jurisdiction be exercised At the behest of a third party. at the behest of the third party. जी 9/5/2011 का जो ऑर्डर है जी एनेक्शर पी पेज 24 जी So lordship comes to page 26. जी 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 There is a reference made by the SDO. जी लास्ट लाइन देखेंगे प्लीज मैं इसके मेरिट पे ज्यादा नहीं जाता क्योंकि जुरिडिक्शन का ही सवाल है आगे जी उससे तो फिर टाइम लग जाएगा तो लास्ट पैराग्राफ देखेंगे अतः मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा एक सेकंड लेट मी पेजिंग गड़बड़ है इसमें पेज 26 पे पेजिंग की गड़बड़ से एक्चुअली बैक साइड इस पेज पे पेज नंबर्स दिस पेजेस पर पेजिंग नंबर इसमें नहीं है ना अतः कहाँ लिखा है भाई तहसीलदार की जांच प्रतिवेदन पेज 26 पे मैं ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहा था लास्ट 2 लाइंस लॉर्डशिप द बॉटम अतएव लोक न्यास प्रकरण दिस इज द डब्ल्यूपी नंबर 15486 15486 हाँ 15486 पेज 26 पे पेजिंग गड़बड़ है मैं इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ ये ऑर्डर है 9/5/11 का ठीक है इसका इंटरनल पेज 234 क्या बता रहे हैं वो बताइए आप 5th page. Internal page 5 is operative. इंटरनल पेज 5 लास्ट पेज उसका जिसमें आवेदक द्वारा कथित महंत गोविंद दास के विरुद्ध उसके बाद लास्ट उसके बाद जी लास्ट में हाँ अतएव अतएव मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम की धारा 26(2) के तहत प्रकरण समुचित निर्देशात अपर जिला न्यायाधीश महोदय गार्डन द्वारा को सादर पेश है जी सेक्शन अगर आप देखेंगे जी 26(2) 26 ये 2 स्टेप में है एक्चुअली जी सेक्शन 26 जी If the registrar on the application of any person interested in the public trust otherwise is satisfied that the original object, these are the grounds, जी then C, the direction of the court is necessary for the administration of the public trust. So these are the conclusions. What is required to do? He may, after giving the working trustee an opportunity to be heard, जी direct, kindly underline this, such trustee to apply to court first. जी है ना? So first he has to make a direction to the trustee that you go before the district judge and make a reference. जी Then subsection 2 what it says, if the trustee so directed fails to make, जी so there is also a power to make a reference by the registrar also, जी but that is dependent upon the failure. अब मतलब it is subsection 2 is dependent on the contingency provided under subsection 1 clause C Clause C, जी that there is a direction to the trustee to make a reference, जी and if he fails, जी then only subsection 2 will come into play and the registrar will exercise this jurisdiction of making a reference to the registrar. जी
पसीना क्यों आ रहा है? So I have read out to your Lordship, my Lord. Here he doesn't make a direction to the trustee to make a reference, but directly, my Lord, he jumps to, my Lord, subsection 2. Yes. So one, my Lord, fault of jurisdiction here. जी. He could not have excised jurisdiction under subsection 2, my Lord, unless and until there is a failure by the नहीं, ये trustee. तो सब्सिडरी इशू हो गया. जब आपका पहला इशू अगर सक्सीड कर जाएगा कि रजिस्ट्रार कैन नॉट डेलीगेट द अथॉरिटी on the basis of a distribution memo, then all these things will become secondary. बिल्कुल सही. मैं उसी से चलता हूँ. नहीं, मतलब ऐसा मेरा सोचना है. तो ये तो एडमिटेड पोजीशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है कि ये बिल्कुल सही है. एवरीथिंग विल गो. एवरीथिंग विल गो. तो ये एडमिटेड पोजीशन है कि ही हैज एक्साइज द पावर अंडर ए डिस्ट्रीब्यूशन में. वो दिखा दीजिए. Then when the reference is made, we made an application before the district judge that the reference itself is without jurisdiction because it is not based upon the distribution memo and that issue is decided. क्या कहा डिस्ट्रिक्ट जज महोदय ने? उन्होंने कहा नहीं हो सकता करके. It can be done. A reference can be made even on delegation of authority on a distribution memo. Page number. Page 32 is not our application. And our objection is turned down, my lord, page 74 to 77. 74 to 77. जो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो की कॉपी है ये. अच्छा, पेजिंग. प्रथम अपर जिला न्यायाधीश क्या कहा इन्होंने? अगर पेज 76 से देखेंगे तो फाइंडिंग. हाँ, क्या पढ़िए है ना. He quotes my lord section 34, delegation of power by registrar. Page 70, your lordship got, my lord, page 76. रेफरेंस न्यायालय में प्रस्तुत करने वाले अनुभागीय अधिकारी हैं और उनके द्वारा ही उक्त रेफरेंस पंजीयक लोक न्यास के हैसियत से प्रस्तुत किया गया है. जिलाधीश अपने अधीनस्थ अनुभागीय अधिकारी को धारा 34A के तहत पंजीयक के अधिकार प्रत्यायोजित कर सकता है. जी. उक्त वर्णित न्यायाधीशान में जो विधिमान सिद्धांत प्रतिपादित है वो डिप्टी कमिश्नर को पंजीयक के अधिकार दिए गए जाने के संबंध में है. श्री सुग्रे के जो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर होकर पर्सनल असिस्टेंट कलेक्टर के थे, एक्सेट असिस्टेंट कमिश्नर अनुभागीय अधिकारी से नीचे रैंक का अधिकारी माने गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने विधिमान सिद्धांत प्रतिपादित किया कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर के अधिकार प्रत्यायोजित करने के संबंध जो उक्त आदेश जो जिलाधीश द्वारा दिया गया था वह नलिटी था. लेकिन इस प्रकरण की परिस्थितियां भिन्न है क्योंकि कार्य विभाजन आदेश के तहत जिलाधीश द्वारा अनुभागीय अधिकारी राजस्व को पंजीयक की शक्ति अनुप्रदान की धारा 34A उक्त अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि अनुभागीय अधिकारी रैंक के अधिकारी को पंजीयक की शक्ति प्रदान की जा सकती है. क्योंकि शिवराज सिंह द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश पश्चात धारा 26 के तहत पंजीयक लोक न्यास अनुभागीय अधिकारी गार्डरवारा के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया था. उक्त आवेदन के विचारण का क्षेत्राधिकार उन्हें नहीं था ऐसा पंजीयक लोक न्यास के समक्ष नहीं दर्शाया है. इस संबंध में अनावेदक महंत गोविंद दास के अधिवक्ता स्वर्ण सो का अवलंबन लेते हुए यह भी बताया गया है कि क्षेत्राधिकार का प्रश्न विधि का प्रश्न है जिसे किसी भी समय हायर फोरम पर उठाया जा सकता है. यह सही है कि विधि का प्रश्न वरिष्ठ न्यायालय में उठाया जा सकता है, लेकिन यह प्रकरण की जो परिस्थिति है उसको देखते हुए I have understood. He has not answered the legal issue that a legal point can be raised at any point of time, even in appeal. ठीक है, this is one another issue. अब तो आप मुझे वो डिस्ट्रीब्यूशन मेमो वाला जजमेंट बताइए. This is 1972 MPLJ. Page is 206. 1972 MPLJ. Page 206. 206. And relevant is paragraph 8.
Here they have discussed what is the distinction between the distribution memo and the order also. ये पैराग्राफ 8 पढ़िए प्लीज. At page 210. जी. Lordship got it? While interpreting a provision like section 34A, it must be borne in mind that statutory powers cannot be assigned without statutory authority to do so. It must therefore bear a strict construction. Now that section speaks of an order in writing by the Registrar of Public Trust delegating all or any of his powers and duties under the Act. The words used obviously contemplate the making of a separate order in writing by the registrar after due application of his mind, and not a mere administrative direction in the nature of a distribution memo issued by a deputy commissioner, now the collector, for allocation of revenue work within his district. There is a distinction between an order of delegation of certain statutory functions and the administrative power of allocating business to particular officer. Even assuming that a delegation of power under section 34A is an administrative function, nevertheless such delegation could not be achieved by the issue of a distribution memo for a variety of reasons. ठीक है. Yes. ये डिस्टिंक्शन इन्होंने कहा था कि भाई ये है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन मेमो में everybody has jurisdiction and it is only distribution of work. But here you are conferring a jurisdiction to a person who doesn't have jurisdiction by way of delegation. There is a recent judgment also, my lord, relying on these judgments by Gwalior bench dated 12th of July 2022. And in fact, the court has noted, my lord, that despite the law laid down so back, still the same procedure is being followed. They have quoted, my lord, another judgment, Kundi Devi also, which is unrecorded. In fact, the cost was imposed in this case, my lord. ठीक है, that is. चलिए दूसरा इशू. वो पहला इशू तो कैन देयर बी मोर देन वन रजिस्ट्रार, वो तो अब इससे सेटल हो जाएगा कि भाई देयर कैन बी मोर देन वन रजिस्ट्रार, बट दैट पावर इज टू बी डेलीगेटेड, अथॉरिटी इज टू बी डेलीगेटेड थ्रू अ स्पीकिंग ऑर्डर ऑफ डेलीगेशन रादर देन थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूशन मेमो. ये पहले दो इश्यूज तो हो गए. अब आपका थर्ड इशू बना ये जो रहा है ना कि देयर कांट बी मोर देन वन रजिस्ट्रार. अब वो तो फिर इसी जजमेंट के आपके 72 के जजमेंट में वो ये नहीं कह रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी मोर देन वन रजिस्ट्रार. वो तो इशू नहीं था वहां पे. अच्छा चलिए फिर कहाँ कहा उन्होंने? वो तो इशू नहीं था. एक्चुअली आप सेक्शन देखेंगे तो सेक्शन ये बोलता है कि देयर विल बी रजिस्ट्रार फॉर द डिस्ट्रिक्ट. 34A को साथ में पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा मेरे ख्याल से. उसको भी पढ़ेंगे तो भी क्लियर होगा कि नॉट इट डजंट से दैट एज मेनी एज पीपल. और 34A भी अगर आप देखेंगे, subject to provisions of this act and to such restrictions and conditions as may be prescribed, the registrar, so this is singular, may by order in writing delegate all or any of his powers and duties under this act to any, it says any revenue officer. It doesn't say as many. A revenue officer of his district. Officer of his district. So again it is singular. और इसको एक्चुअली पढ़ना पड़ेगा जो रजिस्ट्रार का जो प्रोविजन है वो उसके साथ. सेक्शन 3 पढ़े. The collector shall be registrar of public trust in respect of every public trust. Every public trust, the principal office or principal place of business of which, as declared in the application made under section 3 of section 4, is situated in his district. तो एक ही पर्सन है वो. So everywhere it is singular. 34 also is a language is in singular. सेक्शन 2 में रजिस्ट्रार डिफाइंड है क्या? Six. Section 2 means registrar of public trust.
रजिस्ट्रार तो यही है हाँ ठीक है, सेक्रेटरी में। हाँ ठीक, 2 में भी है, 2(6) में डिफाइंड है। चलिए जी, 2(6) में जो है वो रजिस्टर है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार है मीन्स द रजिस्ट्रार ऑफ द पर्सन। जी, 2(5) में है रजिस्टर जी, ठीक इट इज ऑल सिंगुलर। जी। और एक जजमेंट है डिवीजन बेंच के यहाँ 1989 MPLJ 1989 MPLJ पेज 840 840 जी, there can be only one registrar for a public trust. पैराग्राफ 11, 12 and 13। जी, पैराग्राफ 11 में तो ये था कि ऑब्जेक्शन बाद में आया तो बोले नो इट गोज टू द रूट ऑफ द मैटर देयरफॉर कैन बी कंसीडर्ड। पैराग्राफ 12 and 13 आता है at page 843 जी, paragraph 12 it is essential to examine the scheme of the act. Section 2(4) of the act defines public trust. Section 3 declares the collector to be the registrar of public trust. In respect of every public trust, the principal office of the principal place of business of which situated in the district, on receipt of an application, the registrar has to make an inquiry under subsection 5 and the record a finding whether the trust is a public trust. पैरा 13 में कह दिया there can be only one registrar in for a paragraph public 13. trust. जी, ठीक है From the foregoing caution, it is clear that there can be only one registrar for a public trust. जी, ठीक है। Yes, a third issue, whether a reference made by the registrar in a reference made by the third party can intervene. This is 1977 MPLJ 1977 MPLJ short note 35. फैक्ट्स में इतना बार क्लैरिफाई कर दूं कि रेफरेंस तो किया था एसडीओ ने, लेकिन एप्लीकेशन जो इंटरटेन करके ऑर्डर्स वगैरह जो किए, जुडिक्शन एक्सरसाइज किया, वो रिस्पॉन्ड नंबर 3 के एप्लीकेशन। शॉर्ट नोट 35 at page 21. जी, right to move court under section 26. The registrar Under himself section or under 26 his of the direction, Madhya Pradesh Public Trust, a the third working person trustee can has to no make doubt an move the application. registrar No and third satisfy person. him that the original object of the trust has failed, or that the property of the trust was being mismanaged, or the direction of the court were necessary for the administration of the trust. But after the registrar is satisfied on any of these points, the applicant's intervention is no longer required. The registrar is then supposed to act under the first part of section 26 or second part of 26, ये जो मैंने पहले आर्गू किया था, by requiring the working trustee to apply to the court for direction, or upon his failure to make a reference himself, if it was considered expedient. A distinction has to be borne in mind between section 92 of the Code of Civil Procedure and section 26 of the MP Public Trust Act. Under section 92 of the Code of Civil Procedure, the Advocate General or his permission, with his permission, any two or more persons having interest in the trust may institute the suit. Whereas under section 26 of the MP Public Trust Act, the registrar himself or under his direction, the working trustee has to make an application for direction of the court. No third person, even upon authorization by the registrar, can institute any proceeding or intervene. The idea is that the trustee should not be harassed by vexatious and multifarious proceedings by third person, and that it should be the sole responsibility of the registrar to see that the trust was properly managed. Then turning to the next point on the next page, the reference that the registrar makes and directs to be made under section 26 is the plaint which the district judge proceeds. His jurisdiction is invoked only by either of the two modes prescribed by the section 26. It follows that no third person has locus standi to intervene
as an applicant before the district judge, and the district judge has to confine his inquiry only to those allegations as the reference order of the registrar contains. If anyone desires the scope of inquiry to be enlarged on the fact so later, or of which the registrar has not taken notice of, he has to move the registrar over again under section 26 for making the further reference. Now here, my lord, the registrar made the reference. That reference is, my lord, line. In that, my lord, an application is filed by that petitioner who filed PIL. Yes. And it all the proceedings, my lord, the orders, my lord, appointing receivers, etc. is passed, my lord, on his application. These are the 3 points. Yes. Madam, आप पहले की पहले. Now, the first point regarding section 34A, delegation of power by registrar, and the point of work distribution memo. If the provision may be read, subject to the provisions of this act and to such restrictions and conditions as may be prescribed, the registrar may by order in writing delegate all or any of his powers and duties under this act to any revenue officer of his district not below the rank of a sub-divisional officer. Now, the judgment referred of the year 1972 MPLJ, it states that a blanket distribution memo cannot be considered to be delegation of power by the registrar. In our case, my lord, the distribution memo will kindly be seen. That's on page number 68. Number 4 is the name of the person who's being delegated. Subpoint 3. There are 3 distribution memos annexed, my lord. I'm referring to the latest one, 2012. मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास पेज नंबर 4 बोल रहे हैं ना. 68, my lord. Annexure 68, yes. P10. ये राजीव श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर. My lord. He has been delegated with the powers of the registrar for Anuvibhag Narsinghpur. And number 3 says मध्य प्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा 34 के तहत पंजीयक लोक न्यास नरसिंहपुर अनुविभाग. Now, with reference to this, I'm referring to a recent judgment of this court, 2022 1 MPLJ. Just a minute, just. (615). 2022 MPLJ. 1 MPLJ, page 615. The operative part is on page number 620. So it says, my lord, it refers to section 34A, and it is discussed as per the aforesaid provision. It is clear that the collector can delegate powers of registrar to its subordinate officers not below the rank of the STO, but there should be an order in writing delegating powers of registrar under section 34A of the Act in favor of any revenue officer. So I distinguish this case, my lord, with our case, wherein there is specifically mentioned that the power has been delegated under section 34 of the Act. So this will come under the purview of an order in writing by the collector, my lord. The second point regarding the number of registrars, my lord, that stands modified by section 34A, which specifically says that the registrar, the collector, can delegate his powers. So, my lord, this is implied if he is delegating any of his powers, there would be 2 or more registrars in the district, my lord. So that definition of registrar in section 2 clause 6 stand modified by 34A, because if he is delegating part of his powers, it would be implied that there would be 2 registrars in the said district. Okay. Third point regarding authority है आपके पास इसके ऊपर? No, on this point, my lord. No, this is on a bare reading of the statute, my lord. I'm not equipped with any authority on the point. The third point regarding third party intervention, if section 26 may kindly be seen. So in this case also, the application was made by respondent number 3, after which by order next to P2 the case was referred to the district judge. It says if the registrar on the application of any person interested in the public trust or otherwise is satisfied that the original object of the public trust has failed, the trust property is not being properly managed or administered, the action of the court is necessary for the administration of the public trust. So my lord, herein the complainant can be a person who is interested in the public trust. Now here it's a Hindu public trust and respondent number 3 is a Hindu. So he would be considered to be a party interested in the working of the trust. Thereafter, the case has been referred by the collector, by the registrar,
to the district judge, my lord. So that comes within the purview of section 26, and the proceedings are being undertaken as per the provision of the MP Public Trust on the Act. application or otherwise is satisfied. And as per the judgment referred to by learned series of 1989 MPLJ, it specifically states that the registrar, on being satisfied by either of the two conditions, section 26, can refer the matter to the district judge. इसको पढ़िएगा जरा फिर से 26 को पढ़िएगा. My lord. Complainant may be anybody who is interested in the functioning of the trust. No. This is my understanding. If the registrar on the application of any person interested in the public trust or otherwise is satisfied, that is on his own satisfaction or on a complaint made by somebody interested in the affairs of the trust, is satisfied that the original object of the public trust has failed. This is one of the contingency. Second is that the trust property is not being properly managed or administered, or the direction of the court is necessary for the administration of the public trust. He may, after giving the working trustee an opportunity to be heard, direct such trustee to apply to court for direction within the time specified by the registrar. So now who can apply to the court? It is the trustee, not anybody else. You know, the word may has to be interpreted accordingly. If the registrar is himself convinced that either of the three contingencies are being satisfied, he can refer the case to the district judge. I'm referring to this judgment. It's 1986 1 MP Weekly Note, page number 156. Satish Chand versus Registrar of Public Trust. In the said case, my lord, the principle short laid down is if the registrar is convinced that either of the three contingencies and the public trust property is not being managed properly, he can refer the case to the district judge, and that would be well within his jurisdiction to do so. Anything else? 26 also says if the registrar considers it expedient, he shall himself make an application to the court. No, that is true. Whether a third party can intervene and appear before the court or not, that is the issue. Now the party, the third party has already made an application. It has made an application. Registrar has heard him. Registrar was duty bound to hear the opposite side, that is the trustees of the trust. He gives an opportunity to the trustees and thereafter comes to an opinion that there is something which requires reference to the court. He makes a reference. Now, whether this person, that is third party, becomes a functions officio after bringing that matter to the notice of the registrar, or he will still have a locus before the court. Because when we see this judgment of High Court, then it appears that that person has no locus to intervene in before the court. Yes, sir. After that. So to that extent, the appointment of receiver application which has been allowed of the third party, that may have to be set aside. But with respect to the other two orders being challenged by the petitioner regarding annexure P2 and P6, that is the certified copy of the inquiry conducted by the registrar and the rejection of the application. If two questions are answered in affirmative, that there can be more than one person exercising the authority of registrar under the delegated legislation. Two, registrar
delegation through a memo of distribution is a valid order, No. then the question will arise whether in a reference made by the registrar a third party can intervene or not. If the first two questions are answered in affirmative, then there is no need to deal with the third question. But the first 2 points are distinct from the third point, my lord. Because first, to deal with the power of the registrar, the intervention of third party would be a issue all separate. And also, my lord, concluding my arguments on the maintainability of the petition, as per the MP High Court rules, Chapter 10, Clause 7, there is a specific provision for filing separate petitions for distinct subject matter. It's Chapter 10, Clause 7 Chapter 10, Clause 7 of the MP High Court rules. It says that for particular order, only one petition can be filed. If we see the body of the petition, there are 3 orders being challenged in the said petition: Annexure P2, P6, and P11. So now that's just a technical objection raised. देंगे आंसर देंगे श्रीवास्तव साहब, ठीक है, it is good. कब amendment? This is by way of amendment. हाँ तो कब से आया देखते हैं ना, 10 लीजिए Chapter 10, Clause 7. ये तो 2008 के रूल में ही है, आपकी पिटीशन 2013 की है। तो था कि ऑब्जेक्शन होता तो हम करते हैं, बट इज द कोर्ट पावरलेस, मतलब एक सेकंड। अरे ये तो ठीक है, she has raised a good point. It is a good point, लेकिन ये कि रूल जो है ना 226, 227 को कभी ओवरराइड नहीं करेंगे। रूल्स के बारे में तो बहुत सारे रिजर्वेशन हमारे हैं, कहाँ तक उसको बहस करेंगे। ये तो आपको भी समझ में आ जाएगा, where the power is conferred by the constitution, can you take away that power, है ना, by framing a rule which is under article 2? तो रूल्स ऑफ बिजनेस है, रूल्स ऑफ बिजनेस है, आर्टिकल 162 में एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, बट इट इज सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ बिजनेस। नहीं, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है ना, दैट इज रूल्स ऑफ बिजनेस जो है, दैट डजंट टेक अवे द पावर। यहाँ तो यही हो जाएगा कि 2 कन्फ्लिक्टिंग जुरिडिक्शन है, which will prevail. मैडम बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में आप बताइए। Lordship, I am the intervener, Lordship. The एक चीज पर मैं 2 मिनट में पर क्लैरिफाई करूँ। आप जो जजमेंट बता रही हैं सानी, क्या बोल रहे हैं जजमेंट? 2022 का। हाँ, जजमेंट जो बोलता है, इट इज अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द रजिस्ट्रार, ही विल मेक अ रेफरेंस आफ्टर सेटिस्फेक्शन, तो ये तो होगा ही होगा ना। वन थिंग इज टू हैव सेटिस्फेक्शन ऑन द कंप्लेंट एंड इंक्वायरी, but once he records his satisfaction, he comes to a conclusion, a reference is made, is required to be made, then it is the next step how to be made. This is judgment with regard to once he is satisfied, then he can make a reference. ठीक है, वो तो उसमें तो प्रोविजन को तो गड़बड़ी है ही नहीं ना। But once after his satisfaction, what is the procedure? मैडम कितना मिनट लेंगी आप? only 5-10 minutes. Lord. 5 लंच के बाद, लंच के बाद 1:30 हो गया, लंच के बाद कंटिन्यू करते हैं। My lord, there is a matter of request. I am seeking permission to file the response in it. 134. It is in the request list. I am for the respondent. कर दीजिएगा, परमिशन दे दीजिएगा। Obliged, my lord.
जी नमूने से मिश्रित पुरुष क्रोमोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, जिसके प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त एलिस प्रकरण में प्राप्त आरोपी शिवम के रक्त स्रोत नमूना प्रदेश बी के लिए गए नमूने से प्राप्त पुरुष डीएनए प्रोफाइल एसटीआर के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त एलिस उपस्थित नहीं है। दिस वाज नेगेटिव। देन प्रकरण में घटनास्थल से प्राप्त स्रोत कथड़ी प्रदेश डी के लिए गए नमूने से पुरुष वाई क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, जिसके प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त एलिस प्रकरण में प्राप्त आरोपी दुर्गेश के रक्त स्रोत रक्त नमूना प्रदेश डी के लिए गए नमूने से प्राप्त पुरुष वाई डीएनए प्रोफाइल एसटीआर प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त हुए एलिस के समान है। प्रकरण में घटनास्थल से प्राप्त स्रोत कथड़ी प्रदेश डी से लिए गए नमूने में पुरुष क्रोमोसोम एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, जिसके प्रत्येक जेनेटिक मार्कर का प्राप्त एलिस प्रकरण में प्राप्त आरोपी शिवम से स्रोत रक्त नमूना प्रदेश बी, आरोपी गुलशन से स्रोत रक्त नमूना सी तथा आरोपी अल्केश के स्रोत रक्त नमूना ई के लिए गए नमूने से प्राप्त पुरुष वाई डीएनए प्रोफाइल एसटीआर के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर प्राप्त हुए एलिस के समान नहीं है। देन योर लॉर्डशिप में काइंडली कम to the 6th page of the DNA report. आप कौन है? आप छोटू? I am छोटू alias Alkesh. तो अल्केश साहब का तो ये यहाँ आया है ना? वही मैं कह रहा हूँ, what has happened in the, as far as the vaginal swab is concerned, nothing has been found. नहीं, that is not sufficient. Now as far as the inner garment is concerned, इनर गारमेंट का पढ़िए। हाँ, इनर गारमेंट में ये कह रहे हैं जिसके अंडरवियर स्रोत इतने से लिए गए नमूने इतने जेनेटिक मार्कर पर एलिस प्रकरण में आरोपी गुलशन इतने दुर्गेश अल्केश के स्रोत इतने से प्राप्त जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त हुए एलिस में भी उपस्थित है। अब सर उसके पेज 6 पे आएंगे, उसमें देखें सर, बिकॉज आई रेड दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट थ्राइस, एब्सोल्युटली कॉन्ट्रडिक्टरी रिपोर्ट। उसमें आगे पढ़ेंगे, 4 जगह हाँ बोल रहे हैं, 4 जगह ना बोल रहे हैं। सर आई रीड फर्दर। प्रकरण में प्राप्त पीड़िता के स्रोत प्यूबिक हेयर प्रदेश बी के लिए गए नमूने में अनइंटरप्रेटेबल ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई। प्रकरण में प्राप्त पीड़िता के स्रोत वजाइनल स्लाइड के लिए गए नमूने से महिला ऑटोसोमल डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, नो मेल उसमें पाई गई। प्रकरण में प्राप्त पीड़िता के स्रोत अंडरवेयर से लिए गए नमूने से पुरुष मिश्रित ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, जिसके प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त हुए सभी एलिस जोड़े प्रकरण में प्राप्त आरोपी गुलशन के स्रोत नमूने प्रदेश सी के लिए नमूने से प्राप्त ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल के प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त हुए एलिस जोड़े भी उपस्थित हैं। तो एज फार एज ही इज कंसर्न सर, गुलशन के लिए बोला इनमें। उसके बाद प्रकरण में प्राप्त पीड़िता के स्रोत के अंडरवेयर से लिए गए नमूने से पुरुष मिश्रित ऑटोसोमल एसटीआर डीएनए प्रोफाइल प्राप्त हुई, जिसके प्रत्येक जेनेटिक मार्कर पर प्राप्त हुए सभी एलिस जोड़े प्रकरण में प्राप्त आरोपी शिवम के रक्त स्रोत समूह प्रदेश डी, आरोपी दुर्गेश के why we are wasting energy on छोटू? सर छोटू अल्केश प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसमें। अच्छा, छोटू इज अल्केश। नहीं सॉरी, शिवम पे अपन क्यों एनर्जी? हाँ, शिवम पे नहीं कर रहे सर जी। शिवम और गुलशन पे मतलब 2 बेल लगी इसमें, गुलशन और उसकी, गुलशन और छोटू की लगी। छोटू की सर गुलशन शिव गुलशन जी दोनों के बारे में है सर। वो अभी तो मैटर ऑफ एविडेंस है, जब ये आएंगे ना तब आप उनको क्रॉस एग्जामिन करिएगा सर। अभी नहीं, यहाँ इससे ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं दिखाएंगे हम जी। सर एक जस्ट लास्ट थिंग थी इसमें, जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन किया था, मलर्ड हैड हर्ड दैट। इन फैक्ट मलर्ड दैट एंटायर परेड एवरीथिंग मलर्ड वाज ऑलरेडी विशिएटेड। उससे बड़ी तो फॉरेंसिक एविडेंस है ना ये तो। सर इसमें वजाइनल उसमें कहीं नहीं किया, बस लास्ट थिंग आई विल लीव इट टू योर लॉर्डशिप आफ्टर दैट। Not in this case. नहीं, case will still be in your hands. You want to withdraw or you want order of arrest? Just one last thing. The incident took place on 24/12/21, and Malad, she brought Malad this underwear जिसका only interpretable DNA जो था, because as far as Malad the vaginal swab everything was concerned, it's absolutely negative, nothing. Only thing which has been found Malad is in the underwear. That has been brought by her to the police station on 27/12/21, और उसमें लिखा है थाना चिचोली में उपस्थित लाकर पेश करने पर। उसके पहले आपका सैंपल ले लिया गया था क्या? ब्लड सैंपल? ब्लड सैंपल या कोई भी सैंपल हमारी चार्जशीट में सर उसका वो उन्होंने बस वो आपको once you are arguing that एक सेकंड, that's a valid point, because that has been sent for DNA Malad after 3 months of the नहीं, that is different, that because is different. वो उसको प्रिजर्व ही नहीं किया है। ठीक है, एक I'll just make that statement Malad, उसका सैंपल कब लिया, that डेट जो है
एक बार डायरी में देखा ना डीएनए सैंपल का वो फॉर्म जो है जो उसमें सैंपल्स भेजे थे मैडम उसमें फॉर्म के साथ लगे हुए मैडम। ये उसके बाद के 3/1/22 को सैंपल लिए गए हैं, लगा हुआ है ये केस डायरी में 3/1/22। ठीक है, चलिए अब बताइए क्या करना है। ट्रायल विड्रॉल लिखिएगा श्री संकल्प फ्यूचर लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट Chotu alias Alkesh, when informed by learned government advocate Shri Vivek Lakhera that DNA report dated 9/12/2022 is available as furnished by Regional Forensic Science Laboratory Rao Indore, in which it is mentioned that the mixed male, that within bracket Y chromosomal STR genetic marker /alleles present in the blood sample of accused Gulshan, Durgesh and Alkesh prays for withdrawal of the bail application. Accordingly, same is dismissed as withdrawn. same with Same with 3.1 also. right. Serial number 35. Rakesh Kumar Jain, Ashok Kumar Gupta. Lordship, as per the last order by the Lordship, place this case before the appropriate bench. Lordship. वो वहां से आ गया कि यहीं सुना जाएगा। Okay. ये रिपोर्ट आ गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, चलिए बताइए। Lordship, our point is that in our Lok Adalat, we are exonerated in that case, Lordship. But compromise okay, we paid 60,000. So our contention is that कि जो order है 11/12/2021 का वो set aside किया जाए, Lordship. क्यों सर्टिफाइड किया जाए? सब हम इसमें exonerated थे, Lordship. नहीं तो आपकी कंसेंट के बगैर ये हुआ है क्या? 60,000 रुपए देने का आपने साइन किया है इसको? So there are so many cases listed at the time. So respondent number 1 and 2 suppress the fact that we are exonerated. Lordship, it was our mistake as well. तो इसमें तो रिव्यू छोड़ना लगती है, इसके लिए तो you have to challenge this order by filing a writ petition. क्या लॉ है? लोक अदालत के आदेश को हम रिव्यू कर सकते हैं क्या? लॉ क्या है? पढ़ के आइए आप। कब पढ़ के आएंगे? डेट बताइए। मैडम मेनन कुछ कह रही है। I think the writ petition has to be. Even I understand that, but yes, she has to challenge that. हाँ, आप पढ़ के नहीं अभी don't go by what madam is saying or what I think. She has to look into it. पढ़िए, प्रोविजन देखिए, फिर आइए। This is कितने आफ्टर अ वीक? विंटर वेकेशन के बाद लिखिएगा। Miss Anushri Chaurasia, learned counsel for the review petitioner, prays for time to examine whether review petition will be maintainable against the order of the Lok Adalat or a writ petition is to be filed. She prays for time to study this aspect. On her request, list this case on
11 जनवरी 2022, 10 जनवरी 2022 तो 23 चलिए 10 जनवरी 23। Serial number 36, the Mahavir Prasad Shukla. This is the by the objector. The award passed in reference by the part-time tribunal constituted under the coal bearing area education development act. My appeal is also in time barred. Therefore, I also moved an In fact, application. my lord, they have made us respondent number 1, Union of India through Northern Coalfields Limited. यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू नॉर्दर्न कोलफील्ड्स कैसे बनेगा पार्टी? Your lordship, I pleaded it as that before the learned tribunal. ट्राइब्यूनल में गलत लिखा तो हाईकोर्ट में भी गलत चलेगा क्या? अब हम वो कर देते तो हमारा केस अब अमेंडमेंट एप्लीकेशन लगा दीजिए। डिफॉल्ट में भी आया। श्री महावीर प्रसाद शुक्ला praised for time to correct cause title in the memo of appeal. He is granted 10 days time to move an appropriate application. List immediately thereafter. चलिए सर इसको नेक्स्ट भी कर देंगे। एप्लीकेशन तो लगाइए आप। तो लगा देंगे। Serial number 37, the Anvesh Srivastava. I'm praying for a withdrawal of this petition with the liberty to file a fresh one again because there's some discrepancy in the petition. What discrepancy? Because the execution had been filed. I tried to seek information with regard to that, but they did not disclose me that in time. देखिएगा श्री what's your good name? Anvesh Srivastava. हैं? Anvesh Srivastava. आप अन्वेष श्रीवास्तव हैं? Yes. तो दूसरे अन्वेष श्रीवास्तव अपीयर होते हैं। The beard is now no more. अच्छा, you're the same person. Okay. Anvesh Srivastava, learned counsel for the appellant, prays for withdrawal of this appeal and file fresh if the cause of action survives. Accordingly, appeal is dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. Great. Serial number 38, the Aditya Narayan Sharma, the Ravish Kumar. I am respondent number 1 to 4 in this appeal. I have also filed an appeal. My lord, kindly link this appeal. 5456/22. Sir, Rakshanda Khanam. Miss Rakshanda Khanam for the appellant. Shri Ravish Devaliya. Ravish Kumar Devaliya for the caveator. Shri Devaliya submits that he has filed appeal number. लिख के दे दीजिए कागज पे इतना. List this case along with appeal number इतना इतना. Record be called for. Serial number 39, the Ajay Shankar Rajada. The appeal is barred by 3 days. Issue notice on IA 15035/22 on payment of PF within 7 days with registered post. Returnable 4 weeks. Call for the record. Serial number 40, Sri ND S. Patel, Indiresh Kumar Jain. None for the appellant. Issue notice on IA 15084/22 an application seeking condonation of delay. Call for the record. Serial number 41, Sri Manoj Kumar Soni. Issue notice. Call for the record. Serial number 42, Sri Jayant Nikra. Issue notice. Call for the record. जी इसमें आईए पेंडिंग है तो कोई भी डेट दे दे सर. List in the week commencing 23 जनवरी 2023. Obliged. Serial number 43, Sri Sharad Gupta. None for the appellant. None for the petitioner. As nobody is appearing for the petitioner, case is adjourned. List after ensuing summer vacation or winter vacation. Serial number 44, Sri Sharad Verma. Same order. Serial number 45, Sri Saurabh Kumar Sharma.
Lordship, in this petition, Lordship, what has happened? The petitioner are the plaintiff in this trial court, Lordship. They filed a suit and along with the application under order 30 and rule 102. And subsequently, Lordship, what has happened in this case, Lordship, the respondents have filed the application regarding the stay in their favor, Lordship. Same has been dismissed, and they have also preferred a miscellaneous petition before this honorable court. Same has been also dismissed. In view of that, the plaintiffs have given undertaking that they are not create the third party interest. Now, 151 में कैसे मेंटेनेबल होगी एप्लीकेशन? लॉ तो क्लियर है कि जब तक जहां तक सब्सटेंटिव प्रोविजन है अगर तो फिर 151 की एप्लीकेशन लागू नहीं होगी। आपने देखा वादी की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 टीपीसी वादग्रस्त भूमि में ताला खुलवाने एवं यथास्थिति बनवाए रखने बाबत प्रस्तुत किया है, इसको रिजेक्ट किया है ट्रायल कोर्ट ने। तो बताइए 151 तो पहले इतना बता दीजिए 151 कैसे एप्लीकेबल होगा? इनहेरेंट पावर, लॉर्डशिप, अरे इनहेरेंट पावर जब होती है जबकि कोई और सब्सटेंटिव प्रोविजन ना हो, इसीलिए मैंने पढ़ा ताला खुलवाने एवं यथास्थिति बनाए रखने के लिए। आप 151 का आवेदन कैसे लगाएंगे? शर्मा जी, छोटी सी बात है, क्या करना है? इसको विड्रॉ करना है कि लिखाना है मेरिट पर? सब हमारा सर, अरे आपका तो समझ गए, आप हमारी बात का जवाब दे दीजिए ना। हैं? ठीक है। श्री सौरभ शर्मा, when confronted with the query that how an application under section 151 CPC is maintainable for maintenance of status quo in view of the substantive provision existing in CPC, raised for withdrawal of this miscellaneous petition. Same is dismissed as withdrawn. Serial number 46, Pushpendra Dubey. I'm sorry, very sorry. Channel number 44. Actual में कैप्शन चल रहा था पासवर्ड thereafter से रिक्वेस्ट at 250. ले लीजिएगा, थोड़ी देर से ले लीजिएगा, सब पासओवर में रख लीजिएगा 44 नंबर। क्या है क्या इसमें? ये छोटा सा मैटर लॉर्डशिप रेवेन्यू कोर्ट एक्सीड जुरिडिक्शन में the partition order may be passed. May be passed or has been passed. Annexure P3 the in order लॉर्डशिप repeat. ठीक है, 2004 में लॉर्डशिप ऑलरेडी पार्टीशन हो गया था प्रॉपर्टी। नोटिस टू द रिस्पोंडेंट number 1 and 2. Notice is waived by Shri Jiten Srivastava for 3 and 4. Let reply be filed within 3 weeks. List in the week commencing 16 January 2023. Meanwhile, lordship not create the third party interest. In the meanwhile, parties are directed to maintain status quo as it exists today. Serial number 46 Shri Pushpendra Dubey. फाइल की कि विथिन 3 months में जो है सूट डिसमिस हमारा सूट डिसाइड कर दिया। बस इतना सा है? यस। देखिए काय का सूट है आपका? हमने डाइवोर्स सूट फाइल किया है। डाइवोर्स? अरे भाई कितने साल की शादी है आपकी? शादी की थी हमारी 2017 में। और फिर आपने डाइवोर्स सूट कब लगाया? डाइवोर्स सूट लगाया मैं पेज नंबर 43 3/2022 को। फिर नोट इसके बाद काइंडली सी ऑर्डर शीट डेटेड 44 और 45। बताइए 44 में क्या लिखा है? इसमें नोटिस इशू किए थे ऑनरेबल। फिर इसके बाद पेज नंबर 45 में आवेदक द्वारा श्री के श्रीवास्तव नियुक्त अनावेदिक अनुपस्थित। thereafter में लोग इसमें पेज नंबर 57 पेज नंबर 47 पढ़िए। ऑर्डर शीट डेटेड 29/9/2022 आवेदक सहित औसाफ खान अधिवक्ता अनावेदक अनुपस्थित प्रकरण जवाब हेतु नियत अनावेदिकों को बार पुकार लगाएगी किंतु आवेदक उपस्थित नहीं। एक पक्षी हो गया, आप अपनी एविडेंस लीड करिए, खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो गया? सिमिलर ऑर्डर फाइल। एक सेकंड, ठीक है, उसने 9/7 की एप्लीकेशन लगा दी थी। अरे भाई नहीं
वो अपीयर हो गई, वो जवाब 9/7 पे लगा हुआ, अभी अभी कहाँ से स्टेज आ गई 3 महीने में डायरेक्शन देने की? सिमिलर केस में हम लोग ने किया है। क्या जहाँ 9/7 लगा था वहां पर भी किया है? फिर इतना तो हम भी समझते हैं भाई, अभी 9/7 लगा है, उसका अगर एक्स पार्टी सेटिस्फाइड हो जाएगा तो जो है वो जवाब दावा देगी, आपके जिनके एग्जामिनेशन इन चीफ हुए उनको क्रॉस एग्जामिन करेगी। तो अनुपस्थित होके फिर अरे 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 ऐसे एंटीसिपेशन में थोड़ा ना पिटीशन लगती है, कुछ है नहीं, जब अप्रोप्रिएट स्टेज आए तब आइएगा, ठीक है? हाँ श्री Mohammed Siddiq praised for withdrawal of this petition as it is premature and the case before the Learned Family Court is pending at the stage of decision on application under Order 9 Rule 7 CPC. ठीक, चलिए। Serial number 47. Dismissed as withdrawn. TKS Jha. My application under section 151 has been rejected by the family court. The matter pertains to section 9 of the application filed by the husband for restitution of conjugal rights. In that proceeding, an application under 151 was filed for getting the wife medically examined. क्या हो सकता है, ऐसा प्रावधान है क्या? Of that has been rejected on the ground that नहीं, प्रावधान कहाँ है बताइए? प्रावधान तो नहीं है। तो फिर क्यों पिटीशन लगाई जब आपने? हमारा उसकी प्राइवेसी वायलेट करेंगे आप, उसको मेडिकली एग्जामिन कराएंगे। अगर आपको डाइवोर्स का केस लगाना है, no, under section 9, my lord, अरे तो 9 लगाया तो उसको मेडिकल एग्जामिन कराने की क्या जरूरत है? the allegation 9 means that you are willing to cohabitate with her. Then that's the end of the matter. 9 वकील साहब लोग इसलिए लगवाते हैं जिससे कि कल को डाइवोर्स का ग्राउंड बन जाए। मतलब she also filed under section 125 that was होगा, I don't know. इशू ये है कि 151 की एप्लीकेशन मेंटेनेबल ही नहीं है। मतलब the order is at मतलब page 46, P6 page 46 जी। The only मतलब the ground is that it is for the husband to prove whether the grounds under section 9 are made or yes, on that ground it has been rejected. ठीक है, that is all. Kaustubh Shankar Jha, after arguing for some time and unable to convince this court about any illegality in the impugned order, calls for withdrawal of the application. Impugned order rejecting an application under section 151 CPC in a case filed under section 9 of the Hindu Marriage Act, prays for withdrawal of the miscellaneous petition. Same is dismissed as withdrawn. Liberty to raise in appeal. तो आपको तो लिबर्टी हमेशा ही है। Serial number 48. Arvind Kumar Pathak. P2 there to implement the oral lordship. As a respondent has to be directed to P2 को इम्प्लीमेंट कराना है। P2 तो 93 का ऑर्डर है। 93 का ऑर्डर 19 साल बाद कैसे होगा? बंदोबस्त का जो है पट्टा मिला हुआ था, तो ये इसमें बाई पार्टी ऑर्डर हुआ, इसमें ये हुआ पटवारी को इन्होंने आदेशित कर दिया कि आप इनका रेड पुस्तिका इशू करें, और इन्होंने आज तक डिस्टर्ब नहीं किया। कहाँ है वो आदेश? ये इसी में P2 लॉर्ड। तो क्या हम तहसीलदार के नायब तहसीलदार की एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है क्या? सॉरी, मैंने क्या P3 लॉर्ड से लिखता था, अगर इससे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो क्या लिखा है इसमें P3 में? 30/10/22। हाँ, ये तो आपका आवेदन है। आवेदन है P2 लॉर्डशिप, P2 पेज 14 लॉर्डशिप। P2 तो ऑर्डर है नायब तहसीलदार का, इसी में ऑर्डर है कि रेड पुस्तिका इशू किया जाए। तो उसके बाद आप 19 साल से क्या कर रहे थे? अरे अभी तो हमने मैरिट पे कुछ मांगा नहीं है इस केस। नहीं, अरे पहले आप अपना राइट तो बता दीजिए। राइट तो है लॉर्डशिप, आज तक इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, बंदोबस्त में था खेती किसानी। अब प्राइवेट कंपनी आ रही है तो वहां से हटाने स्टार्ट किया इन्होंने। नहीं, P2 का पहले दो बातें बताइए। P2 1993 का है। 93 आज 19 साल बाद नहीं, ऑलमोस्ट आफ्टर 31 ईयर्स हम कैसे इंटेलिजेंस दिखा सकते हैं? पहला इशू। दूसरा इशू, आपका लोकस क्या है? इज हाई कोर्ट एन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट फॉर द ऑर्डर्स ऑफ नायब तहसीलदार? हम इश्यूज बना देते हैं, आप जवाब ले आइए उसका, या अभी दे दीजिए जवाब, या पिटीशन खारिज करा के जाइए। Petitioner has filed this petition seeking execution of the order dated 2093 passed by, आप इसको विड्रॉ कर लीजिए। You pursue the matter with authority. Order dated 26/6/93 passed by
कोर्ट ऑफ नायब तहसीलदार अमीलिया तहसील सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट सीधी ब्रैकेट में लिखिएगा नाउ सिंगरौली full stop. When this court pleaded that this High Court is not an executing court to get the orders of the Nayab Tahsildar executed after lapse of about 30 years, prays for withdrawal of the petition with liberty to pursue his remedy before the appropriate revenue authorities. Petition is dismissed as withdrawn. Serial number 49, Shri Ankit Saxena. And the petition on behalf of the society cooperative on the ground that the under 115 after 12-15 years the power has been exercised by the Tehsildar. Under 115 only SDO is competent and even after 5 years the limitation 115 Land Revenue Code. for ready reference provision is quoted once. नहीं ठीक है किताब This petition is filed by the Housing Cooperative Society on the ground that powers conferred on a subdivisional officer within bracket revenue under section 115 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code 1959 for correction of wrong or incorrect entry in land record is being exercised by the तहसीलदार. ऐसा नहीं थोड़ा सा डिफरेंस है मैं बता देता हूँ फिर आपने तो बोला मैंने बोला कि तहसीलदार के फाइल हुआ तहसीलदार ने एक्सरसाइज कर ली पावर और फिर रिकमेंड कर दिया एसडीओ को एंट्री के लिए प्रोसीजर क्या एसडीओ के फाइल होता है एसडीओ तहसीलदार को प्रतिवेदन बुलाता इसमें ऐसा कहाँ लिखा है इसमें कि रेफरेंस नहीं हो सकता तहसीलदार का नहीं इसमें लिख सकता हूँ प्रोविजन 1 सब डिविजनल ऑफिसर मे ऑन हिज ओन मोशन और एन एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड पर्सन आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी इसमें क्या करा इन्होंने डायरेक्ट फाइल कर दिया तहसीलदार ने रिपोर्ट बना दी और रिपोर्ट भेज दी विदाउट और इसमें 5 साल का दूसरा ग्राउंड जो है 10 इयर्स की एंट्री थी 5 साल में कलेक्टर कर सकते हैं सेकंड प्रोविजन में नो ऑर्डर शैल बी पास लिखिए क्या लिखा and thereafter Tehsildar has made a recommendation to the subdivisional officer whereas in terms of the provisions contained in section 115 within bracket 1 MP LRC proceedings can be initiated only by the subdivisional officer. Full stop. Second ground is that after lapse of 5 years said exercise can be said authority can be exercised only by the collector and not even by the subdivisional officer. If you notice is waived by Shri Hiten Shrivastava. Let reply be filed within 3 weeks. List in the week commencing 9 January 2023. मीनवाइल स्टेटस को एज ऑन टुडे नहीं वो अरे थर्ड पार्टी राइट अरे कुछ थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं होगा कलेक्शन ऑफ एंट्री से थर्ड पार्टी राइट क्रिएट नहीं उन्होंने पूरा उसको इजमेंट्री कर दिया ठीक है देखेंगे ना Serial number 50, Shri Atul Chaudhary. जी My lord, in this case, my lord, I have prayed a limited prayer against the respondent that without acquiring my land, my lord, constructing a wall and by that construction of that wall, my lord, around 6,000 square feet of my land is being taken over in their possession. Petitioner's contention is that respondent number 2 and 3, that is Satna Smart City Development Limited and Collector Satna are encroaching on the land of the petitioners to the extent of 6,000 square feet by constructing a wall without acquiring said land as is contained in survey number 503/1/2/3 means having total area of 0.014 hectares situated in Moja Dhavari Patwari Halka number 53 ward number 32 revenue circle Satna block Suhaval Tehsil Raghuraj Nagar district Satna. Full stop. The only prayer is that respondents be stopped from raising any construction
without acquiring the land. Next para, issue notice. Notice is waived by Shri Jitendra Srivastava for respondent number 1 and 3. Issue notice to respondent number 2 on payment of PF by registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, parties are directed to maintain status quo as it exists today. List in the week commencing 23 January 2023. Serial number 51, JBS Sahu. सर और पास ओवर सर एट 4 PM रख लीजिए सर इसको सीनियर काउंसिल विजय अनदर कोर्ट 4 PM क्या होता है भाई? सर नेक्स्ट वीक कर लीजिए सर हाँ लिखिएगा। श्री आपका शुभ नाम बताइए। रविकांत शुक्ला सर Ravikant Shukla submits that arguing counsel is busy in some other court and prays for adjournment. कौन है आपके सीनियर काउंसिल? बीएस साहू सर ये डेजिग्नेट होगा सीनियर? श्री बीएस साहू नो श्री- सर डेजिग्नेट नहीं सर आपने बोला सीनियर काउंसिल? सर माय सीनियर सर अच्छा योर सीनियर। यस इस सीनियर लिखिएगा। Is busy in some other court and prays for adjournment. List next week. चलिए। Serial number 52, Ajay Pal Singh. Manoj, this is a case where petition's land has been acquired for the construction of a canal, but he has not been paid any compensation. तो लैंड एक्विजिशन का नोटिफिकेशन है क्या? My lord, the notification was issued. May kindly have a look at page number 9. The notification. This is an award passed by the land acquisition officer. Page number 9. 9. Notification was issued on 27/12/2013. जी फिर इसमें आपकी जमीन है कि नहीं है? Yes, my lord. हमारी जमीन है। हाँ तो अगर आप एग्रीव्ड हैं तो उसके खिलाफ रेफरेंस होता है। 64. हाँ यहाँ क्यों आ गए आप? My lord, the problem is that in this award, which I am referring at page number 9, my land, my name is not there. So अरे जिसका जो रजिस्टर्ड भूमि स्वामी होगा उसका नाम होगा। My lord, खसरा नंबर है कि नहीं है जमीन? we are a registered Bhumi Swami. I have इसका attached जमीन का खसरा नंबर क्या है? My lords, may kindly have a look at page number 14 and 14, 15 and 16, 17. इस अवार्ड में बताएं। अवार्ड में My lord, a grievance is that in this particular award our name is not there. But our land has been marked. The notification. First of all, you are required to show from the notification that there was an intention to acquire your land, and thereafter you are required to show from the award that your land has actually been acquired. My lords, I have received this notice. This is a recent notice. I have not brought it on record. Sorry, this kind of petitions are not maintainable. You withdraw it with liberty to file proper petition. ऐसे आधे अधूरी petitions मत file करिए आप। श्री Mudit Tiwari prays for withdrawal of the petition as it is devoid of necessary details. Full stop. Petitioner has not filed copy of the notification issued to acquire the land and has also not filed the documents to show as to whether his land was included in the notification or not, and whether any award was passed in favor of the petitioner. Therefore, this petition is dismissed as withdrawn with liberty to file fresh along with complete set of documents. Serial number 53, Sri Anshuman Singh. This could be taken up after 2 weeks. Sri Anshuman Singh, Honorary Counsel for the petitioner, prays for 2 weeks' time to prepare and argue this case. On his request, cases adjourned. List after 2 weeks. Serial number 54, Sri Anil Lala. The challenge is to the order mixture P3, whereby the collector will not has directed the joint plot, that is point number 3 plot, who is the joint chief explosive controller plot, and to cancel the license without any opportunity of hearing to the petitioner, only on the basis that there has been an incident which has been taken place at the mining lease area, my lord, where the explosives were supplied by the petitioner. प्लॉट विषयांतर्गत अनुभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ा मलेरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम लखेरी में माइनिंग की लीज में हुए विस्फोट की वजह से इनको बोलिएगा कि तो हमें ऑफिस में जांच करानी पड़ेगी।
कि इस तरीके से पिन लगाते हैं कि ये कागज पढ़ने में भी नहीं आ रहा, डिफॉल्ट क्यों नहीं लगाते हैं? जी वेरी प्लीज। विषयांतर्गत अनुभागीय अधिकारी अनुभाग बड़ा मलेरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ग्राम लखेरी में माइनिंग लीज में हुए विस्फोट की वजह से रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिलने पर मौके पर निरीक्षण संयुक्त रूप से किया गया, जिसमें मौके पर रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त पाया गया एवं रेस्टोरेशन रेलवे विभाग द्वारा मौके पर किया जा रहा है। उक्त संबंध में मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें उल्लेख है कि ग्राम लखेरी में निकलने वाली रेलवे लाइन छतरपुर से खजुराहो रेल लाइन के दाईं तरफ से लगे खसरा नंबर 1510/1 में एवं 15108 के अंश भाग में अवैध खनन एवं ब्लास्टिंग होना पाई गई। मौके पर ब्लास्टिंग के कारण निकला मलबा पत्थर आदि रेलवे ट्रैक पर पड़ा पाया गया। ब्लास्टिंग के कारण रेलवे ट्रैक के किनारे लगे विद्युत पोल एवं तार टूटे पाए गए। साथ ही रेलवे ट्रैक में दूसरी ओर एक व्यक्ति का निर्मित भवन भी क्षतिग्रस्त हुआ। मौके पर उपस्थित स्थानीय व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त ब्लास्टिंग श्री रुचिर जैन तनय श्री मणिपाल जैन निवासी सतना द्वारा कराया गया है। क्रेशर प्लांट पर उपस्थित कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि ब्लास्टिंग का कार्य श्री लालजी अवस्थी छतरपुर द्वारा किया गया है एवं मैगजीन भोला एक्सप्लोजिव हरीशचंद पांडे निवासी बमीठा छतरपुर द्वारा प्रदाय की गई। थाना बमीठा में प्रथम सूचना रिपोर्ट ओम साई क्रेशर संचालक रुचिर जैन व हरीशचंद पांडे निवासी बमीठा के विरुद्ध दिनांक 2/11 को धारा 307 ऑल दिस नोट में दर्ज की गई है। मेसर्स भोला एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड हरीशचंद के निवासी बमीठा तहसील राजनगर जिला छतरपुर के नाम जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 25/6 निरस्त की गई तथा लाइसेंसी का नाम लाइसेंस का नंबर दिया हुआ है ग्राम मजगवा तहसील राजनगर जिला छतरपुर के भूमि खसरा नंबर में स्वीकृत पाई गई है। उक्त विस्फोट मैगजीन लाइसेंस द्वारा विस्फोटक सामग्री का दुरुपयोग कर शर्तों का उल्लंघन पाए जाना तथा बमीठा में प्रथम दर्ज होने से स्वीकृत लाइसेंस नंबर इतना निरस्त किया जाता है। एक्सप्लोजिव्स एक्ट में हुआ ना ये? Yes, my एक्सप्लोजिव्स एक्ट। My foremost submission was not that only on the basis of an FIR which was registered on इसमें ब्लास्टर जो है वो अवस्थी है, जिनको माल सप्लाई किया है, जिनको लीज दिया उनकी लीज मैंने लगाई है, उनको लीज मिली हुई थी। जो ब्लास्टिंग करने वाला उसके पास भी लाइसेंस था। इन दोनों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। जिसने माल सप्लाई किया उसके ऊपर एक्शन ले लिया। अब हमारा तो काम ही है माल बेचना, तो वी हैव सोल्ड इट and without any opportunity of hearing उन्होंने हमारा परमिशन कैंसिल कर दिया immediately. Petitioner's contention is that the district magistrate Chhatarpur has directed the joint controller explosives to cancel the permission granted to the petitioner without issuing any show cause notice and giving opportunity of hearing to the petitioner, in as much as it is evident from annexure P3 that explosion was carried out by Shri Ruchir Jain, son of Manipal Jain, in the hands of the contractor Lalji Avasthi. Full stop. Petitioner is a seller of explosive substances, seller and a licensee to sell explosive substances. Full stop. Without any fault of the petitioner, if explosive substance duly sold by him under license is misused by a beneficiary, and for that no liability could have been fixed on the petitioner. Next para, issue notice to the respondents on payment of PF by registered AD post within 3 days, returnable 3 weeks. In the meanwhile, operation of the impugned order annexure P3 shall remain state. This in the week commencing 16 January 2023. Serial number 55 is Devin Kumar Tripathi. The petitioner is local resident of Chitrakoot. He having house, residential house and some shops at Katra number 980, 981 or 1016. May kindly appreciate page number 41. Annexure P7. This is the notice issued by the Nagarpalika without giving any particulars by saying that he is 41 तो पढ़ने में ही नहीं आ रहा। उसकी टाइप कॉपी है सब पीछे टाइप कॉपी is there without giving any particulars मालूम। एक सेकंड। इसकी तो अपील होती है, ये तो शो कॉज नोटिस है ना। नहीं मैं उस पे साहब अभी आ रहा हूँ। हाँ। दिस इज सेकंड राउंड लिटिगेशन बोलो। हाँ।
I have given reply, that is my lord page number 42. Thereafter again my lord issued notice authority to petitioner, that is page 43 my lord. हाँ पढ़िए। अवैध भवन निर्माण हटाने एवं भवन निर्माण संबंधी स्वीकृत दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने बाबत विषयांतर्गत संदर्भित नोटिस पत्र के माध्यम से भवन निर्माण स्वीकृति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हेतु आपको सूचित किया गया था, किंतु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यालय को दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए, ना ही भवन निर्माण कार्य बंद किया गया, जो नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के विपरीत होकर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः आपको पुनः नोटिस पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है 24 घंटे के अंदर उक्त अवैध भवन निर्माण को हटा लें एवं भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। पहले कह रहे हैं आप हटा लें, फिर कह रहे हैं दस्तावेज प्रस्तुत कर दें। अन्यथा की स्थिति में निकाय द्वारा आपके द्वारा पहले नोटिस दिया तो गया था, आपने खुद ही मान लिया कि आपने अवैध निर्माण किया। नहीं आपने कहा, अरे आपने जवाब में कहा कि इसको बंद कर दिया। पढ़िए पेज 42 पे रिप्लाई पढ़िए आपका। निवेदन है कि प्रार्थी के द्वारा पूर्व में स्थित आबादी क्षेत्र इतने 52 वर्ष पुराना मकान स्थित है, जो जीर्ण शीर्ण होने के कारण इसको तोड़ फोड़ करके मरम्मत कार्य कराया जा रहा है, जो कि नोटिस मिलने के बाद कार्य बंद करा दिया गया। पूर्व में भी इसी मकान नंबर व टैक्स भी अदा किया जाता है। प्रार्थी द्वारा जो भी शासन के अनुसार राशि जमा कराकर प्रार्थी को मकान अनुमति प्रदान करने की पोस्ट फैक्टो परमिशन होती है क्या लॉ में? ये रिपेयर हुआ था, इसके बाद आई वाज असेल्ड दोज नोटिसेस बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। माय लॉर्ड, मैं काइंडली अप्रिशिएट पेज 56 माय लॉर्ड। पेज 56 बताइए। So that petition was disposed of by directing the my lord respondent as well as the petitioner. Time was fixed. Page 57 is the operative part. हाँ देख लिया उसको। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये 18 तारीख का साहब ऑर्डर है। पेज नंबर? दिस इज माय लॉर्ड पेज 56 माय लॉर्ड। जी। दिस इज ऑर्डर। उसके बाद इसके हाँ उसके बाद साहब हमने इनको कॉपी दी, दे अनेबल टू रिसीव कॉपी माय लॉर्ड। Therefore, I have my lord sent with the my lord postal receipt my lord, page 59 is there my lord. On very next day, on 20 my lord, the authority came at the my lord premises and started my lord demolishing the house. I have supplied the copy, photograph is there my lord, page 61 देख लें। क्या हुआ? इनने साहब हमारा आधे से ज्यादा मकान तोड़ डाला। आफ्टर नोइंग द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, दे फेल टू माय लॉर्ड गिव नोटिस टू डिमार्केट, जैसा आपने आदेश किया था कि साहब आप डिमार्केट कर लें, जितना पोर्शन इनका कंपाउंड होने लायक है वो कर दें, जितना इलीगल है वो उसका नोटिस दे दें, 7 दिन के अंदर गिराएंगे। 18 तारीख को साहब ऑर्डर होता, 20 तारीख को हमने इनको दिया, ये अथॉरिटी है साहब, पेज 61 में देखें। इज माय लॉर्ड ये अतिक्रमण विरोधी दस्ते के वहाँ के प्रभारी हैं जो ग्रीन शर्ट में है, इनको हम ऑर्डर की कॉपी दे रहे हैं, ये पिटिशनर खड़ा है। They unable to my lord give any my lord receipt, they demolish the house and thereafter my lord। इसको तो आपने डाक से भेजी है वकील साहब कॉपी? नहीं, डाक से भी भेजी है और हमने बाय हैंड दिया, बट नो वन। कहाँ है लिखा है आपने बाय हैंड दिया है? जी मैं पिटीशन में लिखा था। और इसकी मैंने साहब सीडी भी लगाई कि मौके पे दे रहे हैं, मीडिया भी वहां है कि साहब आप ऑर्डर ले लो, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आप नहीं गिरा सकते, पहले आप हमें मौका दें सुनवाई का। देयर इज my lord DVD, I have filed along with this. So for that I have filed my lord contempt because they have violated the order. ठीक है। In that contempt कब लगी है? contempt में साहब नोटिस हुआ है, that is my lord page 67। हाँ। अब इसके बाद इनने हमें ये P1 का फिर से नोटिस दिया है। They themselves my lord not complied with the order. Now they given my lord an actual notice, an actual P1। क्या कहा उसमें P1? अब इसमें इनका कहना है कि 18/10/22 जो उसमें आप वो करें, प्रस्तुत करें, जिससे माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार कार्रवाई की जाए। अब कार्रवाई तो आप पहले कर चुके हैं, आदेश के बाद आप डेमोलिश कर चुके हैं, हमारा मैंने फोटोग्राफ पूरे लगाए हैं। ठीक है। इशू नोटिस टू द रेस्पोंडेंट्स ऑन पेमेंट ऑफ PF by registered AD post within 3 days, returnable 3 weeks, list in the week commencing 16 जनवरी 2023। My lord, status quo as on today may be maintained. My submission is my lord। आपका टूट गया अब तो। नहीं, इसमें अभी साहब खड़ा है ना, देखें आप, आधा स्ट्रक्चर खड़ा है और उनका कहना यह है कि 18 तारीख को कोर्ट की जो म्याद है वो खत्म हो जाएगी और हम आपका तोड़ देंगे। मेरा साहब एक इसमें दूसरा एंगल है, मेरा एक थोड़ा सा साहब निवेदन सुन लें। इसमें एक साहब दूसरा एंगल है, इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट है नगर पालिका की, ही इज मनीष शर्मा। इनके खिलाफ 307 का मामला हमने रजिस्टर कराया था, इन्हें हमें 307 का मैंने साहब वो डॉक्यूमेंट लगाया है। कहाँ है? मनीष शर्मा को पार्टी बनाया? जी मनीष शर्मा को पार्टी बनाया। आपने आशीष शर्मा को बनाया? सॉरी आशीष शर्मा, मनीष शर्मा को पार्टी तो बनाया। आशीष शर्मा सॉरी। उनका जवाब आने की जवाब नहीं, ही इज वाइस चेयरमैन माय लॉर्ड। होगा का वाइस चेयरमैन उसी नगर पालिका का।
And this is malo targeted. This is malo targeted process. I have filed malo I have already passed one order. If they are not making compliance, they will be hauled up for contempt. नहीं अभी नहीं. तो उसके साथ आप लिंक कर दे, कंटेम्प्ट के साथ लिंक करते हैं. List along with कर दीजिएगा, नंबर लिख के दे दीजिएगा कंटेम्प्ट का पर्ची पर. तो मेरा साहब निवेदन था कि अगर उसका भी इनने पहले सब्सटेंशियल कंप्लायंस नहीं किया है, माय लॉर्ड में डायरेक्ट टू मेंटेन स्टेटस को, उसमें साहब अगर डीवीडी आप देखेंगे, दे माय लॉर्ड फेल टू ऑनर द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट. ठीक. एंड अथॉरिटी इज माय लॉर्ड, and you have failed to honor the requirements of the law. No, I have. There cannot be any protection to the person who has not come to the court with clean hands. Sorry. चलिए. No, I was. There is an admission. There is a page 42 पे आपका एडमिशन है. नहीं, वो मरम्मत कराया है. वो तो हमने साहब 52 साल पुराना मकान है हमारा. मरम्मत कराने के लिए भी अनुमति लगती है. चलिए. नहीं, वो हमने लगाया ना साहब. उसका नक्शा भी लगाया. Don't waste time now. You are wasting time. मैं कंटेम्प्ट का नंबर दे देता हूँ. बताइए. Lord, BPO order is an exact P7 Lord, पेज नंबर 21. पेज नंबर 21. ये क्या है ये? इसमें कलेक्टर साहब ने एक अनुशंसा करने के लिए फॉरवर्डिंग करते हैं रिस्पोंडेंट नंबर 2 को फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑफ द ई-उपार्जन पोर्टल लॉर्ड. जी. ऑफ द जय श्री राम सहायता समूह करसुआल लॉर्ड. जी. कंट्रारी. आप कौन है? आई एम मिलॉर्ड बेनिफिशियरी ऑब्लिक रजिस्टर्ड फार्मर ऑफ द उपार्जन पॉलिसी. दैट इज एनेक्जर P1 मैंने फाइल. रिलीफ क्या चाहते हैं आप? मैंने सर रिलीफ ये है कि ये अनरजिस्टर्ड समूह है. दूसरी बात ये कंट्रारी टू दी उसके उपार्जन पॉलिसी के अगेंस्ट है और इस सोसाइटी को तो इस समूह को इसके लिए तो जो सोसाइटी इंटरेस्टेड होगी, जो कॉम्पिटेंट होगी, उसको लोकस है. सर आपको क्या लोकस है? सर इसमें है क्या कि यदि ऐसे समूह को देंगे तो हम खाद्यान्न अपना फूड कहाँ सप्लाई करेंगे और हमें इरेपरेबल लॉस होगा. अरे भाई, सरकार जिम्मेदार है आपका भुगतान करने के लिए. एक्चुअल में है क्या कि हमारा रजिस्टर आप देखेंगे P1 देखें सर. P1 दिखाई पढ़िए. P1 में ये रजिस्ट्रेशन है हमारा. ठीक है. तो हर फार्मर का होता है जी, जिसका रजिस्ट्रेशन होता है वही जो है खरीदी केंद्र पर अपना अनाज बेचने के लिए वो होता ऑथराइज होता है. जी. विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कैन नॉट सेल. जी. ठीक है. अब जी सर इसके बाद उस सोसाइटी को जिस पर से हमारा ऑब्जेक्शन था उसी समूह को ये दे रहे हैं. अदरवाइज हम पिछले साल भी सर ऐसे समूह को अनरजिस्टर्ड समूह को ई उपार्जन पॉलिसी बनाने के उसमें हम मार्केट में PIL लगाइए फिर तो आप जाकर. सर पर्सनली हमारा भाई वकील साहब, रिट पिटीशन में पहली रिक्वायरमेंट है आपको अपना लोकस बताना पड़ेगा. व्हाट इज द इंजरी कॉस्ट टू यू, ये बताना पड़ेगा. यदि सर मैं निवेदन कर. हाँ बताइए ना. यदि सर ये मैं मार्केट में अदरवाइज मैं अनरजिस्टर्ड सोसाइटी में अनरजिस्टर्ड समूह में यदि हम अपना वो देते हैं उपार्जन, तो सर इन केस यदि कोई भी नुकसान हुआ तो उसके लिए हम इरेपरेबल हमें लॉस होगा. आपको कैसे लॉस होगा? शासन देगी ना. ये तो सोसाइटी किसानों का पैसा फंस जाता है सर, करोड़ों का नुकसान होता है. कहाँ लिखा है आपने बताइए? सर ये तो मैंने लिखा. कहाँ लिखा है? फिर ये हवा में बहस मत करिए. बहस प्लीडिंग के मुताबिक होती है. कहाँ लिखा है आपने? सर मैं आई रिक्वेस्ट मिला. सॉरी मिलट में कैनली से नेक्जर P2 बताइए. P2 में एक हमारा कंप्लेंट होता है सर. हाँ क्या है P2 बताइए. P2 में लिखा है विषय में जय श्री राम आजीविका सहायता समूह के भ्रष्टाचार के जांच के संबंध में प्रार्थना. भ्रष्टाचार के लिए तो एजेंसी है ना. आप लोकायुक्त में जाके शिकायत करिए भ्रष्टाचार की. मैं कैंडी सिग्नेचर P3 मिलट. P3 बताइए. P3 एज पर दी माय कंप्लेंट मिलट दी रेस्पोंडेंट नंबर 3 cognizance of the my complaint मिलट and appointed one inquiry officer for conducting the inquiry. फिर उसके बाद ये इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है और वो इंक्वायरी करके ये पाता है कि ये सोसाइटी ये समूह अनरजिस्टर्ड है और फॉल्स है, इसका कभी गठन हुआ ही नहीं. हाँ लिखा है इसमें. देखें P4 दैट इज पेज नंबर 17 मिलट. हाँ पढ़िए. इसमें लिखा है जय. रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली? सर आई एम कंप्लेनेंट मिलट. अरे आपकी कंप्लेनेंट है तो आपको एंडोर्स है क्या? ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में मिलेगी ना आपको रिपोर्ट. ये रिपोर्ट कैसे मिली आपको? या तो RTI में मिलेगी या आपको इसका कॉपी का प्रतिलिपि दी जाएगी क्योंकि आप कंप्लेनेंट है. कहाँ है ये रिपोर्ट? रिपोर्ट की कॉपी कहाँ से आई आपके पास में? रिपोर्ट की कॉपी सर ऐसे थोड़ा ना. दस्तावेज अगर आप चुरा लेंगे कहीं से चुराया तो और क्या करेंगे? इसको क्या कहेंगे?
भाई या तो आरटीआई में मिलेगी या एंडोर्समेंट के साथ मिलेगी, बाकी तो जो है दस्तावेज अनऑथराइज रूप से निकालना ही कहा जाएगा ना ये तो। It will not on the basis of such report. नहीं सॉरी, May kindly that report cannot be taken into consideration because neither a true copy of it is on record. ये इंक्वायरी रिपोर्ट तो हमें रेस्पोंड नंबर 300 उससे मिली है। कहाँ लिखा है आपने कि रिस्पॉन्ड नंबर 3 ने वो दिया? नहीं लिखा सर मैंने। तो फिर जो लिखा नहीं है वो बहस मत सर करिए। P5 देख लें एक सेकंड सर। P5 दिखाइए सर। इसमें लिखा विषय जय श्री राम आजीविका स्व सहायता समूह करसुआ लाल ग्राम पंचायत करसुआ लाल जनपद पंचायत बेढ़न को धान उपार्जन कार्य से पृथक करने के संबंध में संदर्भ ग्राम पंचायत सरपंच करसुआ लाल पंचायत के बेढ़न क्रमांक इतना उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र के करसुआ लाल जनपद पंचायत बेढ़न द्वारा जय श्री राम आजीविका मिशन स्व सहायता समूह करसुआ लाल को धान उपार्जन कार्य से पृथक करने का अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के संबंध में जय श्री राम आजीविका स्व सहायता समूह की जांच कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बेढ़न द्वारा पत्र क्रमांक 100 द्वारा क्षेत्रीय पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत बेढ़न से कराई गई। पंचायत समन्वय अधिकारी जनपद पंचायत बेढ़न द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार जय श्री राम आजीविका स्व समूह notice Shri Dwivedi submits that contrary to the report sent by the Chief Executive Officer Jila Panchayat Singrauli on 25/11/2022 addressed to the District Supply Officer District Singrauli contained in Annexure P5, Collector Singrauli has passed order Annexure P7 nominating the private respondent number 5 as a authority to procure food grains, despite overlooking the fact that Chief Executive Officer has categorically noted a fact that in the report of the Sarpanch Gram Panchayat, he found the constitution of the respondent number 5 society to be illegal. Full stop. Let reply be issued, let notice be issued to the respondents on payment of PF by registered AD by both modes within 3 days, returnable 3 weeks, list in the week commencing 9 January 2023. Let me submit my lord. मैं kindly see Annexure P8 last moment. P8 देख लें सर। जस्ट क्या है उसमें? P8 में सर ये जो प्रेस्क्राइब्ड है उसमें इस सहायता समूह का कहीं नाम ही नहीं है, ये रजिस्ट्रार के खुद ठीक है सुनेंगे ना। मेन टाइम मिलॉट में काइंडली भी नहीं सर, आपका तो कोई लोकस ही नहीं है जी। चलिए sorry बीच में item number 55 my lord notices have been issued. I'm only praying my lord for respond number 4 to 6 my lord may direct to pay my lord Dasti. Meanwhile नहीं I'll my lord sir प्लीज बीच में डिस्टर्ब मत करिए। Serial number 57 से Protestant party से GS Lama. My lord, present is the appeal against the impugned award passed by the government. किस ग्राउंड पर आए हैं आप? My lord, I have filed an IA. आइए। My lord, I have filed an interim application for stay under order 45 Rule 1. अरे आप तो पहले मैरिट्स पे तो बताएं तब तो स्टे करेंगे। क्या अवार्ड है आपके खिलाफ? क्या 13,51,000. My lord, 13,51,000. फिर my lord, क्या करती है? आप तो मैरिट्स पे बताइए किस ग्राउंड पे आप अवार्ड को असेल कर रहे हैं? My lord, on the last order and she dated 38/2020. वो तो हो गया, उसके बाद तो 6 साल हो गए। I have deposited the amount of. You may have deposited. Now please advert to the merits of the case. किस ग्राउंड पे अपील फाइल करी है वो बताइए। My lord, actually I have to. Senior has instructed me to. No, your senior. Tell your senior not to give incomplete instructions. This is a 6-year-old appeal. You have to argue it. क्या ग्राउंड है बता दीजिए, नहीं तो हम लांबा साहब से समझ के इसको डिसाइड कर देंगे। इस हाई कोर्ट की प्रॉब्लम ही ये है कि वकील लोग 90% वकील तैयार होकर नहीं आते। आप लोग हाई कोर्ट को बिल्कुल तहसील जैसे ट्रीट करते हैं। आप हाई कोर्ट के सामने खड़े हो रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि फाइल में क्या ग्राउंड है,
किस ग्राउंड के ऊपर अपील फाइल करी है? My lord, actually there is written that excessive multiplier of 17. क्या एज है बताइए, मृतक की एज क्या है? On the date of incident, my lord, he was 26 years old. 26 ईयर ओल्ड. Yes. सरला वर्मा में क्या बताया गया है? पढ़ा है आपने सरला वर्मा? नहीं पढ़ा? नहीं my lord. हाँ नहीं. चलिए, उसमें 17 का ही मल्टीप्लायर लगाएगा. और क्या ग्राउंड है बताइए? दिस अपील इज फाइल्ड by the non-applicant number 2 before the learned tribunal, being aggrieved of award dated 31/1/2011, passed by 4th additional judge within bracket fast track My lord, to the 10th additional motor accident claims tribunal in claim case number 1662 of 2009 on the ground that tribunal has applied incorrect multiplier of 17, whereas age of the deceased is 26 years. Therefore, multiplier of 17 should not have been awarded and it is excessive. Full stop. It is also mentioned in the grounds because that the tribunal has committed an error in holding that appellant number 2 was not having valid driving license at the time of the accident, and therefore the respondent number 3 insurance company is not liable to pay the compensation. Next para. My lord, मुझे एक बात बतानी थी बस. हाँ बताइए बताइए. ऑर्डर डेटेड 30/8/2016 को कोर्ट ने हमको डायरेक्शन दिया था कि 15 दिन के अंदर आप ये अमाउंट डिपॉजिट कर दें 5 लाख रुपीस, तो हम आपको स्टे दे देंगे. हाँ फिर माय लॉर्ड, हमने वाइड आईए नंबर हमने ये 5 लाख रुपए कब जमा किए, यही तो पूछ रहे हैं आपसे. ये हमने जमा किया माय लॉर्ड 20/9/2016 को. जी. 15 दिन कब खत्म हुए? 30/8 से. माय लॉर्ड, हमारे 15 दिन खत्म हुए थे. हमने अप्रोच किया था लर्नेड ट्राइब्यूनल को, बट वहां पर हमको वो तो कहानी बहुत पूरी हो गई भाई, वो तो खत्म हो गई. तो मैरिज पर चलिए नेक्स्ट पैरा. माय लॉर्ड, हमने एप्लीकेशन भी फाइल किया था एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि क्या होगा भाई, आज तो अपील मेरिट पे डिसाइड कर रहे हैं. अब स्टे पे कब तक चलाते रहेंगे? माय लॉर्ड, स्टे मिला ही नहीं हमको अभी. नहीं मिला तो ठीक है, आज फाइनल ही हो जाएगा, डिसाइड ही हो जाएगी. नेक्स्ट पैरा. Shri T.S. Lamba, Learned Counsel for the insurance company, in his turn submits that the driver of the offending vehicle, Shri Rashi, क्या है नाम इसका? Doctor, may I submit there are two Rashid of license and fitness also. On fitness also, not submit that there was breach of license and as well as fitness. Rashid, son of Babu Khan, was not having valid driving license to drive the offending vehicle belonging to the appellant, bearing registration number MP04LC, यही है ना? 0294. 0924. Which caused accident. Full stop. He submits that even fitness was not available. Therefore, compensation has been awarded. Lordship, LMV NT का ग्राउंड तो खत्म हो गया, लेकिन फिटनेस का ग्राउंड रहा. हाँ, compensation has been awarded against the owner driver of the offending vehicle. Next para. Shri Lamba fairly submits that since driver was having driving license to drive a LMV, but it was lacking endorsement to drive a goods vehicle. NT transport vehicle है ना, ये तो goods carry करने के लिए था. Lordship, transport vehicle, NT नहीं, transport vehicle. But that issue is now settled by the law laid down by Supreme Court in Mukund Devangan. Therefore, issue of license is no more available, but it is submitted that lack of fitness is still a ground to repudiate the claim as far as the insurance company is concerned. Full stop. This submission finds favor from the judgment of Constitution Bench of Kerala High Court in Parit Pillai.
दे दीजिएगा, citation लिख लेंगे. Farid Pillai. Next para. Taking these facts into consideration, and after hearing learned counsel for the parties, it is evident that as far as multiplier is concerned, it is in consonance with the law laid down by Supreme Court in Sarla Verma versus DTC. Full stop. As far as issue of fitness is concerned, that issue is also settled that in absence of fitness, insurance company cannot be fastened with the liability as it will amount to breach of terms and conditions of the policy. Full stop. There is no other ground available in the appeal, and therefore appeal being devoid of merit, impugned award is only modified to the extent that on the issue of driving license, since driver was having a license to drive LMV, driver and owner shall stand exonerated in the light of the judgment of Supreme Court in Mukund Devangan, but on the ground of fitness, no liability can be fastened on the insurance company, and therefore appellant along with the driver will be jointly and severally liable to satisfy the award. Full stop. In above terms, appeal is disposed of. Record be sent back. आपका शुभ नाम बताइएगा. विवेक तिवारी. है? विवेक तिवारी. श्री विवेक तिवारी. अपने सीनियर को बोलिएगा, कौन है आपके सीनियर? अजय मिश्रा साहब. हैं? अजय मिश्रा साहब. साहब उनने मुझे बोला था कि वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन पे स्टे के लिए लगा था, इसलिए मैंने पढ़ा था. चलिए. Patel, Captain Suhane. These appeals for enhancement of normal. जी. Two connected appeals. किस ग्राउंड पर है बताइए कि the income of the injured minor. जी. देवकी भाई. Minor. किस तारीख का एक्सीडेंट है? 13/9/2010. 13/9/2010. जी. She had sustained 30% permanent disability. क्या इनकम मानी? 3,000 रुपये मासिक. 13/9/2010. 4,000 रुपये हो जाएगी बस. और बताइए. 3995 है. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट प्लस फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट लिखिए. क्या एज है? क्लेमेंट 21-22 मानी. 21-22 years मानी. 22 years मानी. देवकी की लिखिएगा. This appeal is filed by the claimant being aggrieved of award dated 31/7/2013 passed by learned Additional Motor Accident Claims Tribunal Multai in MCC number 81 of 2011 on the ground that for an accident which took place on 13/9/2010, learned tribunal has construed income of the victim at ₹3,000 per month, whereas minimum wages on the date of the accident, even for an unskilled laborer, were to the tune of ₹3,995 or rounded off to ₹4,000 per month. Full stop. It further submitted that tribunal, though accepted extent of permanent disability to be 30%, but has not awarded any amount, has not taken into consideration the aspect of future prospect, and that aspect too is required to be taken into consideration while making computation. Next para. Shri Sohane, learned counsel for the insurance company, in his turn supports the award and submits that no indulgence is required in the matter. इंश्योरेंस कंपनी को एक्सोनरेट कर दिया फॉर द वांट ऑफ परमिट. He submits that किस ग्राउंड पे एक्सोनरेट कर दिया? परमिट के ग्राउंड पे. That insurance company has been exonerated on the ground of lack of permit. Next para. Shri Jyotishi submits that in the light of the law laid down by Supreme Court in Amratpal, though insurance company has been exonerated on the ground of permit, but order of pay and recover can be filed against the insurance company. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, if
income of the claimant as per the minimum wages is taken into consideration, and then 30% disability is as accepted by the tribunal is taken into consideration. Then loss of earning capacity comes out to rupees 1200 per month. 40% is to be added towards future prospects. That will take total loss of earning capacity to rupees 1680 per month, or rupees 20160 per annum. When multiplier of 18 will be applied as per the law laid down by Supreme Court in Sarla Verma, as the age of the claimant is between 20 to 25 years, then total compensation under the head of loss of earning capacity will come out to rupees 3,62,880 against a sum of rupees 1,83,600. Full stop. Thus, there will be enhancement to the tune of rupees 1,79,280, in as much as there is no need for showing indulgence under other heads. Full stop. Thus, it is directed that claimant will be entitled to a sum of additional sum of rupees 1,79,280 over and above the amounts awarded by the learned tribunal, and this additional amount will also earn interest at the rate of 6%. Full stop. In the light of the judgment of Supreme Court in Amrit Paul, insurance company will be liable to pay the compensation and will be free to recover it from the owner driver of the offending vehicle. In above terms, appeal is disposed of. कोर्ट फीस के लिए बोले देंगे कोर्ट फीस कितना वैल्यूएशन है इसमें? 1 लाख का दिया है। हाँ तो ये 79,280 पर दीजिएगा कोर्ट। नेक्स्ट, दिस अपील इज फाइल्ड, सेम ऑर्डर करिएगा, सेम सब कुछ है ना। इसमें कितना माना है? इसमें 3,000 रुपये महीने का, इसमें भी 4,000 हो जाएगी। एज क्या है इसमें? फ्यूचर 20 से 22 साल। 20 से 22 किसकी? गजेंद्र की। गजेंद्र की 50 साल की उम्र है। 50 साल की उम्र है भाई, ऐसा मत करिए। 50 साल लिखा हुआ है इसमें आएगा। पैरा 21 टाइटल में 50 साल लिखा है। पैरा 21 ऑफ द अवार्ड मैलो क्या लिखा है उन्होंने? उम्र दुर्घटना नहीं क्या आवेदक गजेंद्र की उम्र दुर्घटना दिनांक 15/9/2009 को 20 से 22 के मध्य मानी जाती है। लाइव क्या डॉक्यूमेंट है बताइए गजेंद्र का? इसमें तो टाइटल में तो अपने 50 लिखा है। मैलो व्हाट इज द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? मैं प्रिस्क्रिप्शन पे तो 20 साल लिखा है। मल्टीप्लाई में 17। हाँ, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में भी वही लिखा है। Was aged about 20 years as per the prescription exhibit A2. ठीक है, तो इसमें भी वही 18 का मल्टीप्लायर लग जाएगा। 4,000 के हिसाब से कर दीजिएगा, उतना ही इंक्रीज आएगा। ठीक है ना, इन प्लेस ऑफ ओवर एंड अबव द अमाउंट्स अवॉर्डेड बाय द लर्नेड क्लेम्स ट्राइब्यूनल। ठीक है ना, नहीं सॉरी, वो कैसे हो जाएगा भाई, एक उधर भी गलती हो गई है। हाँ, इसको दिलाया है 183, वो जितना बढ़ेगा ना उसमें से 183,600 माइनस कर दीजिएगा। गजेंद्र से भी इसको 2,08,000 टोटल दिलाया है, वो तो 2,08,000। अच्छा, उसमें बाकी दोनों का सेम 183,600 दोनों का ही, दोनों का वही सेम एनहेंसमेंट आ जाएगा 179,280। 25,000 का वैल्यूएशन है तो बाकी पे कोर्ट फीस देंगे। चलिए, Serial number 59, Sri Kapil Padmanabhan. Notices to be issued in this. इशू नोटिस कॉल फॉर द रिकॉर्ड है क्या सर? इशू है, हाँ तो इशू नोटिस कर दीजिए बस। ठीक है, रिकॉर्ड है। Serial number 61, Sri Janak Lal Soni, Sri Vikram Singh. देखिएगा,
None for the Shri Janaklal Soni for the appellant, Shri Vikram Singh for the respondent. Record of the tribunal is not available. List this case along with the record of the tribunal. Serial number 62. Serial number 62, Sri Kapil Padwardhan. My lords, notices have to be issued in this. Issue notice, call for the record. Record आ गया तो सर issue notice कर दीजिएगा. Serial number 63, Sri Prem Chaube. Serial number 63. None cases adjourned. List of ensuing winter vacation. Serial number 64, Sri Kapil Padwardhan. Issue notice. Record आया क्या? Call for the record. My lords, in this company have also been entered in make an appeal in List along with लिख के दे दीजिए नंबर उसके साथ आ जाएगा. चलिए. Serial number 65, Sri Manoj Kumar Rajak. None cases adjourned. List after Shri Grisham Jain for the caveator. Nobody is appearing for the petitioner. Cases adjourned. List after ensuing winter vacation. Serial number 66. Serial number 66, Sri Ashutosh Tiwari. Bishop, I am challenging the order of Commissioner, my lord. What happened in this case, my lord? We filed a suit for partition and possession, my lord. Degree has been in my favor, my lord, and that has been affirmed by the second appeal up to the second appeal. Thereafter, we moved an application under section 178 before the 178 of MPLRC before the Tehsildar for partition, my lord. And Commissioner has passed this order, my lord. P20. An exact P20. P20, my lord. At page 70, my lord. Deputy Commissioner. Yes, my lord. Revenue. My lord, total land approx my lord 35,965 my lord. इसमें 1/4 शेयर होता है हमारा. नहीं इन्होंने तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, आपकी अपील तो पेंडिंग है एडिशनल कमिश्नर के यहाँ, यही लिखा है, पढ़िएगा इसको. अतीब श्री दुबे द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन में वर्णित तथ्यों के संबंध में इस प्रकरण की से विधिवत अपील प्रस्तुत कर राजस्व प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर में प्रचलित है, जिसमें गुण दोषों पर पृथक से आदेश पारित किया जाएगा. अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त शिकायत आवेदन के संबंध में प्रकरण में कोई कार्रवाई अपेक्षित न होने से शिकायतकर्ता श्री काशीदास दुबे द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन नस्तीबद्ध किया जाता है. आपकी जब अपील डिसाइड हो तब आइएगा. सॉरी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में नहीं हम इंटरफेरेंस करेंगे. सीरियस पिटीशन इसके लिए थोड़ा ना होती है. My lord, kindly direct to the decide my appeal. नहीं वो तो because my appeal is pending before the commissioner. Shri Ashutosh Tiwari raised petition and submits that let additional commissioner Sagar be directed to decide petitioner's pending appeal. List of this innocuous prayer is not opposed. 15 दिन और 60 दिन कर दीजिएगा. चलिए. With clear stipulation that petitioner will not seek any adjournment before the additional commissioner. Serial number. This court has not expressed any opinion on the merits. Serial number 67. Item number 65, my lord. Kindly my name is Mark, my lord. कैसे करेंगे उसको? adjourn किया नन करके, later on करके इनका नाम डाल दीजिएगा. later on appears and prays for marking his presence. Serial number 67, Sri Akhil Sen. Lordship, this is a miscellaneous petition. Lordship, I have challenged the impugned order passed by the upper commissioner P1 12. Lordship, page number. Matter in brief is Lordship, ancestor property. I have filed application 178 and 110. Tehsildar rejected. P1. P1 is impugned order, Lordship. Upper commissioner, Lordship. क्या किया उन्होंने? उन्होंने ये कहा कि 3 सर्वे नंबर का था, एक सर्वे नंबर में शायद खाते में नाम ना होने से रिजेक्ट किया था, बट 2 सर्वे नंबर में. बट लॉर्डशिप, दिस इज एंसेस्टर प्रॉपर्टी विथ कंसेंट ऑफ द अदर ब्रदर. आई हैव फाइल्ड द पार्टीशन डीड, लॉर्डशिप. 178 इन्होंने तो सिर्फ अनुभागीय अधिकारी को रिमांड किया है मैटर.
पढ़िए पहले, तो उससे क्या तकलीफ है आपको? आपको सुनवाई का मौका देके सब पक्षों को डिसाइड करेंगे, तो फिर उससे क्या आपका कौन सा राइट प्रेजुडिस हो गया? But Lordship, one survey number is eligible. अरे वो एसडीओ देखेगा, इसमें इन्होंने लिख तो दिया है। Yes, Lordship. फिर देखिएगा श्री अखिल सिंह, after arguing for some time, prays for withdrawal of this petition as the order of the additional commissioner is only of remand before the SDO, where petitioner will have a chance of presenting his case on merits. Accordingly, petition is dismissed as withdrawn. It is made clear that withdrawal of this petition will not cause prejudice to any of the interests of the petitioner, and concerned SDO shall decide the case in terms of the remand order on its own merits. Serial number 68, Sri Janablas Soni, पेपर नेक्स्ट वीक विल क्या हो गया? मैटर क्या है? आई विल आर्ग्यू पेपर नेक्स्ट वीक है? पेपर नेक्स्ट वीक में क्या हो गया? किस कारण से नेक्स्ट वीक, ये तो बताइए। सीनियर विल आर्ग्यू अदर कोर्ट रूम में सीनियर। अभी तो यहीं बैठे हुए थे सोनी जी। हाँ अभी थे, फिर नंबर वहाँ रहा तो वहाँ चले गए, यहाँ जल्दी नंबर आ। तो अर्जेंसी है क्या? नहीं एजेंसी कुछ नहीं है, वैसे मैटर डिसाइड हो चुका है। सिंगल बेंच का ऑर्डर के मैटर सिविल सूट डिसाइड कर दें, और सिविल सूट के खिलाफ फिर आए हैं उसी बात को लिए। सिविल सूट डिसाइड हो गया? नहीं सिविल सूट डिसाइड करने का डायरेक्शन बाई की कोर्ट 22 है। हाँ फिर ये इनको जानकारी है, ये जानकारी इवेंट में लिखा है। हाँ फिर पता नहीं क्यों आए यहाँ पर फिर? ये देखे ना, ये लिखा है ना। प्रॉब्लम तो यही हो रही है ना। रिस्पोंडेंट 5 फाइल्ड बिफोर दिस कोर्ट हैड डिसाइडेड द मैटर, उसके बाद भी फिर ये कमिश्नर के ऑर्डर श्री राम नारायण शाह फॉर द पिटिशनर श्री ये कोर्ट का ऑर्डर है कि 6 महीने में शर्मा लॉरेट सीनियर एडवोकेट फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 विद अग्निवेश, फॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 विद श्री अग्निवेश दुबे। नेक्स्ट श्री राम नारायण शाह प्रेस फॉर एडजॉर्नमेंट। नेक्स्ट श्री Sharma has serious objection. He submits that in the miscellaneous petition 4836/2021, there is already a direction to decide the civil suit expeditiously. Therefore, it is not apparent that why petitioner has approached this court, because all the rights will be subject to the outcome of the said civil proceedings. Stop. Our Shri Ram Narayan Shah is not in a position to assist the court, as arguing counsel is busy in some other court cases adjourned list in after winter vacation. चलिए ये क्या हुआ? सीरियल नंबर 69 श्री रामचंद्र राठौर। तहसीलदार के यहाँ तो पार्टीशन हुआ विद कंसेंट सभी के, जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 5 to 6 ने अपना शेयर 6 to 9 ने अपना शेयर बेच दिया, रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने परचेज किया। इसके बाद रिस्पोंडेंट नंबर 10 ने उस पार्टीशन ऑर्डर को चैलेंज किया बिफोर द एसडीओ ने तहसीलदार के पार्टीशन ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। उसके अगेंस्ट में कमिश्नर के यहाँ गए, कमिश्नर ने भी उस एसडीओ के ऑर्डर को इशू नोटिस। As an interim measure, it is directed that parties shall maintain the status quo as it in regard to the suit property as it exists today. Notice returnable in the week commencing 30 जनवरी 2023। आपका शुभ नाम बता के जाइए। श्री RS राठौर। सीरियल नंबर 70 ऐसा लिखिएगा इसमें, एक बार रुक जाइए। देखिएगा petitioner's contention is that with the mutual consent partition order was passed by the Tehsildar. Thereafter, one of the co-sharers sold their share of land in favor of the respondent number 10, who has filed an application before the SDO challenging the order of partition made by the Tehsildar without any locus, and SDO has quashed the order of partition, which order has been affirmed by the commissioner. Hence this miscellaneous petition. उसके बाद इशू नोटिस वगैरह सब करिएगा। चलिए सीरियल नंबर 70 अनुरोध हिमाचिया
सर लैंड एक्विजिशन मैटर है सर, हमारी जमीन सिंचित थी, असिंचित का मुआवजा दिया गया सर। उसकी तो इसमें कलेक्टर साहब को भी हमने सर रिप्रेजेंटेशन कलेक्टर दिया। साहब को रिप्रेजेंटेशन से क्या होगा? किस एक्ट में? 1894 के कि 2013 के? 2013 के। उसके लिए तो प्रोविजन है 64 में। यही आप 2013 का दीजिएगा, राइट टू फेयर कंपनसेशन। Any person interested who has not accepted the award may, by written application to the collector, require that the matter be referred by the collector for determination of the authority as the case may be, whether his objection be to the measurement of the land, the amount of compensation, the person to whom it is payable, the right of rehabilitation and resettlement, itna. Within period of 30 days from the date of receipt of, make a reference to the appropriate authority. Maybe requesting it to direct the collector to make the reference to it within a period of 30 days. 64 में आपके पास रेमेडी है, जाइए। श्री, आपका शुभ नाम बताइए। अनिरुद्ध हिंगवासिया। अनिरुद्ध हिंगवासिया। When informed by learned panel lawyer Shri Jitendra Shrivastava that in terms of the provisions contained in section 64 of the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013 is for withdrawal of this petition with liberty to avail said alternative statutory remedy. Full stop. Petition is accordingly dismissed as withdrawn in above terms. Period number 71. Shri Rajesh Mehndi Ratta. But in this case, the pleadings are complete. It has to be heard finally. So now after vacation, immediately after vacation. Immediately after क्या vacation? आज जल्दी नहीं है तो फिर vacation के immediately बात क्या? लिखिएगा श्री राजेश मेहंदी दत्ता submits that pleadings are complete. तो stay वगैरह है क्या इसमें? नहीं. No. Petition is, but he is not prepared to argue the case today. On his request, नहीं बस full stop. Petition is admitted for final hearing. List in part B of the cause list for final hearing as per its turn and seniority. चलिए. Time for the respondent. हाँ, इनके शुभ नाम डाल लीजिएगा. Period number 72. Shri Anil Lala. Shri Yogesh Singh Baghel. Lord, I am praying week's time. Reply is ready, my lord. I will be the little late. Shri Anil Lala, learned counsel for the petitioner. Shri Manas Mani Verma, learned government advocate, prays for 7 days time to file reply on his request list of days. Period number 73. का नाम डालेना योगेश सिंह बघेल for respondent number 5. Vijesh Kumar Dubey. डॉक्टर साहब इसमें हमने सीजर मेमो को चैलेंज किया है। 12/4/2019 को हमारी गाड़ी सीज हुई थी। इशू नोटिस आइडेंटिकल ऑर्डर डॉक्टर साहब क्या है? आइडेंटिकल ऑर्डर 33 में लगा हुआ है। 33 पेज में लगा हुआ है डॉक्टर। एनेक्सर P7 क्या कह दिया उन्होंने? इस तरीके से ऑर्डर नहीं हो पाएगा, सॉरी. इशू नोटिस, लेट रिप्लाई बी फाइल्ड बाय द स्टेट काउंसिल. नोटिस इज वेव्ड बाय श्रीमती दिलीप मैडम का शुभ नाम डाल दीजिएगा. लेट रिप्लाई बी फाइल्ड विद इन 3 weeks, लिस्ट देयर आफ्टर. Period number 74. Shri Prasthend Yadav. Shri Neha Singh Baghel. Srimati Kanak Gehwar. None for the petitioner. Case is adjourned. मैडम का शुभ नाम डालिए. List after ensuing winter vacation. But my lord, the last order since he never appeared the petition after statement never. नहीं हुआ अपीयर. देखिए ऐसे कुछ मत करिए. None for the petitioner. Nobody appeared for the petitioner on 22/7/2022 also. Miss Kanak Gehwar takes serious objection to such
conduct of the petitioner and submits that it appears that he has lost interest in pursuing the remedy. Accordingly, petition is dismissed for want of prosecution. Chaliye. Serial number 75. My lord, this case serious allegation against the police, my lord. इनकी रिप्लाई आई है R4 जी। पिटिशनर के लड़के 3 तारीख को घर से बाहर हुआ, जिसमें से लास्ट सीन संदेहियों के नाम के साथ बयान भी हुए माय लॉर्ड। साथ उसमें उन्होंने कहा कि हम रात में साथ में थे और जो भी उनके साथ में जो भी ड्रिंकिंग वगैरह हुई थी वो हुआ। इसके बाद 4 तारीख को गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाई गई। एक सेकंड जी, इन्होंने भी माना है संवेदनशील R4, लेकिन कब माना जब 22 तारीख को दिस ऑनरेबल कोर्ट नोटिस जारी किया, तब साल भर के बाद एक लेटर एसपी साहब ने लिखा 28/11/2022 और उसी दिन एसडीओपी साहब का यहाँ एफिडेविट 28/11। तो 22 क्या होगा, ये आपका एफएसएल लैब काम नहीं करती क्या? साल भर हो गए माय लॉर्ड, अभी तक अवेटेड है। तो कितना दिन लगता है डाइटम के टेस्ट की रिपोर्ट आने में? डाइटम तो डूब के मरने का बताता है ना, वही टेस्ट है ना ये। कितना समय लगता है? एक सेकंड रुक जाए, कितना समय लगता है? Petitioner takes strong objection to the conduct of the respondents. He submits that when notices were issued by this court, then Superintendent of Police Singrauli wrote a letter to the Director Medical Legal Institute next week करते तो मंगवा लेते हैं अगर asking him to send femur bone datum report. Full stop. It is submitted that incident took place in January 22. जी, 7/1/2022 and after lapse of more than 1 year. अभी 1 year मत करिए भाई, 11 months. Medical Legal Institute has not produced the relevant report. It's a serious matter. Let notices be issued to the Director Medical Legal Institute, who may be pleaded as a party on instructions of this court today itself. Notice is waived by Srimati Swati Asim George. Affidavit of the Director Medical Legal Institute be filed. List on 20 दिसंबर 2022। दीजिए, इनको भी अमेंड करेंगे। पार्टी जोड़िए जी। नंबर 76 श्री जफर खान, श्री जनकलाल सोनी। सोनी जी, क्या बात है, जब मुकदमा कोई कमजोर आता है तो आप गायब हो जाते हैं। नहीं, कमजोर नहीं, 12 नंबर में गया था, नहीं तो मैं तो यही था। अच्छा। My lord, in this case, my lord, this petition is filed, my lord, of Swasahayata Samuh, my lord, where, my lord, the supply of the foods of Anganwadi Kendra, my lord. My lord, kindly see the annexer 1, the impugned order, my lord, which is passed, my lord, without given issuing the, my lord, the advertisement, which is the mandatory provision. जी, तो जवाब आ गया स्टेट का। इससे पहले वाले में नोटिस नहीं हुए सर। मैं 2 हफ्ते में 5 सितंबर को आपने नोटिस किए थे, रिप्लाई किए, बोले था आपने रिप्लाई नहीं आया। कितनी कॉस्ट पे करेंगे रिप्लाई? मैं बता सर, पहला 76 में सर नोटिस नहीं हुए तो उसमें 2 हफ्ते का समय दे दें। जवाब का समय क्यों देते हैं आपको, जब उसमें 76.1 में तो नोटिस हो चुका है सर। उसमें मैं यू फाइल रिप्लाई विद इन 3 days, फेलिंग विच कलेक्टर सागर शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट। देखिएगा, रोहित जैन, देखिए रोहित जैन, रेस फॉर टाइम 76.1 में लिखिएगा टू फाइल रिप्लाई इन एज मच एज नोटिस 76.1 दीजिए। नोटिसेस वर इशूड इन WP 19015/22 on 5th of September 2022 and 2 weeks time was granted to file reply. Till date, reply is not filed. Either reply be filed within 3 days, failing which Collector Sagar shall remain personally present, because allegation of the present petitioner is that without issuing advertisement for impugned order,
Annexure P1 is passed by the District Program Officer, Women and Child Development, Sagar. अच्छा, तो इसमें कलेक्टर सागर क्या करेंगे इसमें? फिर तो इनको प्रोग्राम ऑफिसर को बुलाइए। सागर की जगह काट के कर दीजिएगा। रिस्पोंडेंट नंबर 4, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर शैल रिमेन पर्सनली प्रेजेंट। लिस्ट ऑन 19 दिसंबर 2000। अरे 19 दिसंबर को देखेंगे। माइलॉर्ड मेरे में नोटिस नहीं हुआ। My submission in this case. रुक जाइए, अभी कुछ नहीं इशू। बाकी जिसमें नोटिस इशू नहीं हुई उन सब में नोटिस इशू कर दीजिएगा। चलिए माइलॉर्ड काइंडली सी माइलॉर्ड द पैरिटी ऑफ द अदर, काइंडली सी माइलॉर्ड पेज नंबर 79। भाई 2 दिन बाद लगा हुआ, उनका जवाब तो आने दीजिए। और सर हमको पार्टी भी नहीं बनाया। मैंने बना दिया सर, मैंने पार्टी हो गया, अमेंडमेंट अलाउ भी हो गया और पार्टी भी बना दिया मैंने, अमेंडमेंट एज पर द कोर्ट ऑर्डर डेटेड 47। ठीक है। हाँ, आप तो जब पिक्चर में आएंगे जब डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ये सेटिस्फाई कर देगा कि वो बिगर एडवर्टीजमेंट की आपको अपॉइंट कर सकता था। हाँ, दे दीजिए। सर एक्चुअली इनका इंटरवेंशन भी खारिज हो गया मेरे केस में। अच्छा, ऑन दैट काउंट ओब्लाइज फिक्स्ड डेट है। अब 8 केस लीजिएगा, बस 4 बजे से लीजिएगा, 1 केस और दे दीजिए। नंबर 77। ठीक है, कल हम बहस कर देते हैं, मेरे को एजेंडा की जरूरत नहीं। कल क्या करेंगे? आज ही कर दीजिए। आज ही कर देते, अभी कर देता जी बताइए। यस, इट्स अ वेरी स्मॉल मैटर। इफ योर लॉर्डशिप वुड सी। हाँ दीजिए। Lord, this petition has been filed, Lord, only for a direction to the respond number 3, who is the station house officer, police station Omti, to restore possession of the movable property. Number the facts are, Lord, that who dispossessed you? Not the respondent number 3, Lord, the station Dispossessed you from the property. Dispossessed क्या seal कर दिया उन्होंने तुम्हें। वहाँ the certain persons, Lord, we are being prosecuted under the public gambling act. जी जी। So वहां से वो जो कंप्यूटर्स वगैरह सब उठा के लेके द पर्सन आर बीइंग प्रोसिक्यूटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी को उन्होंने सीजर कर अंडर सेक्शन लॉर्ड। इफ योर लॉर्डशिप वुड सी, माय सबमिशन इज नॉट दैट in exercise of power under section 102 of the CRPC, the police officer doesn't have the power to seize immovable property. देखें वहां के जो मूवेबल प्रॉपर्टीज थे वो सब लेके, and the persons are being prosecuted. If your lordship would say, my lord, I have quoted section 102 in paragraph 5.7 of my petition. ये कब से आ गया? प्लीडिंग में अमेंडमेंट हो गया क्या? एक्शन कब से कोर्ट होने लगे? कोर्ट किया था सर मैंने, मैं बुक से रेफर कर रहा हूं। Lord, if your lordship would see 102, I refer it. Power of police officer to seize certain property. Any police officer may seize any property which may be alleged or suspected to have been stolen, which may be found under circumstances which create suspicion of the commission of any offense. Such police officer, if subordinate to the officer in charge of a police station, shall forthwith report the seizure to that officer. Every police officer acting under subsection 1 shall forthwith report the seizure to the magistrate having the jurisdiction, and where the property seized is such that it cannot be conveniently transported to the court, or where there is difficulty in securing proper accommodation for the custody of such property, or where the continued retention of the property in police custody may not be considered necessary for the purpose of investigation, he may give custody thereof to any person on his executing a bond undertaking to produce the property before the court as and when required, and to give effect to the further orders of the court as to the disposal of the same. Not this provision had come up for consideration, my lord, before the Supreme Court also. If your lordship see, my lord, I have enclosed a copy of the judgment of the Supreme Court also, and it's a P5, my lord. This was exactly an issue here, my lord. Section 102 has been interpreted, and it has been held that immovable property cannot be seized, cannot be subject matter of seizure, my lord.
बताइए। Yes, Lord. 28. Lord, the section 102 has been referred to in paragraph 4 of the judgment, Lord. Then I would refer to paragraph 21. Para 21, Lord, is at page 82, Lord, running page 82. In view of the aforesaid discussion, the reference is answered by holding that the power of a police officer under section 102 of the code to seize any property which may be found under circumstances that create suspicion of the commission of any offense would not include the power to attach, seize and seal an immovable property. Yes. इतना है सर। ठीक, बताइए। No, let's firstly have a preliminary objection on the pleadings. It may be seen, my lords, paragraph number 2 and 3 at page number 6. इसके पहले सर हम एक चीज और बता दें, so that there is no suppression. I filed an application under section 457 कि आपको सुप्रता में भी दी जाए. That was actually, in fact, the filing of such application was misconceived. That application was dismissed. Not I have enclosed the part. उसके अगेंस्ट आपकी रेमेडी दूसरी जगह है। 47 हमने सर P6 फाइल किया है सर ऑर्डर, उसके खिलाफ हमने फिर रिवीजन भी फाइल किया, तो उसकी फिर इसीलिए रिवीजन भी डिसमिस हो गई, लेकिन 482 would come. 482 आएगी। वो सर क्या हुआ कि वो एप्लीकेशन ही मेंटेनेबल नहीं थी 457 नहीं थी तो भी, लेकिन once you have chartered a course and you cannot go back. Lord, my humble submission 482 में भी ये रिलीफ मांगते हैं। I'm just, Lord, my humble submission is that application the section 450 was misconceived in fact. इसलिए सर वो एप्लीकेशन ही मेंटेनेबल नहीं थी वहाँ पे। अगर तो फिर then why you had filed revision? न वो इल एडवाइस थी, वो हमने पिटीशन में ही लिखा, वो इस दोनों ऑर्डर्स हमने लगाया। कहाँ लिखा है आपने? Lord, if a lordship would see, I'll just refer it, Lord. Lord, I have paragraph 5.11 में kindly be seen. 5.11, yes. That the petitioner under a mistaken legal opinion had filed an application under section 457 of the code for obtaining the aforesaid movable property in Supratama before the Chief Judicial Magistrate Jabalpur, and the same was dismissed by order dated so and so, a copy which is the petitioner filed repeat application under section 457 of the code, and the same was also dismissed, not P7, that being agreed by an order dated so and so, the petitioner filed criminal revision number so and so before so and so, and the same was also dismissed by order dated. इसमें आप एक पैराग्राफ और अमेंड कर दीजिए कि you have not availed the remedy of 482. That is what I was pointing out. Paragraph number 2 and 3 at page number 6. What has been mentioned is that the petitioner declares that there is no other proceedings previously instituted or pending before any court, authority or tribunal. And then the करना पड़ेगा आपको पिटीशन को। जी श्री संजय अग्रवाल, learned senior advocate, raised for time on an objection raised by Shri Rohit Jain, learned government advocate, to amend the petition. Let on his request 7 days time is granted to move an appropriate application. चलिए। Lordship, keep it in the next week. आएगा अपने आप आएगा। चलिए। Request case serial number 83. The Jabalpur Development Authority had prepared a layout for scheme number 2A in Gulab Singh Bad, Bhutteswar. Scheme is annexed P4, Lordship, page 44. As per the scheme, Lordship, and as far as the locus petitioners are concerned, petitioner number 1 has purchased the plot number 784. Petitioner number by annexure P1. Petitioner number 2 had purchased the plot number 782. And petitioner number 3 has purchased a plot 781 by annexure P3, Lordship. Lordship, after purchasing the plot, the Jabalpur Development Authority and the Municipal Corporation had not developed their plan as per their own sanction plan, Lordship. Issue notice to the respondents. Lordship, this may be disposed of with a certain direction. I have already made a representation. On the grievances that he is one of the purchasers of a plot number 784 and 784, 782. Petitioners are and 781. Plot number 781, 782 and 784 at Shahid Gulab Singh Ward under Jabalpur Development Authority, scheme number 2A, phase 1, situated in Shakti Nagar, Jabalpur. Respondents are not developing the colony as per the layout, and therefore his representation annexure P8 and P9 be directed to be decided by the authority
Full stop. This innocuous prayer is not opposed by Shri Jitendra Srivastava and Shri Pratik Jain. Milos, my submission is that Milos, in 2010 only we have transferred this entire scheme to the Nagar Nigam. Respondent number 4. At this stage, Shri Pratik Jain, appearing for JDA, submits that in the year 2010 itself, the whole scheme was transferred to Municipal Corporation Jabalpur. And Lord, sir, by Therefore, election P10, the JDA has written letter to the corporation to remove the encroachments. P10, page 55. Whereas Shri Mukesh Agrawal submits that white annexure P10 dated 15/6/2022, JDA has Executive Engineer Jabalpur Development Authority has written letters to the Deputy Commissioner Municipal Corporation Jabalpur to remove encroachments in the park area. Full stop. In this very letter, it is mentioned that colony was handed over to Jabalpur Municipal Corporation on 31/3/2010. Therefore, this petition can be disposed of that in case petitioner files a fresh representation to the Commissioner Municipal Corporation Jabalpur within 15 days to 60 days. कर दीजिएगा. This court has not expressed any opinion on the merits of the case. If Lordship be permitted, their corporation maintain the colony as per their sanction plan. नहीं वो सब होगा, वो सब decide करेंगे. Highly obliged. Number 87, Sri KK Singh. May it please your lordship. My lord, it is for the quashment of the first information report on the basis that virtually it's a civil dispute, my lords. Now, how do I come to that, my lord? Insofar as the brief facts of the case are like this, my lords, the petitioner, my lords, and the respondent number 5, in regards to a business deal, my lords, certain loan was extended. That is to the husband of the present petitioner, my lords. It was in a firm, my lords, and in fact, when the petitioner wanted the accounts, my lord, there was some sort of a rift. This is what we put across in our petition, my lords. Now, what had happened thereafter, my lord, is that in the interregnum period, the husband of the petitioner had given checks to the amount that was about 60 to 80 lakhs, my lord, which was given by way of loan by respondent number 5 to the present petitioner, my lords. Now, there was also simultaneously, my lords, an agreement in lieu thereof. And what was that agreement? May I take, my lords, at page 6 of the petition, to be very precise. An agreement, I'm taking, my lords, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 line from the bottom of para 5.2. An agreement was executed on 6 and 17 in respect of a plot of an area 0.896 hectares out of the land bearing Kasra number 397/2 KA398 and survey number 400, total area 2.573 hectares, situated in Moaza Shukla Tehsil Raghuraj Nagar district Satna. Now the agreement is on record. By way of security, the amount, the check was also given. Now there was some hassles between the party, my lord, and accordingly an FIR comes to be lodged. Now, because Where what had is happened FIR? in the interregnum. FIR is annexure. Beg your pardon? FIR is annexure. P1. P1. Now, in the interregnum period, certain land was P1 is sold. the agreement. Certain land was also Page sold. number Out. 36 one. Now, Page number 36. why the FIR was lodged, Miles? Because it was said that since there was an agreement to sell the piece of land to me, instead thereof it was sold to others. Accordingly, this FIR comes in, my lord, which is at page 36 P4. Now, this is 17/10/22, my lords. Now, may I take, my lords, at page 38, please? Just the relevant para to, in order to indicate it's a civil dispute virtually. May so and so दिनांक 5/8/22 जांच एवं कार्रवाई हेतु प्राप्त हुई दौरान जांच आवेदक लक्ष्मण वाधवानी, साक्षी किशन वाधवानी, सपना वाधवानी के कथन लिए गए तथा अनावेदक सुरेश अग्रवाल, श्रीमती अंजना अग्रवाल, सुजन अग्रवाल के कथन लिए गए दौरान जांच पाया कि आवेदक पक्ष द्वारा वर्ष 14 में 60 लाख रुपए अनावेदक पक्ष को उधार दिया था चेक माध्यम से तथा अनावेदक पक्ष में भी रकम लेना स्वीकार किया व गारंटी बतौर 60 लाख के चेक दिए थे। समय से आवेदक को रकम वापस न करने के कारण दोनों पक्षों से सहमति बनी कि अनावेदक पक्ष की परजुना रोड में 2.9 एकड़ की जमीन है जिसे वो आवेदक को दे देंगे। 90 लाख रुपए में दोनों पक्षों के मध्य सौदा तय हुआ जिसका सिविल लाइन न्यायालय में दिनांक 16 में कचेरी में नोटरी 16 सिद्दीकी के यहाँ जमीन मालिक
श्रीमती अंजना अग्रवाल के इकरारनामा अर्जी नंबर सो नोटरी हस्ताक्षर सो अन्य दिस्मत के कारण उक्त इकरारनामा की जमीन रजिस्ट्री नहीं करा बिकॉज ऑफ द कोरोना तथा दिनांक 4/10/21 को जमीन मालिकान श्रीमती अंजना अग्रवाल ने इकरारनामा की जमीन रजिस्ट्री कराने से साफ इनकार कर दिया। जब आवेदक पक्ष ने मौके के जाकर पता किया तो उक्त जमीन की बिक्री अन्य लोगों को ही हो चुकी थी। जमीन मालिक श्रीमती अंजना अग्रवाल द्वारा उपरोक्त इकरारनामा की जमीन 10 लोगों को तथा जमीन मालिक अंजना अग्रवाल के पुत्र सजन अग्रवाल ने बतौर पावर ऑफ अटॉर्नी के इकरारनामा की उक्त जमीन में से एक रजिस्ट्री करवाकर अमन अग्रवाल को बेच दिया, जो संपूर्ण जांच में पाया गया कि अंजना अग्रवाल उनका पुत्र सजन अग्रवाल ने इकरारनामा की जमीन सो में 11 लोगों को बेचकर रजिस्ट्री करवा दिया है। Virtually what happens is that I did not perform the part of my agreement. Now, if that be the reason, my lord, how does, my lord, the criminal prosecution is initiated? More or less matters, my lord, because most important is the mens rea. Now, more or less a matter of this kind came up before the Supreme Court. Yesterday, my lord, decide the matter, my lord. They have remedy to under section 482 of CRPC, my lord. They are seeking requestment of FIR, my lord, in WP 15231 of 22, my lord. My lord, with due respect, in Bhajanlal case, my lords, in 1992, my lords, it can also SCC be, supplementary. it can also be a writ petition, my lords. There is no embargo, please, my lords. And if we have a perusal, may I take, my lords? निहारी का infrastructure क्या कहता है उसके My lord, बाद? may I take, my lords, to Hridaya Ranjan, the बताइए। decision, my lord, of the Honorable Supreme. Please pass it on. May I take, my lords? Just bear with me for some time, my lords. जी। I'm taking, my lords, at para जी। 15, 15. जी। which comes at page 8/9. जी। Am I there with my lords? Para 15. Yes. In determining the question, it has to be kept in mind that the distinction between mere breach of contract and the offense of cheating is a fine one. It depends upon the intention of the accused at the time to inducement, which may be judged by subsequent conduct, but for the subsequent conduct is not the sole test. Mere breach of a contract cannot give rise to criminal prosecution for cheating unless fraudulent or dishonest intention shown right at the beginning of the transaction. That is, at the time when the offense is said to have been committed. Therefore, it is the intention which is the gist of the offense to hold a person guilty of cheating. It is necessary to show that he had a fraudulent or dishonest intention at the time of making the promise. From his mere failure to keep up the promise, subsequently, such a culpable intention right at the beginning, that is, when he made the promise, cannot be presumed. Just on the touchstone of the principles noted above, the present case in our considered view warrants interference in as much as the ingredients of the offense of the cheating punishable under so-and-so has not been made out. So far as the offense under so-and-so are concerned, even for the basic allegations making out a case thereunder are not contained in the complaint. That being the position, the case within the first category of the enumerated the state of Haryana versus Bhajanlal, and such warrants interference by the court. Reading the averments in the complaint in the entirety and accepting the allegations to be true, the ingredients of intentional deception on the part of the accused right at the beginning of the negotiation for the transaction has neither been expressly stated nor indirectly suggested in the complaint. जी। Keeping that in mind, my lords, जी। writ petition is tainable, my lords. जी। Prima facie, it's not tainable, my lords. जी। Therefore, my submission to my lords is 482, my lords, or 226, जी। where the Supreme Court gives us a liberty to proceed. जी। And wherein the observation of the Supreme Court lately comes in like this, जी। and this being a case that a specific performance of a contract at all, at the most, could have been instituted by the respondent number 5 instead of lodging in FIR. जी। As such, my prayer to my lords would be, my lord, two things. Because what in the petition, the relief clause comes in two ways. One is a quashment, or in the alternative, there seems to have been a representation which is on record, filed by the petitioner before the Supreme Police to look into the matter, my lord, until the no coercive action be taken. Listen. Thank you. Greatly obliged. Ultimately, Shobha Menon, and senior advocate assisted by KK Singh, ठीक है ना, श्री मानस मणि वर्मा for the state. चलिए. Serial number 91. Serial number 91. My lord. My lord, appeal for enhancement, my lord. Death case है, सोनकी 19 year है, 2,54,000 19 years. किस बारी का accident है? जी,
2010 का एक्सीडेंट माइला और पैरा 15 ऑफ द अवार्ड इनकम मानी है सर इनकम 3000 माली है इन्हें 2010 में क्या तारीख है एक्सीडेंट है माइला 10 फरवरी 2010 10 फरवरी कहाँ है अवार्ड की कॉपी 14 सर पेज नंबर अवार्ड की कॉपी कहाँ है पैरा नंबर 14 है सर अरे अवार्ड की कॉपी कहाँ है अपील मेमो में सर मैंने फाइल की होगी अपील मेमो के साथ जी पैरा 14 में सर हाँ, क्या लिखा है ये सर लिखा है मृतका सोनू की आयु का संबंध में सोनू हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और जन्म तिथि 15/9/91 बताई है और दुर्घटना की तारीख दिखाई है 10/2/2019 और लगभग 19 वर्ष जी 19 वर्ष के बीएससी प्रथम वर्ष पढ़ता था सर जी पैरा 15 में आया है सर कितनी इनकम मानी है इन्होंने 3000 रुपये मानी सर देखिएगा 3000 मानी है appeal is filed by the claimant My lord, in this case, I am paying Madam Rupra is appearing on behalf of Puran. हाजिरी डाल दिया सर मैंने उनको बता दिया उनकी हाजिरी डाल दीजिएगा ऐसे बिगर एब्सेंस में मैं नहीं डालता सॉरी मैंने on behalf of my lord नहीं श्री Pradeep Sharma for the claimants. This appeal is filed by the claimants being under section 173 of the Motor Vehicle Act, being aggrieved of award dated 8/2/2011, passed by Learned Motor Accident Claims Tribunal, Sihor, in MCC number 48 of 2010, on account of death of Sonu, who was aged about 18 years on the date of the accident, that is 10/2/2010, and has construed income at rupees 3,000 per month, whereas minimum wages for even an unskilled laborer were to the tune of skilled है क्योंकि ये BSc first year का था. It is submitted that he was a student of BSc first year. Therefore, wages for a skilled laborer at the rate of rupees 3,900 per month will be applicable. Full stop. It is submitted that thereafter adding future prospects, etc., computation is to be made. Next para. Shri Ajit Agrawal, Learned Counsel for respondent number 3, my lord. सर इसमें future loss भी नहीं दिया है. 3. जी. Both supports the award. Next, आप किसके लिए हैं? R1 R2. Shri Priyanshu Dubey. Priyanshu Dubey for respondent number 1 and 2. Next. I find sufficient force in the arguments put forth by Shri Pradeep Sharma that minimum wages of a skilled laborer should have been at least taken into consideration. So stop. When they are taken into consideration, then annual dependency comes out to rupees 46,800. Full stop. Admittedly, deceased was a bachelor. Therefore, 50% is to be deducted towards the living expenses of the deceased. Full stop. 40% is to be added towards the future prospects in terms of the law laid down by Supreme Court in Pranay Sethi. Full stop. Multiplier of 18 will be applicable, taking total pecuniary compensation to rupees 5,89,680, over and above which the sum of rupees 30,000 is payable under the head of non-pecuniary compensation, taking total compensation to rupees 6,19,680 in place of rupees 2,54,000. Thus, claimants will be entitled to enhancement to the tune of rupees 3,65,680. Figures में words में दोनों में लिखिएगा, है ना? This additional amount will also earn interest at the rate of 6%. वही कर दीजिएगा accrued interest. Future loss नहीं दिया सर और future जोड़ तो दिया, आप सुन क्या रहे हैं? Sorry. ठीक है ना? In above terms, appeal is disposed of. Other terms and conditions of the award, like liability, fixation of liability, etc., shall remain intact. ठीक है? पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए. Number 95 is suggesting PS Lama. किस ग्राउंड पे है एनहांसमेंट? सर इनहेंसमेंट नहीं है, डिसमिस है क्लेम केस हमारा. डिसमिस है, बताइए किस ग्राउंड पे डिसमिस किया? एक्सीडेंट प्रूफ नहीं माना गया था, व्हीकल प्रूफ नहीं माना गया था सर, डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं आपने? जी सर. इसमें ऑर्डर 41 रूल 27 में फाइल किए क्या? नहीं सर, कोर्ट का डायरेक्शन था सर, 22/9/2022 का ऑर्डर. हाँ तो इसका जवाब दे दीजिए आप.
आपने दे दिया, जवाब नहीं देना आपको? 1 week time maybe. Shri Lamba praised for time to file reply to application under order 41 rule 27 IA number 111560/22. Let reply be filed within 2 weeks list in the week commencing 9 January 2023. Serial number 99. Serial number 99. This appeal is on 4 counts. कंपनी अपील है, अनाउंसमेंट की अपील है। कहाँ लगी है? लगी है सर, ये इसी के साथ में मैंने 99 यस कनेक्टेड केस में। अच्छा ठीक है, फिर दोनों को सुन लेते हैं। पहले कंपनी का ग्राउंड बता दीजिए आप। मतलब हमारे को ओनली सिंगल ग्राउंड में कंटिन्यूटी नेग्लिजेंसी का पॉइंट है मतलब। प्रूफ किया है, एविडेंस लगाई है? हाँ, एविडेंस जो आई विटनेस है राजमल, पैरा नंबर 12, उसको एग्जामिन किया आपने? हाँ। क्या कहा राजमल ने? इसने ये कहा कि हमने जाते हुए देखा है एक इलेक्शन। मैं पढ़ लेता हूँ, पैरा 12 पढ़िए। घटना के चतुर्दशी साक्षी राजमल अंश 3 ने घटनाक्रम की पुष्टि की है और बताया है कि स्कॉर्पियो कार सही दिशा में जा रही थी। खंडेलवाल के मकान के सामने खातेदार का नेमावर रोड पर पहुंचा, तभी डंपर सो के चालक ने काफी तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए अचानक बीच रोड पर बिना किसी संकेत के ब्रेक लगा दिया और पीछे से आ रही स्कॉर्पियो वाहन डंप। क्या मदद मिलेगी आपको? इससे कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस प्रूव हो जाएगी क्या? मेरा ये कहना है कि गाड़ी चल रही तो उतनी बैलेंस से स्कॉर्पियो को भी चलाना। तो आपको आपने पूछा है क्या इनको, राजमल को, कितनी दूरी से पे चल रही थी गाड़ी? इसमें आगे आया है मैंने, क्या है पढ़िए। जिसका नंबर उसने देखा था, घटना के स्थल पर डंपर और स्कॉर्पियो दोनों खड़े, जिनका नंबर उसने देखा था वह कमल के साथ थाने सूचना देने का दूसरे दिन रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने स्पष्ट कहा कि दुर्घटना डंपर चालक के ने अचानक ब्रेक लगा लेने के कारण हुई है। वो पीछे से चल रही स्कॉर्पियो चालक उसमें घुस गया। प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट किया कि मौके पर खाते गांव में अपने गांव डंपर स्कॉर्पियो से 20-25 फुट आगे था, उसका वाहन स्कॉर्पियो से 40-45 फुट दूर था। कहाँ बचा आपका? तो क्या? चलिए अब आपके ग्राउंड्स बताइए। For this contention also there is division bench judgment. क्या? ये all of a sudden you apply brakes, division bench judgment of this honorable high court. हाँ ठीक। My lord, 4 grounds are there. Income has not been assessed properly. क्या डेट ऑफ एक्सीडेंट है? The date of accident is 22/9/2015. 22/9/2015। Yes, कितनी इनकम मानी है? My lord, income considered by tribunal is 10,04,588 per annum. Yes. इनकम टैक्स पे ही है? Yes. हाँ फिर? Whereas as per exhibit P27, income was 13,79,670. देख लेते हैं। हाँ चलिए। My lord, 1/4 10 लाख कितनी मानी? 10 लाख 10,04,588 रुपए मानी है। तो 100484587 4588 4588 this has been considered. जी। My say is that exhibit P27 income was 13,79,674. हाँ ठीक है। My lord, 1/3 has been exhibit P27. हाँ। My lord, tribunal deducted 1/3 towards personal living expenses, leaving behind father. My say is that, my lord, father is aged 66 years, having pension, but he is senior citizen. If that is considered, 1/4 deduction should be. 1/4 नहीं होगा, 1/30 होगा। चलिए। My lord, then, my lord, most surprisingly, flat 30% income tax has been deducted. 30% हटा देंगे। चलिए। My lord, over and above that, my lord, flat 30% deducted income tax, thereafter 1/3 deduction, and over that 50% growth added, and again 30% flat income tax has been deducted. It's a double jeopardy actually. And my lord, his age was 35 years 3 months. So he didn't cross 36 years of age. Multiplier adopted of 15. My lord, yesterday 16 लगेगा. My lord has decided the issue yesterday itself in MA number 4372/22. बस। And my lord, 50% growth which has been added, that has to be added also. ठीक। देखिएगा, these appeals are filed by the
claimants and the insurance company respectively. And as per income tax कोर्ट slab, की नेग्लिजेंसी मानी है जीप की में हाँ? पैरा 30 में कोर्ट की नेग्लिजेंसी मानी है पैरा 13 में पैरा 30 वो आई विटनेस जो राजमल कनक साहब ने स्पष्ट किया कि डंपर चालक के बिना संकेत में अचानक ब्रेक लगा दी यानी कहाँ पढ़ रहे हैं पैरा 13 में जजमेंट प्लीज पढ़िए। चतुर्दशी साक्षी राजमल साहब ने स्पष्ट कहा कि डंपर चालक ने बिना संकेत दिए अचानक ब्रेक लगा दिए जिसके कारण पीछे से आ रही स्कॉर्पियो चालक वाहन सहित घुस गया। ऐसा भी साक्ष्य अभिलेख नहीं है कि जिस दर्शाता होता कि मृतक की कोई उपेक्षा या उतावलेपन था। यह सुसंगत है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन दांव पर अगर वाहन नहीं चला, इसलिए यह नहीं मान सकता कि स्वयं कुछ मदद नहीं मिल रही आपको इससे, मदद कहाँ मिल रही है? These appeals are filed by the claimant and the insurance company respectively, being aggrieved of award dated 22nd September 2017, passed by Learned Third Additional Motor Accident Claims Tribunal Bhopal in MACC number 1876/2015. Full stop. as It per is income submitted tax, by the insurance company that there is aspect of contributory negligence in as much as eyewitness Rajmal, claimant witness number 3, has admitted that the Scorpio in which deceased was travelling had rammed into the dumper from behind. Full stop. Thus, it is submitted that factum of contributory negligence should have been taken into consideration and appropriate appropriation should have been made in favor of the between the owner driver and insurer of the dumper and the owner driver and insurer of the Scorpio. Next para. Shri Kapil Patwardhan in his turn submits that as per Exhibit P27, returned income of the deceased is 13,79,674, but tribunal has arbitrarily considered it to be 10,04,588. Full stop. It is submitted that 1/3 deduction is made, whereas father is a senior citizen and including father there are 4 dependents. Therefore, 1/4 reduction should have been made. Full stop. It is submitted that the irony is that tribunal made a flat deduction of 30% towards income tax and therefore thereafter on the award of compensation again directed to deduct 30% income tax, which is unheard of in the motor vehicle accident jurisprudence. Next para. It is further submitted that age of the deceased has come on record on the date of the accident to be 35 years, 3 months, and therefore multiplier of 16 will be applicable and not of 15. Next para. और इसके आगे चैम्बर में लिखा देंगे, नहीं तो यहाँ 4 और लिखाने हैं. Oblige, my lord. ये उसी में रख देना. Manoj, they have just supplied me the copy of the reply. Manoj. Kindly be taken up on Monday. I'll argue it. Shri Vadhava Learned Counsel for the petitioner, Shri Akshay Khandelwal. Akshay Khandelwal. For respondent number 2, 3, and 4. Respondent number 2, 3, and 4. I am for respondent number 1. Shri Rajput for respondent number 1. Next, Shri Vadhva submits that he has just now received copy of Gurdeep Singh Vadhva, copy of the reply. Full stop. He prays for short adjournment on his request list next week. Chali. Highly obliged. Obliged, my lord. My request. वो enhanced court fees हम लेना चाहते हैं ना, दीजिए ना. इसके बगैर तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. हाँ, कल का डेट सर. कल नहीं, आज जो काम आज है वो अभी, आज भी नहीं अभी. नहीं, मैं अभी कर देता हूँ. मैडम का नाम डाल देना भाई. मैडम का नाम डाल देना. I was held up, my lord. अरे ठीक है, नहीं आप आ गए ही डाल देंगे. जी जी. प्रॉक्सी में नहीं डालता मैं मैडम. जी. आज ही पेड कर देते हैं. Serial number 137. फोन नंबर का क्या हुआ? ठीक है, अच्छा किया, अच्छा रहा. 137. In fact, this appeal is by Union of India also. By Union of India through Railway also. किस बात पर से? It is kindly see page 9 ये lordship. हाँ. क्या? ट्रिब्यूनल ने तो अवार्ड किया था. हाँ. Department has filed this
on the basis that की statement आया था कि train start हो गई थी, then he tried to run away. और इसलिए हालांकि ट्रिब्यूनल ने वो रिजेक्ट कर दिया. And another aspect is that the 8% per annum interest has been awarded here. तो interest award नहीं किया जा सकता. 6% that as per Reena Devi case, and whatever is higher at the on the data. 16 का award है लॉर्डशिप. ठीक है, तो 6% बस खत्म हो जाएगा अभी. श्री हर्षवर्धन सिंह राजपूत, learned counsel for the appellant, Srimati Aparna Singh for the respondent number 1. Next para. This appeal is filed by the Union of India, being aggrieved of award dated 4/7/2016, passed by learned division bench of Railway Claims Tribunal, Bhopal, in case number OA/Roman 2U 2014/316 on 2 grounds that tribunal has arbitrarily taken into consideration and recorded a finding that there was negligence of the that the क्या बोल रहे ट्रेन में चलती ट्रेन में ये self inflicted by 124A has rejected the plea of self-inflicted injury. Full stop. It is further submitted that as per Reena Devi, only 6% interest could have been paid by the tribunal, but arbitrarily 9% interest, 8% interest is ground नहीं पर appeal में paid payable. Full stop. Next para. As far as first ground is concerned, there is no evidence to show that the injury was self-inflicted. Therefore, on that account, appeal deserves to fail and is dismissed. Next para. As far as second ground is concerned, that is completely covered by the judgment of Supreme Court in Reena Devi. Citation दे दीजिएगा. Therefore, the award is modified and it is directed that claimant will be entitled to interest at the rate of 6% instead of 8%. In above terms, appeal is disposed of. Record, if any, be sent back. चलिए. Notices has been served and tomorrow will be tender will be open. So my humble request, my lord, kindly am I allowed to me to participate? नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ भाई? My lord, lordship में kindly be done. नहीं So, because it will open on 14th, my lord, and it's a severe violation of. ठीक है यार, आपको सुनेंगे. You will be compensated. Law of contract is that if some party can be compensated in terms of money, then there cannot be any stay. My lord, I am not seeking any stay. I am only seeking to participate only. Because अगर मेरा tender on what basis? Because my lord, it will open on Monday, my lord. So we have a time to I will participate in the tender. Merits In the lights of मैरिट्स बताइए आपको क्यों रोका गया पार्टिसिपेट करने से? उन्होंने हमें ब्लैक लिस्ट किया हुआ है रेस्पोंडेंट नंबर 1 के द्वारा और जो है इंडेफिनेट पीरियड के लिए ब्लैक लिस्ट किया हुआ है. और रिप्लाई कब देंगे आप? Lordship, in the afternoon only we got the instruction. We need time to file the reply. We are respondent number 2. हाँ. कपिल दुग्गल के लिए ऑर्डर हुआ था माइलॉर्ड देने के लिए, हमने दे दिया. रिप्लाई दे दीजिए, इसको परसों सुनते हैं. Lordship, 2 days time can be granted. हाँ ठीक है, फ्राइडे को रख लेते हैं. लिखिएगा. श्री अवधेश कुमार सिंह, लर्नेड काउंसिल फॉर द पिटिशनर. Shri Naman Upadhyay for respondent number 2. Shri Manas Mani Verma for respondent number 1. Shri Upadhyay prays for and is granted 2 days time to file reply. List on 16 December 2022, top of the list. Well, may I make a request now? Well, I'm making a request for item number 130. In the morning also Milo's requests were made, but it doesn't meet the standards of urgency as Milo's was pleased to say Milo's that it will be take a chance after the requests are taken. I understand Milo's, I understand. Milo's, I only request Milo's that it may kindly be taken up either tomorrow or day after. शराब की बिक्री में ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं है. सर हमने जिस हिसाब से टेंडर भरा था हमारा तो नुकसान हो रहा है ना.